Good morning, and I'm very sure you must be very happy, like the last day of the module. So finally, we are able to finish up the one of the long running module, data structures. I guess in last session we were discussing about graph algorithms. We're talking about single source path length algorithm. We're talking about checking if the graph is bipartite graph or not. And after that, we also talked about what is minimum spanning tree, what are the applications of minimum spanning tree. And once we seen applications of minimum spanning tree, then we also talked about union find algorithm, the algorithm to check whether the graph has got a cycle or not. And then we are able to complete that. I'm very sure you must have found enough time to go through the algorithm once again, doing a paperwork again. And if you've done a paperwork again, you should be comfortable with the algorithm. And in the same series, there is one more algorithm. There is a Prim's algorithm. As I told you yesterday, you'll find that the Prim's algorithm is bit more easy as compared to probably the Kruskal algorithm. So let us see what this algorithm is. Again, this algorithm is on the similar line. On the similar line, this algorithm is also kind of, you can say that, greedy algorithm. So take care of it. And here we start with like a greedy algorithm. So, and this algorithm is trying to take up V vertices. It's trying to take up V vertices uh, because you say that spanning tree will have V minus one edges and V vertices, and such V vertices which has got a minimum weight or minimum key kind of stuff. So, sir, what exactly it is and how exactly it will work? Yes, we want to talk about that only. So I'm just going ahead one by one and we'll talk about. So starting with this, the very first thing that we want to talk about, Kabar Gya. Hmm. So what the algorithm says that we want to keep a track of, we want to keep a track of the vertices included in MST. So we need a set. Set in the sense set unique होता है. So you always know that it is not a duplicate नहीं होनी चाहिए. So I want to just ensure that one vertex is not added twice. So you want to create that. Going ahead, also keep a track of parent of each one. कि हर एक वर्टेक्स का पेरेंट कौन सा है. I guess that is something similar we have done at the time of union find algorithm, right? Yeah. Then we continue further. Then we continue further. We want to assign key to each and every vertex. Okay, you want to assign key to each and every vertex, but how? The starting vertex key should be zero. Starting vertex key should be zero, and rest all key should be considered as infinity. Now, key is just some value associated with this particular vertex. So, हर एक vertex के साथ कुछ ना कुछ तो value associate करना है. So, you say that key of all vertices should be initialized to the infinity, and the starting vertex key should be zero. All right. Now, what you need to do is that until all vertices are added, you need to pick up every time you want to pick up a vertex. Every time you want to pick up a vertex with the minimum key. Every time you want to pick up a vertex with the minimum key. So pick a vertex u which is not there in MST but has got kind of a minimum key. That's like a first thing. And second thing, it include that vertex into the MST, add it into the minimum spanning tree, and not only that, उसकी जितने सारे neighbors हैं, update all neighbors, update all neighbors, update all adjacent vertices of U. And how you want to update it? I want to update it to weight of U to V age. You want to update it to the weight of U to V age. That is something you want to say. At the same time, you want to make V as a parent of U, that U as a parent of V. And this is what all your basic algorithm is. Don't worry, reading algorithm कभी किसी को समझ में नहीं आता है. So I just was reading it once so that you just hear it. And then as we start ahead, as we will do it step by step,
you should be in a comfortable position. Let us just go ahead. Let us just go ahead and let us begin with, let us pick up a vertex with the minimum key. So 0 is a vertex with the minimum key. Yes, I have picked up. And then all its neighbors, I want to update all its neighbors. अब इसका जो कनेक्टिंग एज है आपको दिख रहा है यहाँ पर, कनेक्टिंग एज का वेट है 4. सो 4 इज लेस देन इंफिनिटी. सिंस 4 is less than infinity, please update the age of this. And you talk about the next one. The next one also, I'm able to see that connecting weight ka age hai 8. 8 is again less than infinity. So you go ahead and you update this one as well. Please note, जो आपने पहले कंसिडर किया था, यू आर डेफिनेटली एडिंग इट इनटू द एमएसटी फर्स्ट. सो आपने इसको ऑलरेडी एमएसटी में ऐड कर लिया है, और बाद में उसके जो नेबर्स थे, उसके जो नेबर्स थे, नेबर्स को आपने नेबर्स को आपने उसके कीज चेंज कर दिए. नाउ अगेन रिपीट द प्रोसेस. खत्म हो गया, बेसिक प्रोसेस इतना ही है. अब इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे. So again, pick up a vertex with the minimum key. Now, which is the next vertex of minimum key? I find that the minimum vertex is nothing but 4. If it is 4, so let us pick up that. Once you have picked up, let us add it into the MST. It is added into the MST. And now what I want to do? Again, उसके जितने सारे neighbors है, that I want to update. अब पहला neighbor है 0, but that 0 neighbor is already into the MST. उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. Second neighbor is 2, but you find that इसका जो age है, this is 8. Connecting age is 8. 8 is less than infinity. If 8 is less than infinity, go ahead and update the key of this, and you say that this is a parent of this. Okay, that is good. Next, but the second one, what I see, sorry, the second one, what I see, this connecting age is kind of 11. 11 is not smaller than 8. Since 11 is not smaller than 8, not to not to modify this plus 7, that's it. Now again, go ahead, pick up one more vertex with the minimum key. अब कौन सा vertex pick up करेंगे with the minimum key? Oh, I found that अब दो vertices है और दोनों 8 8 है. ये दोनों 8 8 है, तो उसमें से कोई भी एक पिकअप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर टाइम बिंग मैं पिकअप करने वाला हूँ 2. आई रिपीट, दोनों सेम ही है, तो आप लोग किसी को भी पिकअप कर सकते हो. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम एज सच, बट फॉर टाइम बिंग आई एम पिकिंग अप दिस. अब इसके जितने सारे नेबर्स है, आई नीड टू अपडेट देम. पहला नेबर है 1, इट इज ऑलरेडी इन एमएसटी, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड नेबर. द सेकंड नेबर इज 3. Connecting age is 7. 7 is less than infinity. 7 is less than infinity. Please update that. And you simply say that, let us connect this one. You continue further. You continue further. I repeat. Like next neighbor is, let's say, 5. Next neighbor is 5. Connecting age is 4. 4 is less than infinity. 4 is less than infinity. Go ahead and update 4. Okay, that is also good. You continue further. You continue further. We can say 2. Connecting age is 2. 2 is less than infinity. So go ahead. You modify this to 2. You modify this to 2. चलो 2 के जितने सारे neighbors थे, they are all we have handled. What is next part to be done? The next part to be done, again pick the again pick one with the minimum key. अभी यहाँ पर मिनिमम की वाला कौन है? अब मिनिमम की वाला 8 है. आई होप यू आर एबल टू सी दैट वर्टेक्स 8 इज हैविंग लाइक से मिनिमम की. अब उसके जितने सारे नेबर्स हैं, यू अपडेट देम वन बाय वन. पहला नेबर है 2, विच इज ऑलरेडी इन एमएसटी. सेकंड नेबर इज 6. सेकंड नेबर इज 6, एंड आई से दैट connecting age is 6, but 6 is less than infinity. If 6 is less than infinity, go ahead, go ahead, connect this, and you say that yes, it is 6. And now there is a twist in a story. Pay attention. Twist in a story. What I'm saying, next word and next is 7. 7, connecting age is 7. And connecting age 7, listen carefully, connecting age 7 is less than 8. Oh, connecting age 7 is less than 8. What is the meaning of this? It only means that I need to go ahead and I want to update that. But what is significance of this? The significance of this says that कि अभी आप लोग 8 यहाँ पर क्यों था, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे. अब मैं कह रहा हूँ, don't come from here to here. Instead of that, come from here to here. This is optimal path. This is a minimal path, and that is the reason
I need to just remove the old parent, and I would say that yes, you are coming from 8 to 7. And then you continue story. You again pick up the vertex with the minimum key. Who is the vertex of minimum key next? A vertex of minimum key next is nothing but I guess 5. You pick up 5. You pick up 5, and again all its neighbors. I found the first neighbor is 3. If first neighbor is 3, age is 14, but 14 is not less than 7, so forget, don't touch that. The second neighbor is let's say 4, age is 10, age weight is 10, 10 is less than infinity. Go ahead and modify it, make it like a infinity to 10. Done. Third neighbor was let's say 6. 6 is less than 6, but the connecting age is 2. 2 is less than the current. A current is what? 6. So you are saying that don't come from here to here. Instead of that, come from here to here, which is more optimal, which is more optimal. So let me just remove this and let me just update this to 2, and I can say that now I'm coming from 6 to 2. This is done. And go ahead, pick up the next vertex. Now which is the next vertex of the minimum key? Next vertex of the minimum key seems to be 6. All right. अब 6 के जितने सारे नेबर्स हैं, मैं वन डेट 6 का पहला नेबर है 5, it is already added in MST. 6 का दूसरा नेबर है 8, that is also added into the MST. और 6 का तीसरा नेबर है 7, but 7 को ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो वेट दिया गया है. So you compare that 1 is less than 7. Now what you are saying? You are simply saying that कि अभी आप लोग कहाँ से कहाँ पर आ रहे हो? अब मैं 8 to 7 आ रहा हूँ, and that's why the key is 7. That's why key is 7. तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर मत आओ. This is not a good choice. The good choice is that यहाँ से यहाँ पर आ जाओ and you make that key is equal to 1. आई होप आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है. अल्गोरिदम वैसे यूजुअली मैकेनिकल होता है, जो आपको बाजू में लिखा हुआ है तो आप लोग उसको हमेशा देख के फॉलो कर सकते हो. लेकिन हम लोग जब ये चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्लाइड में नहीं लिखा जा सकता. सो दैट इज द रीजन यू शुड बी डूइंग पेपर वर्क टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि अब 7 एंड नाउ इट इज 1. तो आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, अगर आपने नोट किया होगा, पहले ये जो 7 था, 7 के ऊपर हम लोग पहले आ रहे थे 0 से, और बाद में हम लोग कह रहे थे यार 0 इज नॉट अ गुड पाथ, 0 से बेटर पाथ है 8. और अब हम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं 8 से भी मत आओ, 8 से भी बेटर पाथ है 6. सो एट एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू फाइंड, रिफाइन, एंड वी आर गेटिंग इवन अ बेटर ऑप्शन. करेक्ट. सो दिस इज समथिंग वी आर डूइंग. You continue further, pick up the next vertex with the minimal path, minimal key. A next vertex with the minimal key is I guess 7. And good thing is that all its neighbors are already added in MST. आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. Pick up the next vertex with the minimum key that comes out to be 3. That comes out to be 3. और 3 के 2, 5 ये neighbor already added है. सिर्फ बचा है 4. और बचा है 4, and it is saying that कि यहाँ से अगर यहाँ पर आओगे तो weight is 9. यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो weight is 10. So you are saying that don't come from here to here, better you come from here to here. Again you are giving the more optimal path. So this particular 9 is less than 10. So simply update the key. Not only update the key, also update the parent. और उसका जो old parent है, उसका old parent आप लोग निकाल दो. That's it. And again pick up the next vertex with the minimum key. अब एक ही बचा है, एक ही बचा है. You pick up that as well. And moment you picked up that, now you find that all V vertices are into the tree. If all V vertices are into the tree, we can say that this is my minimum spanning tree. And by the way, अगर आपने note किया होगा, this tree is different than the tree that we have made yesterday. ये जो ट्री है, दिस ट्री इज डिफरेंट देन द ट्री दैट वी हैव मेड यस्टरडे. ये जो ट्री बनाया था, ये क्रुस्कल से बनाया था. ये जो ट्री बनाया था, ये क्रुस्कल से बनाया था. इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? बाय द वे, इज इट सेम ट्री, इज इट डिफरेंट ट्री? यस, इट इज अ डिफरेंट ट्री. इट इज अ डिफरेंट ट्री, बट स्टिल कैन यू डू द टोटल? कैन यू डू द टोटल वेट? कल हम लोगों ने कुछ तो वेट किया था और दैट कम्स आउट टू बी लाइक 37. तो अब हम लोग वापस एक बार चेक कर सकते हैं कि अब इसका वेट कितना है. इज इट स्टिल 37? गुड. सो इसका मतलब है नॉट नेसेसरी दैट प्रिम्स एंड क्रुस्कल माइट गिव यू द सेम सॉल्यूशन.
not necessary that Prims and Kruskal will give you the same solution. However, one thing is sure that ultimately the minimum spanning tree, मतलब total weight आपका कम ही रहेगा. I hope you understood the first pass. I'm repeating it once again for you. I'm repeating it once again for you. The whole algorithm. And मैंने कल लेक्चर के जाते जाते बताया था कि we will be spending time onto the Prim's algorithm, but we will not be spending time on Dijkstra's algorithm because Dijkstra's algorithm is a copy paste algorithm of Prim's. I repeat, Dijkstra's algorithm is a copy paste algorithm of a Prim's. तो जिसको Prim समझ में आता है उसको Dijkstra वैसे भी समझ में आता है. So you have any doubts regarding Prim's algorithm, please keep asking. Don't worry, एक बार मैं पहले revise करता हूँ. Still not clear, do ask it so that we go ahead. We will write the Prims. Once the Prims entirely finish, we will copy and paste and we will change it to Dijkstra. Right? So let me go ahead. Let me go ahead and let us start with. So the algorithm begins by making the keys of each one to infinity. हर एक वर्टेक्स के साथ हम लोग कुछ ना कुछ तो की एसोसिएट कर रहे हैं एंड की ऑफ ईच वन यू वांट टू मेक इट इन्फिनिटी एक्सेप्ट जो आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसका की आई वांट टू मेक इट जीरो. At each pass I want to pick up the vertex with the minimum key and I want to add it into the MST. I'm adding it to MST. अब उसके जितने सारे नेबर्स हैं जो ऑलरेडी MST में एडेड नहीं है उसके जितने सारे नेबर्स हैं वो हर एक नेबर को आपको उसका हर एक नेबर का की एडजस्ट करना है. नाउ यू फाइंड दैट 0 to 1 कनेक्टिंग एज इज 4. 4 इज लेस देन इंफिनिटी. गो अहेड, यू मेक इट 4 एंड यू से दैट 1 के ऊपर हम लोग 0 से आ रहे हैं. You continue further, you again say that कि this is 8 connecting edge 0 to 7 connect 8 is less than infinity. 8 is less than infinity, you update 8 so हम लोग 0 से 7 के ऊपर आ रहे हैं. Okay, that is good. Again pick up a vertex with the minimum key. आप लोग भी मेरे साथ पेपर वर्क कर सकते हो, you will be more comfortable. Pick up a vertex with the minimum key. Pick up a vertex with the minimum key. Now the vertex 1 is having the minimum key. Let us pick up that. अब उसके जितने सारे नेबर्स हैं तो जीरो पहला नेबर जो है वो ऑलरेडी एमएसटी में, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. जो दूसरा नेबर है उसका कनेक्टिंग एज है 11. द 11 इज नॉट लेस देन 8. तो आप लोग कह रहे हो यहां से यहां पर आना दैट इज नॉट ऑप्टिमल पाथ as compared to 0 to 7. Forget. You continue further. You say the next. Again, what you're saying is now the second neighbor is 2 and connecting age is 8. If connecting age is 8, I can say that let us go ahead and let us modify the weight key to 8 and connect. So हम लोग 1 to 2 जाने के लिए रेडी है. Now इन दोनों में से अब अब वापस से एक बार हमारे पास दो वर्टाइसेस है जो ऑलरेडी एमएसटी में ऐड हो चुके हैं और बचे हुए हमारे पास कितने वर्टाइसेस बचे हैं? 7 वर्टाइसेस बचे हुए हैं जो अभी तक एमएसटी में नहीं एडेड हुआ है. तो जो एमएसटी में नहीं है उसमें से जिसका मिनिमम की है उसको वापस से पिकअप करो. एंड व्हाट आई सी ओवर देयर इज दैट 2 एंड 7 ऐसे दो वर्टाइसेस है जिनका मिनिमम जिनका मिनिमम की है. ओके, जिनका मिनिमम की है तो सर अगर दोनों सेम होते तो क्या करते हैं? तो कोई भी एक पिकअप कर लो. मैंने ये वाला किया था. बाद में जब आप लोग पेपर वर्क करोगे तो आप लोग 7 को पिकअप करो और फिर से एक बार करना. आपका ट्री अलग हो जाएगा, डोंट वरी. ट्री अलग हो जाएगा लेकिन टोटल 37 से कम नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट. सो यू गो अहेड, यू पिकअप लेट्स से 2. मैंने 2 को पिकअप कर लिया. 2 को पिकअप कर लिया. अब उसके जितने सारे नेबर्स हैं लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. ए पहला नेबर 7 is less than infinity. 7 is less than infinity, you replace that. You continue further. 4 4 is less than infinity, go ahead. 4 is less than infinity, you update that. Next I said 2 is less than infinity, you update that as well. You have taken care. A 2 के सारे नेबर्स खत्म हो चुके हैं. Let us go ahead, pick up the vertex with the minimum key once again. Pick up the vertex with the minimum key once again. अब किसको पिकअप करना है? Which is the next vertex? और next vertex is vertex 8 जिसका की
मिनिमम है, जिसका कि मिनिमम है. सो लेट मी पिक अप दैट वाला वर्टेक्स. अब उसके जितने सारे नेबर्स है, उसका पहला नेबर है 2. ए 2 इज ऑलरेडी कनेक्टेड, 2 इज ऑलरेडी कनेक्टेड. अब दिस इज 6, 6 is less than infinity, so you go ahead, you make it, you make this 6. This is done. And again now you are saying that the 7 is less than 8. If 7 is less than 8, you make this as 7, and you say that better you come from 8 to 7 instead of 0 to 8, instead of 0 to 8. You continue the story further, you continue the story further. Again find the vertex with the minimum key. This is a vertex with the minimum key. Now I guess it is very visible, and let's say 5. Okay, good. And then अब उसके जितने सारे नेबर्स हैं, वन बाय वन. ये पहला नेबर है 14. ए 14 इज लेस देन 7, ये तो मेरे को नहीं लग रहा है, फॉरगेट. 10, 10 is less than, 10 is less than infinity. Go ahead, modify, make it 10, and you see that these are connected now. You continue further. You said 2. A 2 is less than 6. A 2 is less than 6. Yes, 2 is less than 6. So let me go ahead and update this. So हम लोग कह रहे हैं कि better to go from 5 to 6 instead of going from 8 to 6. Instead of going from 8 to 6. This is done. Pick up the next vertex with the minimum key. Now, which is the next vertex of the minimum key? Next vertex of the minimum key seems to be 6. So let us pick up 6, and then you repeat the process. अब 6 का एक ही vertex बचा हुआ है जो MST में नहीं है, that is 7. And again I find that this 1 is less than 7. 1 is less than 7. Let me go ahead, let me erase 7, and let us keep it 1 there, keep it 1 there. And now I'm saying that it means that I'm going from 6 to 7 instead of 8 to 7. 8 to 7. This is done. Again pick up the vertex, pick up the vertex with the minimum key. I pick up the vertex with the minimum key, and I found that yes, 7 is the vertex of the minimum key. And you continue further. You इसके सारे neighbors already visited, already MST में added है, हमें और कुछ करने लायक नहीं है. You continue the story. Again you pick up the vertex with the minimum key, which is that, oh, it is 3. If it is 3, uh, we have picked up. अब उसके सारे neighbors, उसका वैसे एक ही neighbor बचा हुआ है, and it is saying that 9 is less than 10. If 9 is less than 10, go ahead and replace it. You are saying that now you are going from 3 to 4 instead of going from 10, 5 to 4. This is done. Pick up another vertex with the minimum key. अब एक ही बचा है, just pick up that, and you can complete your part. And now you can complete your part. All v vertices are added, and this is nothing but my minimum spanning tree. Is the algorithm is clear? So should we move on to the coding part? Good. So let us go ahead. जो कल का हम लोगों ने कौन सा था, वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिया था, वो वाला लेते हैं. क्योंकि अभी मुझको यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा, ए ओवर हेयर मुझको एडजेसेंट वर्टाइसेस ढूंढने हैं. अगर आपको एडजेसेंट वर्टाइसेस ढूंढने हैं, अगर आपको एडजेसेंट वर्टाइसेस ढूंढने हैं, देन यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो लेट मी फाइंड आउट यस्टरडेज प्रोग्राम. गिव मी मिनट, कल का प्रोग्राम मैं कॉपी कर रहा हूँ. Adjacency matrix, adjacency matrix weighted graph. Yes, this is one I'm looking for. So it is available. I'm just copying this. Done. Good. And name, probably I'm just renaming this. Give a minute. And I'm just calling it as, let's say, Prims MST. I'm just calling it Prims MST. This is renamed. Check if the code sharing is working well for you. Yes, done. So like a Prims MST, I've just taken a base code from there,
adjacency matrix weighted graph code, and then I want to do the necessary changes into that. Necessary changes, I'll first do the changes into the comment और उसके बाद में हम लोग बचे हुए चेंजेस करते हैं. So दिलेगा prims mst, दूसरा कोड कॉपी करने का प्रॉब्लम यही रहता है, कोई बात नहीं. So we have done that, and then we will take a look at ये prims mst वाला कोड हम लोग किस तरह से implement कर पाएंगे. वैसे ये adjacency matrix weighted graph है, इसमें कोई शक नहीं है. So let it be as it is. और आपको याद होगा हम लोगों ने infinity we have set it like a 999. Okay, that is also good, not a problem. और जो इनपुट हमें लेना है, इनपुट हमें लेना है जो कल का हमारा क्रुस्कल का जो ग्राफ था, वही ग्राफ हमको एज ए इनपुट करके लेना है. सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट क्रुस्कल का जो ग्राफ था कल का, क्रुस्कल का जो ग्राफ था वो मुझको एज ए इनपुट करके लेना है. सो लेट मी टेक अप दैट, आई सिट देयर, एंड आफ्टर दैट कहाँ पर गया, ये रहा. I found it over here, and this is something that I would copy over here. All right, so I'm ready. So ये काम करता है क्या, एक बार जितना कॉपी पेस्ट किया है कम से कम अपना बेसिक एडजेसेंसी मैट्रिक चल रहा है नहीं चल रहा है उतना एक बार रन करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट. डन. एंड दिस इज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स दैट इज क्रिएटेड. इट इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स दैट इज क्रिएटेड, ये मेरे को दिख रहा है. आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग गुड, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. इट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स दैट इज बीन क्रिएटेड. ओके, लेट इट बी. लेकिन अब मुझको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको किस में इंटरेस्ट है, मुझको किस में इंटरेस्ट है, मुझको प्रिम्स एमएसटी बनाने में इंटरेस्ट है. सो लेट अस जस्ट गो अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट पब्लिक void prims mst. Okay, prims mst, and here we go. And what all things that we are talking about, I'm saying that हर एक इसको की असाइन करना है. सो कीप की associated with each vertex. Not only key associated with each vertex, or and also parent of each vertex. आपको हर एक वर्टेक्स का पेरेंट याद रखना है, हर एक वर्टेक्स का की याद रखना है. इसके अलावा you need to also ensure that whether the vertex is already added in MST or not. Correct. Also keep key associated with each vertex, also parent of each vertex, and and also if and also if what I need to check, if a vertex added in MST. तो सर ये सब कुछ ट्रैक कैसे रखेंगे, जो हम लोगों ने कल BFS DFS में जो मार्क्ड वाला फंडा यूज किया था, एक अलग से एरे बनाया था, द सेम टेक्निक वी विल कंटिन्यू. तो जिन लोगों ने कल BFS DFS का पेपर वर्क किया है, जिन लोगों ने उसके बाद में यूनियन फाइंड का पेपर वर्क किया था, यूनियन फाइंड में भी हम लोग पेरेंट ट्रैक कर रहे थे. तो जो कंसेप्ट हमने कल वहां पर फॉलो किया था, आई एम सेइंग दैट द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू फॉलो नाउ. कोई बड़ा तीर हम लोग नहीं मारने वाले, दैट इज फॉर श्योर. तो उसके लिए हमें कुछ एरेज बनाने पड़ेंगे. सो माय फर्स्ट एरे इज ऑफ parent, and it is of the vertex count. Like a first thing, okay, count. Okay, this is done. What is second thing? Oh, you want to keep the keys as well? Go ahead. And I'm saying that the keys associated with each vertex, that is also integer, and it is like a vertex count. जो आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स रिप्रेजेंट कौन से वर्टेक्स का है, और करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं. और वो एमएसटी में एडेड है या नहीं है, ये जानने के लिए कि आई विल हैव वन मोर, नोट इज एरे ऑफ बुलियन. ए बुलियन क्यों, वो ट्रू या फॉल्स, तो वो है या नहीं है, इसके अलावा तो मेरे को कुछ नहीं जानना है. सो दैट इज फॉर श्योर. बाय द वे, व्हाट इज द इनिशियल स्टेटस, द इनिशियल स्टेटस, initially what do you want to do, make what is that, keys of all vertices should be initialized to, can you please complete the statement, keep of all initialized to infinity. Okay, go ahead to infinity. So how do you set up that? Again, I can simply use that arrays.fill part, and with the arrays.fill part I can say keys, and I'm just marking it as a infinity. A first part is done. You continue further, make parent make
parent of all vertices to -1. Okay, how do you make the parents of all vertices to -1? Again, you can continue further. You can simply say arrays dot fill, and I'm saying that the parent I want to set up the value is equal to -1, and then initially, 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 no vertex is added into MST. No vertex is added into the MST. वैसे आपको पता है by default false ही होता है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, but still for your comfort, just for your comfort and just to make it readable, I'm saying that you make it all false. Make it all false. I hope the first 3 lines are clear to everyone. Now we can continue further. अब हमें क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा, ओ स्टार्टिंग वर्टेक्स जहां से आपको काम शुरू करना है, सो स्टार्टिंग वर्टेक्स, सो मेक स्टार्टिंग वर्टेक्स, बोलो फटाफट, स्टार्टिंग वर्टेक्स की एज as 0 and then get started with the algorithm. So you continue further, you simply said keys of this root is equal to 0, keys of root is equal to 0, and you get started with the algorithm. Get started with the algorithm. Okay, that is good. I'm ready. अब मुझको करना क्या है, आई वॉन्ट टू काउंट, मुझको एक 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 वर्टेक्स उठाना है, उसको ऐड करना है एमएसटी में, दैट इज व्हाट ऑल आई नीड टू डू इट, सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। तो मुझको कहीं ना कहीं पर तो एक काउंटर भी रखना पड़ेगा, और जब तक वो काउंट भी नहीं हो जाता तब तक मुझको रिपीट करना पड़ेगा। ओके, आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, सो व्हाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू वर्टेक्स काउंट, not equal to vertex count, I want to repeat. So I'm saying that repeat until all vertices are added into MST. Chalo, that is good. All vertices are added in MST. Lekin, what is your first job? My first job is that pick vertex with minimum key. Isn't it? That is my first job. Pick the vertex with the minimum key. What is second job? Add it into MST. And third thing is that update keys of its neighbors. Am I correct? If this is what the algorithm that we were following throughout, and if this is the algorithm that we were following throughout, let me just go ahead. Pehle, to pick up the vertex with the minimum key, pay attention, to pick up the vertex with the minimum key, अब मेरे पास जितने वर्टाइसेस है मुझको सबके कीज जाके चेक करने पड़ेंगे, और फिर उसमें से मिनिमम उठाना पड़ेगा। तो सर ऐसा कोई रेडीमेड फंक्शन होता है क्या वैसे, एरेज डॉट मिनिमम, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। और वैसे भी रुको, मुझको अंडरस्टैंड दैट, मुझको मिनिमम की में इंटरेस्ट नहीं है, मिनिमम की जिस वर्टेक्स का है मुझको उस वर्टेक्स में इंटरेस्ट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझको मिनिमम की में इंटरेस्ट नहीं है, मिनिमम की जिस वर्टेक्स का है मुझको उस वर्टेक्स में इंटरेस्ट है। तो सर क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूं मैं उसके लिए अपना एक अलग से फंक्शन लिखूं। व्हाट इज दैट? गेट मिनिमम। गेट मिनिमम वेयर आई कैन पास अ array, आई कैन पास अ array, एंड बट एक मिनट, व्हाट आई वांट टू पास समथिंग विच इज नॉट एडेड इनटू द एमएसटी। ये जो ऑलरेडी एमएसटी में एडेड है, जो एमएसटी में एडेड है वो मेरे को नहीं चाहिए, जो एमएसटी में एडेड है वो मेरे को नहीं चाहिए, वो छोड़ के जितने सारे हैं, आई जस्ट वांट टू गेट द मिनिमम फ्रॉम दैट। प्लीज नोट, दिस इज वन ऑफ द स्टूपिड मोस्ट कोड, फाइंडिंग अ मिनिमम ऑफ अ एरे। लेकिन ये याद रखना, हमको मिनिमम वैल्यू इन एरे नहीं चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पे है, वो मिनिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पे है हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है, हमें वो वर्टेक्स नंबर रिटर्न करना है। सो कीप दैट इन माइंड। कोड में लिखता हूं, यू जस्ट अप्रिशिएट दैट, ये ग्राफ का कोड नहीं है, एरे में सिर्फ मिनिमम फाइंडिंग का कोड है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड, आई एम सिंपली सेइंग दैट फॉर vertex v is equal to this, and v is less than vertex count. Okay, v is less than vertex count. What is to be done? What is to be done into this? I need to first check कि जो भी कीज है उसमें से मिनिमम की जो भी होगा वो मुझको पिकअप करना है। चलो, अगर आपको मिनिमम की पिकअप करना है तो हम लोग वी कैन स्टार्ट विद सम वेरिएबल। लेट्स से मिनिमम की, मैं क्या का नाम दे रहा हूँ इसको, आई एम गिविंग द वेरिएबल नेम, लेट्स से मिनिमम की,
and minimum key, I'm just considering it as, let's say, infinity. ए मुझको मिनिमम ढूंढना है, सो लाइक अ मिनिमम की आई एम सेइंग दैट इन्फिनिटी, और वो मिनिमम की का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है आई एम सेइंग इट्स -1, एंड वी कैन बिगिन अवर जर्नी फ्रॉम हेयर. We can begin our journey from here. What do you want to check? If keys of V is less than currently found minimum key, a keys of V is less than currently found minimum key, what is to be done? What is to be done? The minimum key is to be updated to the keys of V, or जो minimum vertex है, the index I'm talking about, it is to be updated to the V. Is this logic is clear to everyone? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया विद द इनफ हाई वैल्यू, हम लोग लूप के थ्रू जा रहे हैं, हम लोग लूप के थ्रू जा रहे हैं, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर अगर उसका जो भी एलिमेंट, इफ द एलिमेंट इज लेस देन लास्ट फाउंड मिनिमम की, देन द मिनिमम की इज टू बी फर्दर अपडेटेड, एंड नॉट ओनली फर्दर अपडेटेड, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट जहां का मैंने अपडेट किया है वहां का वर्टेक्स नंबर भी मैं कॉपी कर लेता हूं. इज दिस क्लियर? फाइंडिंग मिनिमम का लॉजिक चल रहा है, एरे में से मिनिमम ढूंढने का लॉजिक चल रहा है, ये कोई ग्राफ थ्योरी नहीं चल रही है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. बट बाय द वे, आपको सारे वर्टाइसेस का चेक करना है क्या? नो, आई वांट टू डू इट ओनली फॉर दोज वर्टाइसेस विच आर नॉट इन एमएसटी. आई होप यू नो दैट. मुझको जो वर्टाइसेस एमएसटी में नहीं है, तो आई जस्ट गो अहेड, आई जस्ट गो अहेड एंड आई से दैट एमएसटी ऑफ वी, if it is not in MST, please make a note. If it is not in MST, then and only then I want to compare. If it is already there in MST, there is no point in comparing that. क्योंकि अगर ऑलरेडी एमएसटी में होगा तो वैसे भी उसका वेट मिनिमम रहेगा, उसको लेके मैं करूंगा क्या? इट इज ऑफ नो यूज. एंड एट द एंड व्हाट आई वांट टू रिटर्न, कैन यू प्लीज कंप्लीट द लाइन? मुझको क्या रिटर्न करना है? मुझको यहाँ पर क्या कंप्लीट रिटर्न करना है? वो वर्टेक्स रिटर्न करना है, एंड दैट वर्टेक्स, मिनिमम वर्टेक्स, वो हम लोगों ने स्टोर कर रखा है मीन वर्टेक्स. सो वी हैव रिटर्न अ वेरी सिंपल कोड विच इज रिटर्निंग, विच इज रिटर्निंग द वर्टेक्स, मिनिमम वर्टेक्स, जो ऑलरेडी एमएसटी में नहीं है और जिसका वेट कम से कम है, जिसका की कम से कम है. एंड एज यू अंडरस्टैंड दैट, you continue further. Pick the vertex with the minimum. So I can simply call the function get minimum keys and all that. And what I'm getting over here is, let's say, vertex u. I'm getting a vertex called as a vertex u. मैं जानबूझ के वही नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने स्लाइड में लिखे हैं, so that बाद में आप लोग कोड और स्लाइड साइड बाय साइड रख के समझने की कोशिश कर सकते हो, if you are interested in. Okay, I got that. Now I want to add this vertex into the MST. You are saying that you want to add it into the MST. So simply say MST of U is equal to true. It is added into MST and I want to increment the count. Chalo, that particular vertex is added into the MST. Oh, that is great. What is the next job? Update the key of all its neighbors. अब U के मुझको सारे neighbors ढूंढने, U के सारे neighbors ढूंढने. So how do I find out neighbors of U? I'm saying that for all V's in a row of that. ये बराबर ना? कल हम लोग वही कर रहे थे, कल हम लोग वही कर रहे थे. So all into that neighbors of that. So I can simply check. What I can say? Check adjacency matrix. Adjacency matrix of U to V. U to V is not equal to infinity. If it is not equal to infinity, what is the meaning of this? U to V, it is not equal to infinity. What is the meaning of this? So it simply means that V is a neighbor of U. जो हम लोगों ने करंट वर्टेक्स पिकअप किया है, जो हमने करंट वर्टेक्स पिकअप किया है, मैं उसके कंप्लीट रो में से जा रहा हूं. सो U रो नंबर इज केप्ट सेम, आई एम चेंजिंग द कॉलम, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू एंटायर रो. और जहां जहां पर इंफिनिटी नहीं है, अगर इंफिनिटी नहीं है, इसका सीधा साधा मतलब होता है वहां पर कुछ ना कुछ तो वेट है, इसका मतलब इट इज देयर. इफ इट इज देयर, अब मुझको करना क्या है? अब मुझको करना क्या है? सबसे पहले आई वांट टू इंश्योर दैट कि वो जो वर्टेक्स है इट इज नॉट एडेड इन एमएसटी. वो जो नेबर है, अगर नेबर ऑलरेडी एमएसटी में एडेड है तो उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है. एंड एट द सेम टाइम मुझको क्या इंटरेस्ट है? आई एम इंटरेस्टेड इन उसका जो की है, किसका? नेबर का जो की है. टेक अ लुक एट दिस. ये जो की है, दिस की, इफ जो कनेक्टिंग, एक जो कनेक्टिंग वेट है, दिस इज अ कनेक्टिंग वेट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कनेक्टिंग वेट.
if the connecting weight is less than the current key. If the connecting weight is less than the current key. If the connecting weight, if the connecting weight is less than the current key, what I should do? Can someone tell me what I should do? Yes, I need to update. What I need to update? I need to update the keys of V is equal to the weight is equal to the weight. If we have done that, a keys of V is equal to this. But you are not supposed to update only the key. आपको और भी कुछ अपडेट करना था. आई होप आप लोग भूले नहीं हो. आपको और भी कुछ अपडेट करना था. आई गेस यू वांट टू अपडेट द पेरेंट ऑफ V as you. You want to update the parent of V as you. So this is nothing marking the age कि ये वाला age मुझको consider करना है. Okay, that is good. And then you are repeating this until all vertices are added into the MST. To be frank, this is done. This is done. और कुछ करने लायक कुछ नहीं है. It is very easy, very simple, very straightforward. And what is next job to be done? Nothing. अब मुझको क्या चाहिए? या अब मुझको पता है कि कौन सा वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स से आने वाला है. दिस इज नथिंग बट माय पेरेंट का ये पूरा का पूरा एरे ही मेरे पास है. आई जस्ट सिंपली से दैट again either I can print it over here itself or I might want to return. I might want to return and I can print it into the main. Choice is yours. आपको यहीं पर प्रिंट करना है यहाँ पर प्रिंट करो. अगर आपको मेन में प्रिंट करना है तो यहाँ से रिटर्न करो. यहाँ से रिटर्न करो और मेन में जाके प्रिंट करो. तो सर हाउ डू यू प्रिंट इट देयर? लेट मी जस्ट गो अहेड एंड लेट मी पहले तो कॉल करने दो बाद में प्रिंट करते हैं. जी डॉट प्रिम्स एमएसटी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो हम लोगों ने पेपर वर्क किया था उसके हिसाब से एक क्या इनपुट लेना है. और इनपुट है वो क्या आएगा मुझको? आई एम गोइंग टू गेट द ट्री. आई एम गोइंग टू गेट द ट्री. एक्चुअली टू बी फ्रैंक आई विल गेट द पेरेंट of each one, that is nothing but all tree I'm getting. So let us use for each. A for each नहीं, for integer. एक मिनट. I just want to keep the name similar. For each vertex V is less than parent dot length. Parent dot length or you can say vertex count, वैसे भी उतना ही रहेगा, no doubt on that. And then V plus plus. So what I want to say? I want to say that there is a age from V to U. There is a age from V to U, or let's say V का parent U है. So parent of V to V. This is nothing but the age that we are considering. This is nothing but the age that we are considering. चलो, we got the ages and we are printing them. लेकिन I am very sure you want to do the total as well. या आपको उसका counting भी एक बार कर लेना चाहिए, just to ensure that whether it is really correct or not. Okay? तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक बीच में फंक्शन लिख रहा हूँ, just for sake of क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो source to destination. Source to destination, I want to just return the weight SRC and DST. So मैं उसको करंट जो भी मेरा एज है उसका वेट रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझको नीचे टोटल करना है. So let's just go ahead, take total is equal to 0 and total is equal to, कल मैंने गलती की थी, टोटल प्लस नहीं किया था. So we can say that G dot get weight from the source to destination. So parent of V, a parent of V to V, ये जो भी जो आ रहा है इसका टोटल मैं ऐड कर रहा हूँ. एंड फाइनली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जो मैंने पेपर वर्क किया है उसके हिसाब से आपके एमएसटी का टोटल वेट 37 आना चाहिए, अगर हमने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया होगा तो. लेट्स सी इफ इट इज गोइंग वेल. लेट मी कॉपी दिस. लेट अस रन दिस. रन a java application and you paste it there and there is an exception. क्या दिन आ गए? Okay, -1. Okay. That is but expected. Have you got the point? why -1? क्योंकि हम लोगों ने 0 से चालू किया है ना, तो 0 का पेरेंट तो हमेशा -1 ही रहने वाला है. हेलो, 0 का पेरेंट हमेशा -1 रहने वाला है, तो जो -1 रहने वाला है उसको वैसे काउंट नहीं करना चाहिए था.
isn't it? So that was like तो इसमें गलती उसकी नहीं है, एल्गोरिथम की गलती नहीं है, but we are saying that कि जो चालू कर रहा है उसका पैरेंट चेंज नहीं होने वाला है, बचे हुए हमने सबके पैरेंट चेंज कर दिए, and that is the reason it is giving exception while getting the age of this. कोई बात नहीं, we can always take a look at that. इसमें से अगर कोई भी एक -1 होगा, if मैं फिलहाल तो उसका वेट आई एम रिटर्निंग 0, इफ सोर्स इज इक्वल टू -1, और या और क्या, or destination is equal to -1, I can simply say return 0. So instead of it is giving me exception, better I'll return 0. No problem. ये मैं वेट कलेक्ट करा उसके लिए. प्लीज नोट, प्रिम्स के एल्गोरिदम में एरर नहीं आया था. एल्गोरिदम, प्रिम्स का एल्गोरिदम हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, जहां पर मैं गेट वेट कर रहा था वहां पर एरर आ रहा था. सो प्रिम्स एल्गोरिदम इज स्टिल करेक्ट. Prim's algorithm is still correct, and obviously verification can be done. Here you find that exception was because of this कि -1 ऐसा कोई वर्टेक्स होता ही नहीं है. अब एक्चुअल एजेस जो आपको मिल रहे हैं, एक्चुअल एजेस ये है, और ये -1 सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका रूट है, ये आपका रूट है. सो जहां पर -1 होगा दैट इज प्रोबेबली रूट, बट अदर वंस यू आर एबल टू सी इट कि दीज आर ऑल एजेस दैट वी आर कंसिडरिंग, एंड द टोटल वेट इज 37. Total weight is 37. I hope you are able to see that. सर ये वही एजेस है क्या? आप लोग चेक कर सकते हो. 0 1 1 2 2 3 3 4 0 0 1 1 2 2 3 3 4. What are the next edges? 2 5 5 6 6 7 2 8. 2 5 5 6 6 7 2 8. I hope now this is crystal clear कि ये वही वाला ग्राफ है जो आपको मिला था, right? Please go ahead. You try it by yourself. Please go ahead. You try it by yourself. I'm waiting. And meanwhile, you have any questions? Please ask that as well. Line number 88. Yes, Mohan, don't worry. Let me know if any problems are there. See, one by one. For Mohan, I am repeating. For you people also. Line number 88. हम लोग पहले check कर रहे हैं. The first condition is telling me whether it is neighbor or not. A first condition is telling me whether it is neighbor or not. If it is a neighbor, I'm checking that वो neighbor is not in MST. Oh yes, neighbor is not in MST. And if it is not in MST, ये जो उसका connecting age का जो weight है, if the connecting age weight is less than the current key of V. So U to V का जो age है, उसका weight keys of V, उसका जो V का जो key है, उससे अगर कम है, what I want to do, ये जो weight है, that weight I want to assign it to the key, and also I want to update its parent, and it is done. Mohan, is that clear? There are three conditions. मैंने तीनों conditions का explanation किया है. First condition is telling कि is it a neighbor? Second condition is checking whether the neighbor is not in MST, and third thing, वो जो connecting age है, is it less than keys of V, current key. Guys, please go ahead. I'm waiting. आप लोग इसको copy paste कर रहे हो, run कर रहे हो. That is good. If this is done, I'll go back and I'll repeat the algorithm once again. अब code आपके सामने है. Now keep the code in front of you. Keep the code in front of you side by side, and then again go through the algorithm. Now when you again go through the algorithm, I'm very sure it will give you bit more clarification how the actual code is written. So I'm just going back. एक बार मैं और repeat कर रहा हूँ the whole algorithm. I'm saying that मैं code का
मैं लाइन बाय लाइन कमेंट्री नहीं देने वाला हूँ. You can keep a code in front of you and you can try to connect. Okay, how exactly the things are working, and obviously, sorry, we can also talk about its time complexity as well. And then once all the things are clear, then we will go on to the Dijkstra, starting with. So हम लोग कह रहे थे, please go through the code. हम लोग कह रहे थे कि initially none of the vertex is into the MST, so all are false. I want to make I want to make keys of each one as a infinity. So you go ahead, अपने हर एक का की infinity कर दिया, हर एक का की infinity कर दिया, हर एक का की infinity कर दिया, हर एक का की infinity कर दिया. Okay, that is good. Initially you made parent of each one is equal to -1. अपने हर एक का पेरेंट -1 कर दिया. सो मतलब किसी का भी पेरेंट नहीं है. एंड व्हाट इज नेक्स्ट जॉब दैट वी सेड, अब एक्चुअल एल्गोरिथम शुरू करना है. सो दैट देयर कम्स योर फर्स्ट लाइन. जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसका की 0 करो और एल्गोरिथम को शुरुआत करो. एल्गोरिथम को शुरुआत करो एंड यू पिक अप द फर्स्ट वर्टेक्स विथ द मिनिमम की. सो गेट मिनिमम आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉल हो रहा है और वो फंक्शन सबके कीज काउंट कर रहा है और जो भी मिनिमम वाला है वो आपको दे रहा है. जो मिनिमम वाला आपको दे रहा है आप लोग कह रहे हो कि दैट इज गुड. आप सबसे पहले उसको एमएसटी में ऐड कर रहे हो. सो एमएसटी ऑफ यू इज इक्वल टू ट्रू. डन. once you are added into the MST, what is the next job that you are doing? अब आप उसके लूप के थ्रू जा रहे हो और उसके जितने सारे नेबर्स हैं वो सारे नेबर्स के वेट आप लोग चेक कर रहे हो. अब पहली चीज तो आप लोग नेबर चेक करो. जो आपका पहला कंडीशन है वो पहला कंडीशन चेक कर रहा है कि आपके नेबर्स कौन कौन से हैं. दूसरा कंडीशन चेक कर रहा है क्या आपके नेबर्स एमएसटी में है. और तीसरा कंडीशन चेक कर रहा है कि वेट ऑफ दिस इज लेस देन द करंट की. इफ इट इज लेस देन द करंट की, go ahead and update that. And not only update, you see that one का parent है 0. आपने लिखा है parent of v is equal to u. Okay, you continue further. You continue further. For the second neighbor, something similar. 8 is less than infinity. 8 is less than infinity. You done that, and also you updated the parent. You updated the parent. You repeat the process. Now you pick up the vertex with the minimum key. You pick up the vertex with the minimum key. अब आपके लूप का सेकंड इटरेशन चल रहा है. रिपीट द प्रोसेस. तो वी पिक अप दिस, वी एड इनटू द एमएसटी. हमने इसको एमएसटी इसका ट्रू कर दिया और इसके जितने सारे नेबर्स हैं तो आई फाउंड दैट इसका जो पहला नेबर था, ये पहला नेबर तो मिल गया बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर द फर्स्ट नेबर इट इज ऑलरेडी इन एमएसटी. तो जो आपका इनर लूप था, लूप के अंदर जो 3 कंडीशन थे उसमें से सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया. सो लीव इट. यू कंटिन्यू फर्दर. यू टॉक अबाउट द सेकंड नेबर. आपका ये था 2 था. सेकंड नेबर आपका 2 था. So where you find that 8 is less than infinity, condition is true, you update that and you update the parent. And a third thing, third neighbor, ये तीसरा neighbor कौन सा था? It is let's say 7. 7. अब देखो पहला 7 is a neighbor, तो अंदर के if का पहला condition true हो रहा है. It is not in MST. दूसरा condition भी true हो रहा है. लेकिन तीसरा condition, इसका weight है 11. इसका weight है 11. 11 is not less than 8. 11 is not less than 8. तो आपका लास्ट वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है. करेक्ट. जो 3 कंडीशन थे, आई होप अभी आपको तीनों कंडीशन का सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ में आ रहा है. देन यू कंटिन्यू फर्दर. यू पिक अप द नेक्स्ट वर्टेक्स विद द मिनिमम की. जो कोड मैंने लिखा है मुझको पता है उसके हिसाब से 2 और 7 में से 2 पिकअप होने वाला है. ये मुझको अच्छे से पता है तो मैंने उसको पिकअप कर लिया. एंड वंस आई हैव पिक्ड अप दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब दैट आई कैन डू? What is the next job that I can do? The next job that I can do is nothing but again उसके जितने सारे neighbors है उतने सारे neighbors. Again I find that this neighbor 7 is less than infinity. Okay, that is good. Second, 4 is less than infinity. You go ahead and then again you find that 2 is less than infinity. 2 is less than infinity. This is done. So you have updated all its neighbors. Again pick up a vertex with the minimum key. Pick up a vertex with the minimum key, and once you pick up a vertex with the minimum key, again you repeat the process. The first neighbor is already visited 2. You continue further, and I want to say that 6 is less than infinity. 6 is less than infinity. You are connecting, and next we are saying that it is 7 is less than 8. 7 is less than 8. 7 is less than 8. So now अब note करो parent of 7, वो जो पेरेंट कह रहा था
parent of 7 अभी 0 है, parent of 7 अभी 0 है, but now we are seeing that parent of 7 is equal to this, so this value will get overwritten. तो जहां पर parent of 7 index 0 था, अब parent of 7 index is overwritten as 8 there. Okay, that is good. You continue further. You continue further. What I need to do? Again, I need to pick up the vertex with the minimum key. I picked up a vertex with the minimum key, and you again continue. Again, I found that 10 is less than infinity. 10 is less than infinity, and yes, this is set. However, 14 is not less than 7. Forget. But again, I found that 2 is less than 6. 2 is less than 6. So, पहले parent of 6 8 था. A parent of 6 is overwritten as 5, like an improved parent that you got it. Again, pick up the vertex with the minimum key. Pick up the vertex with the minimum key and then continue further. अब उसके से इतने सारे नेबर है, वैसे एक ही नेबर बचा है जो एमएसटी में एडेड नहीं है, and that one is less than 7. A 1 is less than 7. You continue further. You are updating the parent. So parent of 7 अब 8 नहीं रहा, parent of 7 now becomes 6. Okay, that is good. Pick up the vertex with the minimum key. Pick up the vertex with the minimum key 7, and now you have gone through all the edges. Even though you have gone through all the edges, what I seen? What I seen? इसके सारे नेबर्स ऑलरेडी एमएसटी में एडेड है, तो सेकंड कंडीशन वैसे भी सबके लिए फॉल्स होने वाला है. दैट इज गुड. यू कंटिन्यू फर्दर. यू पिक अप द वर्टेक्स विद द मिनिमम की. I picked up vertex with the minimum key, that is 3, and then उसके जितने सारे नेबर है, एक ही नेबर बचा था, and again I see that 9 is less than 10. Oh, 9 is less than 10. You make it 9. You make it 9, and that's it. And now I'm saying that let us go from 3 to 4. Let us go from 3 to 4, and again pick up another vertex with the minimum key. Moment it is added, अब उसके सारे neighbors already visited है, that is not a problem, but count becomes equal to vertex count, and since count become equal to vertex count, I need to stop my algorithm there. I hope this helped you understanding your code and algorithm in context with each other. Is this crystal clear now? That is great. And since you have done that, can you please think of a time complexity now? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या इरादा है? पहली चीज, ये जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा? आउटर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ. यस, इट इज वी टाइम्स. जितने वर्टाइसेस है उतनी बार हमें ये लूप रिपीट करना है. दैट इज प्रीटी क्लियर, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इज लाइक अ वी टाइम्स इट इज गोइंग टू रन. लेकिन इसके अंदर दो लूप्स हैं. ये जो गेट मिनिमम है, ये जो अभी आप लोगों ने गेट मिनिमम लिखा है, वो कितनी बार रिपीट होने वाला है? गेट मिनिमम नहीं, गेट मिनिमम वी टाइम रिपीट होने वाला है, ठीक है. बट गेट मिनिमम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गेट मिनिमम के अंदर वी आर गोइंग थ्रू ऑल द वर्टाइसेस. ये जो मेरा गेट मिनिमम है, अभी जो मैंने इंप्लीमेंट किया है, ये जो गेट मिनिमम किया है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसका खुद का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वी. आई होप यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट. दैट इज गुड. और बाय द वे, ये लूप होने के बाद में, इसके बाद में इसके बाद में फाइंडिंग अ नेबर, हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं. एडजेसेंसी मैट्रिक्स जब यूज करते हैं, देन फाइंडिंग अ नेबर, दिस इज आल्सो गोइंग टू टेक O of V. I hope you got the point. This is taking V iterations and this is also taking V iterations. यहां तक कंफर्टेबल हो? तो ये जो मेरा इनर है, ये जो इनर है, इसके टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस आई कैन से इट इज अ 2 into V. The total iterations are 2 into V. These V iterations plus these V iterations is a 2 into V. वैसे 2 is a constant, आप उसको भूल सकते हो. So ultimately इसका जो वन इनर है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of V. और जो आउटर है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of V. So can you please quickly tell me what is the time complexity of the overall stuff? Overall algorithm is absolutely, it is O of V square. It is O of V square that is going to be the time complexity with this implementation. With this implementation, I said that. Now, take a look at this. अगर आप लोग एडजेसेंसी लिस्ट वाला इंप्लीमेंटेशन यूज करते हो, मैंने कहा अगर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट वाला इंप्लीमेंटेशन यूज करते हो, तो आई एम सेइंग दैट अगर आप लोग एडजेसेंसी लिस्ट वाला इंप्लीमेंट अगर
implement करते हो, तो I'm saying that in this particular case the overall, I'm not saying that for each iteration, overall कितनी बार ये लूप रिपीट होगा। ये कल मैं आपको बीएफएस का जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में, कल शाम के लेक्चर में जब हम लोग बीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे थे। सो एक्चुअली इट विल बी गोइंग फॉर ई टाइम्स, इट विल बी गोइंग फॉर ई टाइम्स, आई सेड ओवरऑल नॉट फॉर ईच इटरेशन। सो दिस इज ओ ऑफ ई। और एक चीज यहाँ पर आप लोग ये जो मिनिमम ढूंढ रहे हो, आपको नहीं लगता कि बहुत गंदा वाला काम कर रहे हो, फाइंडिंग अ मिनिमम? सर गंदा वाला काम क्यों कर रहे हैं? वी आर गोइंग थ्रू द एरे एंड वी आर फाइंडिंग अ मिनिमम। नहीं, ऐसे आपको लगता है, बट दिस इज वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट। इट कुड हैव बीन डन बेटर इफ यू कुड हैव यूज हीप और इफ यू कुड हैव यूज अ प्रायोरिटी क्यू। अगर आप लोग हीप या प्रायोरिटी क्यू अगर यूज करते तो शायद इससे आप लोग बेटर परफॉर्म कर सकते थे। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, बट आई एम सेइंग दैट यूजिंग मीन हीप, यूजिंग मीन हीप और using priority queue, the same implementation could be improved with is, it will, yes, absolutely correct, it will go for O of log v, it will go for O of log v। मैंने आपको बताया था हीप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इवन प्रायोरिटी क्यू का मैंने आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन में निकाल के दिखाया था, इट इज लेट्स से log of v। तो आप लोग log of v, but remember that for each iteration, for each आउटर इटरेशन, आउटर लूप इटरेशन, हर एक इटरेशन के लिए इट वुड हैव बीन दिस, फॉर ईच आउटर लूप इटरेशन दिस विल बी ओ ऑफ लॉग वी। प्लीज नोट ये ओ ऑफ लॉग वी है फॉर ईच आउटर इटरेशन। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड ओ ऑफ वी, ओ ऑफ वी लॉग वी। दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। ये जो आउटर लूप को अगर मैं काउंट, अरे मैं कहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, माय मिस्टेक, आई शुड हैव रिटन इट ओवर हियर। गेट मिनिमम की बात चल रही है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। आउटर लूप तो वैसे भी वी टाइम चलने वाला है, आउटर लूप तो वैसे भी वी टाइम चलने वाला है। तो ये जो गेट मिनिमम है विथ इंप्रूवमेंट, विथ इंप्रूवमेंट इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा? ओवरऑल, ओवरऑल मतलब सबके मिला के हाउ मच इट विल बी, हाउ मच इट विल बी, इट इज नॉट ई लॉग वी, इट विल बिकम वी लॉग वी। ए ओवरऑल आउटर का मिला के मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड वंस फॉर ईच आउटर लूप, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड वंस फॉर ईच आउटर लूप। सो इसका ओवरऑल है वी लॉग वी, और जो नीचे वाला लूप है इसका ओवरऑल है काइंड ऑफ ई, ए काइंड ऑफ ई। तो अगर आपको टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है विद द इम्प्रूव्ड, व्हाट इज दैट, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन। इम्प्रूव्ड वर्जन मतलब क्या मैं कह रहा हूं, using the priority queue, using priority queue plus using adjacency list, using adjacency list, adjacency list। अगर हम लोग कह रहे हैं then overall time complexity, yes, you people are doing better nowadays, v log v, v log v plus e, a v log v plus e। so e plus v log v, ऐसे हम लोग कह सकते हैं this is going to be my time complexity if I'm making like a improved version, if I'm making it like an improved version, that comes out to be this, that comes out to be this। I hope this made it bit more clear। obviously जब आप लोग एक्चुअल इसमें जाओगे, एक्चुअली इसमें जाओगे, यू कैन ऑलवेज से दैट ये जो आपके मैक्सिमम एजेस कितने होने वाले हैं, ये मैक्सिमम एजेस आपके कितने होने वाले हैं, v इंटू वी माइनस वन। अगर आप लोग वो कंसिडर करते हो, अगर आप लोग वो कंसिडर करते हो, देन यू माइट से दैट कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस you might consider it as only e log v, or you might consider it as v log v। so considering the either one from this, तो आप लोग कह सकते हो, but to be more accurate the time complexity will be something like this, time complexity will be something like this। anyway, ये हम लोग कौन से एल्गोरिथम की बात कर रहे थे? we were talking about algorithm called as a, called as a Prim's algorithm, and that is giving me the minimum spanning tree। चलो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम तो हो गया। तो सर अब हम लोग आगे जाते हैं एंड वी वांट टू टॉक अबाउट काइंड ऑफ अ डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम। प्लीज नोट व्हाट इज डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम। ए डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम, आई एम वेल अवेयर द डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम, प्लीज पे अटेंशन। डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम कल मैंने वापस से शाम के लेक्चर में एक वर्ड यूज किया था एंड नाउ इट्स मीनिंग इज नीडेड। डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम किसके लिए है?
वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिदम नहीं है। ये एल्गोरिदम किसका है? दिस इज एल्गोरिदम ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम फॉर वेटेड ग्राफ्स। कल शाम को हम लोगों ने एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम देखा था, बट सिंगल सोर्स पाथ लेंथ एल्गोरिथम देखा था, दैट वाज लाइक विद द बीएफएस, बट वहां पर वो नॉन वेटेड ग्राफ के लिए था। आपने नोट किया होगा। अब मैं बता रहा हूं इट इज ऑल्सो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम फॉर द वेटेड ग्राफ। तो जो लोग कल के लेक्चर में थे, क्या वो मुझ पे एहसान कर सकते हैं? क्या मुझको ये बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सोर्स? व्हाट डू यू मीन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है? सिंगल सोर्स मतलब फ्रॉम वन गिवन वर्टेक्स I want to find out shortest path to all other vertices. From one given vertex I want to find out the shortest path to all other vertices. That is something I'm saying that single source shortest path algorithm. आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो जैसे कल हम लोगों ने सिंगल सोर्स पाथ लेंथ एल्गोरिथम किया था, वही चीज अभी भी करने वाले हैं। अभी भी हमारा फाइनल आउटपुट वही रहने वाला है। फ्रॉम द गिवन सोर्स सारे जितने वर्टाइसेस है उन सब का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये बात याद रखना कि हम लोग हर एक वर्टेक्स के ऊपर जाने वाले नहीं है। तो एमएसटी कह रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह रहे हैं। एट दैट टाइम माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज मुझको सारे के सारे वर्टाइसेस कवर करने, ये मुझको सारे के सारे वर्टाइसेस कवर करने हैं विद द मिनिमल रिसोर्सेस। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि फ्रॉम गिवन पॉइंट आई वांट टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टाइसेस। डजंट मीन कि मुझको हर एक वर्टेक्स के ऊपर जाना है। मुझको सिर्फ सबके डिस्टेंसेस ढूंढ के रखने एंड देन आई वांट टू विजिट एनी वन आउट ऑफ दैट। देन आई वांट टू विजिट एनी वन आउट ऑफ दैट, दैट्स इट। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं हाउ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज डिफरेंट देन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, कल जब मैंने आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एप्लीकेशंस बताए थे, तो आई सेड दैट लाइक अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब वो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम था, वहां पर उसके सेल्समैन की रिक्वायरमेंट क्या थी? उसको सिटी के अंदर 10 पॉइंट्स है, उसको 10 के 10 पॉइंट विजिट करने। उसको किसी एक पॉइंट पे नहीं जाना है, उसको 10 के 10 पॉइंट विजिट करने हैं विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड और विद द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ दैट वाज अ रिक्वायरमेंट। तो उसने जो प्लान किया, दैट प्लान इज लाइक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब वो पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉलो कर रहा है एंड इट इज गोइंग टू विजिट ईच एंड एवरी वर्टेक्स वेयर द ओवरऑल कॉस्ट इज लेस, वेयर द ओवरऑल कॉस्ट इज लेस। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से दैट सेल्समैन का ये कहना है कि आज उसको 10 जगह पे नहीं विजिट करना है। अब मैं नया प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसको 10 जगह पे नहीं विजिट करना है, उसको किसी एक ही जगह पे विजिट करना है। उसको किसी एक ही जगह पे विजिट करना है, बट ही वांट टू विजिट दैट विथ द मिनिमल फ्यूल। नाउ एट दैट टाइम हाउ आई कैन डू इट? आई एम सेइंग दैट ऑल 10 प्लेसेस का मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लेता हूं। ऑल प्लेस 10 प्लेसेस का मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लेता हूं एंड वंस आई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस किसी वर्टेक्स के ऊपर जाना है, एक वर्टेक्स के ऊपर जाना है, वी विल फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ, वी विल फॉलो दैट पर्टिकुलर रूट टू गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। इज शॉर्टेस्ट पाथ एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इज द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन? So what I want to do is that I want to go with like a Dijkstra's implementation. What Dijkstra's implementation is, how it goes, and etc. in front of you. Please pay attention. Please pay attention. And again, I said that the algorithm is same. अब यहाँ पर हम लोग keys नहीं कहेंगे. Instead of keys, we will call it the distance. Take a look at this. यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि we need a set, not MST. It is SPT. SPT stands for shortest path tree. SPT stands for shortest path tree is the first thing. Second thing, I want to keep the distance. अब मैं keys की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about keys. I'm saying that distance of all vertices, and initially they are all infinity. The starting vertex distance should be 0. So अभी हम लोग keys रख रहे थे. अब मैं बात keys की नहीं कर रहा हूं.
अब मैं बात डिस्टेंस की कर रहा हूँ. ओके, दैट इज गुड. अब हमें क्या करना है? वी वांट टू पिक अ वर्टेक्स u which is not in SPT but has minimum distance. Okay, that is good. I need to add that vertex in a shortest path tree. That is done. And then I want to update the edge. A update its distance as distance of u plus weight of uv. Distance of the u plus weight of uv. आई गेस यही चीज हम लोग कल के पाथ लेंथ एल्गोरिथम में कर रहे थे. अगर आपने पाथ लेंथ एल्गोरिथम ठीक से नोट किया है तो डिस्टेंस ऑफ ट्रैव प्लस वन किया था हम लोगों ने. अगर आपको याद होगा, कल का पाथ लेंथ एल्गोरिथम का चेक करना, बीएफएस के पाथ लेंथ एल्गोरिथम का चेक करना, और वहां पर इट वाज डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रैव प्लस वन. प्लस वन क्यों? क्योंकि वन एज इज एडेड. वहां पर वेट नहीं था, इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस वन कर रहे थे. सिर्फ प्लस वन कर रहे थे, सेइंग दैट वन मोर एज इज एडेड. दैट्स इट. द सेम कंसेप्ट ओवर हियर. अब हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ a distance of the current node, distance of trav plus the distance or the weight of the connecting edge, a weight of the connecting edge that we are adding. That's it. Algorithm is over. Don't worry, पढ़ के समझ में नहीं आता, मुझको पता है. We will do the paperwork और बाद में कोड में कॉपी पेस्ट करना ही है. That we will do it. So I'm saying that mark distance of each one as infinity. Mark distance of each one as infinity. Mark distance of each one as infinity and the distance of starting one as a 0. I done that. What is next job to be done? What is next job to be done? Pick up the vertex with the minimum distance. I picked up a vertex with the minimum distance और उसके जितने सारे नेबर्स हैं, अब जरा ठीक से नोट करना. आई एम सेइंग दैट अब थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है. इट इज 0 प्लस 4. एक करंट का डिस्टेंस 0 प्लस 4 is 4. 4 is less than infinity. You update that. And again you continue further. I'm saying 0 plus 8, a 0 plus 8 is less than, a 0 plus 8 is equal to 8. 8 is less than infinity. You update that. You update that and let's story continue further. Let's story continue further. Pick up the vertex with the minimum distance. And again, you start doing the calculation. The 4 plus 8 is 12. A current का distance plus the connecting edge का distance. So 4 plus 8 is equal to 12. 12 is less than infinity. You update this. And you repeat 4 plus 11, 15. 15 is not less than 8. A 15 is not less than 8. So you just want to skip that. Yes, this is done. हम लोगों ने क्या किया? 4 plus 8 is equal to 12. 12 is less than infinity. So we have updated that. We updated that. So we are saying that yes, this is updated. It's connected. That is done. You continue further. Again, you pick up the vertex with the minimum distance. I picked up the vertex with the minimum distance and you again repeat the story. It is 8 plus 1 is 9. 8 plus 1 is 9. So 9 is less than infinity. 9 is less than infinity. Please update that. You repeat the process. 8 plus 7 is 15. 15 is less than infinity. 15 is less than infinity. You update that as well. You update that as well. Okay, this is done. You continue further. Again, the pick up the vertex with the minimum distance. You pick up the vertex with the minimum distance. I found that vertex 6 is to be counted. You repeat 9 plus 2 is 11. 11 is less than infinity. 11 is less than infinity. And then you want to update that. You continue further. Again, you have got next. Next is what? 9. A 9 plus 6 is 15. ये already 15 है, तो वापस से अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है. This is done. Pick up the vertex with the minimum distance. Which is the next vertex to be picked up with the minimum distance? I find that I guess this is a vertex with the minimum distance. It is up. What is next job? Next job, I'm saying 11 plus 10 is 21. 21 is less than infinity. 21 is less than infinity. You update. You continue further. Again, 11 plus 14. 11 plus 14 is 25. 25 is less than infinity. 25 is less than infinity.
you update. Okay, that is good. 11 plus 4, 11 plus 4 is 15. 15 is not less than 12, so don't update. It is not less than 12, don't update. Okay, that is there. Pick up the next vertex with the minimum key. Which is the next vertex with the minimum key? A next vertex with the minimum key is, let's say, 2. It is 2, and you start doing the calculation once again. A 12 plus 2, 12 plus 2 is 14. 14 is less than 15. 14 is less than 15. Go ahead, you say 14. I'm saying that this is the shortest path as compared to this path. As compared to this path. And you repeat the process. Again, you have got next. I'm saying 12 plus 7. A 12 plus 7 is 19. 19 is less than 25. 19 is less than 25. So you please update it to the 19. You update it to the 19. And now you're saying that it is better to go from here to here instead of going from here to here. Okay, all right. You continue further. You continue further. You say that now it's the 19 plus nahi, रुको जरा, pick up the next vertex. Pick up the next vertex with the minimum key. I guess minimum key का vertex है 8. Minimum key का vertex है 8. But उसके सारे neighbors they are already added in SPT. उसको वापस से reconsider करने की कोई जरूरत नहीं है. You continue. You pick up the next vertex with the minimum key. With the next vertex with the minimum key is 3 that I have picked up, like a 19. And अब एक ही बचा है, and you simply do the addition. 19 plus 9 comes out to be 28. 28 is not less than 21. Is not less than 21. So forget not to update it. And finally you pick up the next one with the minimum distance. That's it. It is over. उसके सारे neighbors already visited है. तो सर अभी ये जो numbers दिख रहे हैं, ये numbers क्या है? अरे ये numbers क्या है? These are the shortest distance of those vertices from 0. मैं ये कह रहा हूं कि 4 का 0 से जो डिस्टेंस है इट इज 21 डिस्टेंस. 21 डिस्टेंस एंड इट इज अलोंग दिस पाथ. अगर आप लोग इस रास्ते से जाते हो, ये शॉर्टेस्ट पाथ है 0 to 4 का विद द डिस्टेंस इज इक्वल टू 21. अगर आपको टोटल याद नहीं आ रहा है, आप लोग करके देखना. इट इज 8 plus 1 plus 2 plus 10. I hope it is 21. I hope you are confirmed that. Okay. The distance from 0 to 8, the minimal distance from 0 to 8 is 14. It is 14. So how you find that? You go from here to here, here to here, here to here. This is the shortest way to go from 0 to 8. 0 to 8. तो अभी आपके पास प्लान रेडी है. अब let the salesman decide कि उसको कहां पर जाना है. And then whichever he select, he said that I want to go to this. So what is the shortest route? The shortest route is that go from here to here to here, and that will take 19 kilometers kind of stuff. That's it. This is what the shortest path algorithm. I hope the algorithm was clear. I'll just quickly go back, repeat it once again. If you have any questions, please go ahead and ask it. क्योंकि कोड कॉपी पेस्ट है, वो आपको देख के समझ में आ ही रहा है. सो कोड हम लोग कॉपी पेस्ट करने ही वाले हैं. यू जस्ट फोकस दैट कि आपको एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट मी नो. Start by making distances of each one as infinity and distance of this as 0. Okay, we have done that. You begin with. What do you begin with? कहां से शुरू करना है? Let us start from picking the minimum one. ये मैंने मिनिमम वाला पिकअप कर लिया, और अब उसके जितने सारे नेबर्स है उनके डिस्टेंसेस अपडेट करने हैं. ए डिस्टेंस ऑफ द करंट वन, बेटर यू डू द पेपर वर्क विद मी. डिस्टेंस ऑफ करंट वन इज 0. 0 plus 4 is 4. 4 is less than infinity. 4 is less than infinity. Repeat. 0 plus 8 is 8. 8 is 8 is less than infinity. Go ahead, you make it as 8. Good. Next, pick up the vertex with the minimum distance. Pick up the vertex with the minimum distance. Thank you. The vertex with the minimum distance is 1. And you follow all its neighbors. इसका पहला neighbor है, ए 0 को छोड़ दो, वो already SPT में added है. So 4 plus 8 is equal to 12. 12 is less than infinity. So go ahead, you update that it is 12. You continue further. We have 4 plus 11 is 15. 15
is not less than 8, sorry 15 is not less than 8, तो इसको update मत करना. You continue further, pick up the next vertex with the minimum distance. Next vertex with the minimum distance is 7. It is with the 7 and you continue further. Now उसके सारे neighbors. पहला neighbor 8 plus 1 is 9. 9 is less than infinity. You update that. Continue further. Again you are saying that 8 plus 7 is 15. 15 is less than infinity. You update that. That is good. Or by the way, बचे हुए neighbors तो already added है. You pick up the next vertex. You pick up the next vertex with the minimum distance. Which is the next vertex with the minimum distance? Next vertex with the minimum distance is 6. You picked up that and then you follow that. It is 9 plus 2 is 11. 11 is less than infinity. Oh, 11 is less than infinity. So you update that. Good. Next one. 9 plus 6 is 15. ये already 15 है. ये already 15 है. तो update करने की कोई जरूरत नहीं है. You continue further. Pick up the next vertex with the minimum distance. Next vertex with the minimum distance is 5. Okay, we have picked up that and you start with 11 plus 10 is 21. 11 plus 10 is 21. So 21 is less than infinity. Please update. 11 11 plus 14 is 25. 25 is less than infinity. 25 is less than infinity. Please update. Continue further. 11 plus 4 is 15. But 15 is not less than 12. Not less than 12. Skip that. Okay. You continue further. You pick up the next vertex with the minimum distance. Next vertex with the minimum distance is 2. Picked up. Next. Next. अब उसके neighbors. Start with 12 plus 7 is 19. 19 is less than 25. 25. Go ahead. You update that. All right. You continue further. 12 12 plus 2 is 14. A 12 plus 2 is 14. 14 is less than 15. Or 14 is less than 15. Go ahead. You update that. And when you're updating, don't forget to update the parent as well. This is done. You go ahead with the next. Next, pick up the vertex with the minimum distance. Who is the next vertex with the minimum distance? Yes, it is 8. But good thing is that 8 ke sare neighbors, they are already visited. Pick up the next vertex with the minimum distance. I found it is 3. As 3 is in place. And once 3 is in place, what is the next job? अब उसके जितने सारे नेबर्स है, that neighbors I need to consider. एक ही तो नेबर बचा हुआ है. It is 19 plus 9 is let's say 28. 28 is not less than 24. A 28 is not less than 24. So that I need to take care. You continue further. And what is next job? Pick up. एक ही vertex बचा हुआ है. You pick up that particular vertex and its all neighbors are already visited. That's it. This is nothing but Dijkstra's shortest path algorithm. Dijkstra's shortest path algorithm, आपको सबके distances दिख रहे हैं and like everything is in front of you. Everything is in front of you, right? So go ahead and implement the algorithm. Implement the algorithm matlab, sorry, copy paste the algorithm, not really implement the algorithm. So I can simply go ahead, not really prim semester. Now I can say that Dijkstra's SPT. SPT is shortest path tree. It is not minimum spanning tree, it is shortest path tree. And let me rename that as well. Dijkstra SPT. All right. And here we go. अब मैं कुछ वेरिएबल को रीनेम करने वाला हूं जस्ट टू गेट द थिंग्स राइट. रीनेम कर रहे हैं, मैं रीनेम कर रहा हूं. ये रीनेम के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है रीफैक्टर, यहाँ पर कह रहे
मेरे को शॉर्टकट की इतनी याद हो गया है कि मेरे को ये याद नहीं रहता। राइट क्लिक, कहीं पर रीनेम इज अवेलेबल है, सोर्स rename, એટલે કે rename alt shift r. So I'm just saying that not keys. Here we are going to deal with the distance. Okay, I'm going to deal with the distance. MST, no, not MST. I'm going to deal with the SPT. Okay, done. I'm just going ahead. This is not Prim's MST. Not Prim's MST. It is Dijkstra's. It is Dijkstra's SPT. Okay, Dijkstra's SPT. You continue further. I don't want keys. Instead of keys, I'm looking for distance. I'm looking for distance. So that is also done. और कुछ बच गया? I need a parent. I need not MST. I need SPT. Okay, that is also in place. You continue further. जहां जहां पर कमेंट में मैंने कीज वर्ड लिखा है, जहां जहां पर मैंने कमेंट में कीज वर्ड लिखा है, I don't even want that keys word. Instead of keys word, I'm looking for a word distance. I'm looking for the word distance. So I just taken care. I have just even updated my comments. This is also done. और जहां जहां पर मैंने MST वर्ड लिखा है, I guess जहां जहां पर मैंने MST वर्ड लिखा है, वहां पर I want to make the word SPT. Okay. So I updated my comments as well. You continue further. Find and replace. It is Control F. It is Control F. हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? अब बचा क्या? सिर्फ फॉर्मूला बच गया है। ये फॉर्मूला क्या है? अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वेट नहीं चेक करना है। What we are saying is that distance of current vertex, a distance of the current vertex, distance of the current vertex plus the weight. A distance of current vertex plus weight. If it is less than the distance of v, then you want to update distance of v is equal to distance of current vertex plus adjacency matrix plus the weight. That is what all we need to do it, and that is what all we have completed. Done. Obviously when time complexity remains same, तो time complexity comments are still valid. अगर आपको सारे distances print करने हैं, let me print all distances over here. If you are interested in printing the distances, let me print all distances over here. So for each vertex v, to vertex count, and I'm saying that distance from the starting vertex. So what is that? So I'm writing that system order printed distance of v from root is equal to is equal to is equal to I can simply get distance of v. ये मुझको सबके distances मिल गए and I'm able to get that over there. So मैं ये कह रहा हूँ हर एक vertex का distance from the vertex 0, जो भी आप लोग select करोगे vertex 0, the distances are in front of you. और ये parent ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है? मेरे को शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री रिटर्न कर रहा है। शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री किसके लिए? कि आपको डिसाइड करना है आपको कौन से वर्टेक्स के ऊपर कौन से वर्टेक्स के ऊपर जाना है और वो कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यूजर एंटर द वर्टेक्स नंबर। ये स्टार्टिंग वर्टेक्स नंबर तो मैं फिलहाल 0 कंसिडर कर ही रहा हूँ। प्लीज नोट दैट स्टार्टिंग वर्टेक्स नंबर वो मैंने हार्ड कोड कर दिया है कि आई जस्ट गोइंग टू वर्क विद द 0 ओनली। बट like enter enter destination vertex, and destination vertex if you're talking about, let's say this is like a destination vertex is equal to sc dot next end. अब मुझको क्या करना है? I want to go from the vertex 0, I want to go from vertex 0 to the destination vertex. अब जब तक destination vertex नहीं आ जाता तब तक I just want to traverse, या फिर उल्टा from the destination vertex I want to reach to the 0 vertex, correct? And that is nothing but my whole path. So how do I go from the destination vertex to that particular vertex? So let us just go ahead. We can think of a v यहाँ पर है. Let me start with
v is equal to destination, a v is equal to destination, और जब तक while while v is not equal to 0, ये हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स हम लोग 0 कह रहे हैं, ये अगर आपको ये भी यूजर से लेना है तो ले सकते हो, एंड देन आई वांट टू गो फ्रॉम v is equal to parent of v, ए v is equal to parent of v। ये वही टेक्निक है जो कल के यूनियन फाइंड के एल्गोरिदम में हम लोगों ने यूज किया था, और कल किसी ने तो मुझको पूछा था, तो मैंने बाद में एट द एंड लेक्चर खत्म होने के बाद में फिर से रिवाइज भी किया था। So V is equal to parent of V, V is equal to parent of V, V is equal to parent of V. So all the time I'm going from this vertex to its parent, its parent, its parent, its parent, और हम लोग these are the edges that we are trying to travel, और जो जो edges हम लोग travel कर रहे हैं, ये जो जो edges हम लोग travel कर रहे हैं, उनके सबके total weight मुझको मिल रहा है, and then I'm saying that this is nothing but a shortest distance, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन से जीरो से लेके उस पर्टिकुलर वर्टेक्स तक, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो से लेके उस पर्टिकुलर वर्टेक्स तक। लेट्स सी, आई कैन जस्ट से कॉपी, I can simply say right click, run as Java application, you can do that। अब यहाँ पर वैसे भी मेरे को सबके shortest distances दिख ही रहे, but just for sake of this I'll pick up one vertex। Let's say I'll pick up the vertex 4, I'll pick up the vertex 4, I'll pick up the vertex 4, and then ये मेरे को बता रहा है vertex 4 का distance है 21, और वो 21 distance का path है, कहाँ से कहाँ पे जाना है, आपको 4 के ऊपर जाना है ना, सो 4 to 5 जाओ, 5 to 6 जाओ, 6 to 7 जाओ, और फिर 7 to 0 जाओ। आई एम सेइंग दैट 4 to 5 जाओ, 5 to 6 जाओ, 6 to 7 जाओ, और 7 to 0 जाओ, एंड दिस विल गिव मी द डिस्टेंस इज इक्वल टू 21। तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बताया, मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस पाथ के ऊपर है वो पाथ भी दिखाया। सो दिस इज समथिंग द वे द एसपीटी कैन बी यूज, दिस इज वेयर द डिक्स्ट्रा कैन बी अप्लाइड। अरे जिंदा हो, are you alive? Okay, good। So I'm saying that it's like a practical application। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑफ अर्लियर वन, इट इज सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑफ अर्लियर वन। तो उसको अलग से कुछ भी डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, इट इज सेम एज अदर वन। लेट्स जस्ट गो अहेड, एंड इफ इट इज क्लियर, if it is clear, we can talk about the next step, and next step is like what are the limitations of Dijkstra। Dijkstra के limitations क्या है? But Dijkstra is good algorithm, no doubt on that, काम भी कर रहा है, वो भी आपको दिख रहा है, but I'm saying that कि this algorithm also has got some limitations। And what are the limitations of Dijkstra? What are the limitations of Dijkstra? The biggest limitation of the Dijkstra is that it cannot work with the negative weight edges। I'm saying that the Dijkstra's biggest problem is that Dijkstra cannot work with the negative weight edges। Oh, that is a typical problem। And if the Dijkstra cannot work with the negative weight edges, then what is the problem? हेलो, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर ऐसे अगर आपके पास कोई ग्राफ है जहां पर आपके एजेस निगेटिव हो सकते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अप्लाई डिक्स्ट्रा देयर। बट आई एम वेरी श्योर अ क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम्स टू माय माइंड, एंड आपके भी दिमाग में आया होगा सर, लेकिन निगेटिव एजेस की जरूरत हमें पड़ेगी कब? बिकॉज अगर हम लोग किसी रोड की बात कर रहे हैं, किसी दो सिटीज के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि दो सिटीज का डिस्टेंस माइनस में आने वाला है। ऐसा कभी होने वाला है क्या कि दीज आर टू सिटीज और टू सिटीज का डिस्टेंस माइनस में आ रहा है? नो। टू सिटीज का डिस्टेंस वैसे भी माइनस में कभी नहीं आता। तो सर ये कैसे होगा? लेट मी राइट इट समवेयर। और मैं आपको डिक्स्ट्रा की लिमिटेशन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके डिक्स्ट्रा की कोई लिमिटेशन ही नहीं है तो बचे हुए एल्गोरिथम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। सो आई एम सेइंग दैट कि हियर वी गो, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में मुझको कुछ चीजें आपको बतानी है। The very first thing that I want to tell you about Dijkstra's algorithm is that it cannot work with negative age weights। अब next question that should come to my mind, but sir where the hell we need the negative age weights? तो let us see some of the example कि जहां पर negative age weights लगते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था ग्राफ के एप्लीकेशन में
कि देयर कैन बी काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन, दो कंपाउंड्स व्हेन दे आर क्लब टुगेदर, दो कंपाउंड्स व्हेन दे आर क्लब टुगेदर, either they can release the energy or they can absorb the energy. Now, if they are releasing the energy, so amount of energy that is released, अगर ये मेरा अगर weight है, listen carefully, amount of energy that is released, अगर ये मेरा weight है, तो अगर energy release हो रही है, तो weight positive है, और अगर energy absorb हो रही है, तो weight negative है. मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि इन विच केस आई नीड टू कंसीडर कि मेरे ग्राफ में निगेटिव वेट्स हो सकते हैं, निगेटिव वेट हो सकते हैं. मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 बताया. प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, द प्रॉब्लम नंबर 2, सपोज दैट वी आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सो वेयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. यस, अगर आप लोग रेजिस्टेंस एज अ वेट कंसीडर कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. बट व्हाट अबाउट द करंट? लेट्स से दैट मुझको दो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट आई वांट टू कंसीडर इट एज अ वेट. तो सर करंट निगेटिव होता है? करंट निगेटिव नहीं होता, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. सो समटाइम्स करंट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, और समटाइम्स करंट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. एंड इफ द करंट इज वन डायरेक्शन, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, करंट इन अदर डायरेक्शन, यू हैव टू कंसिडर इट निगेटिव. तो सर करंट उल्टा सुल्टा जाने से क्या फर्क पड़ता है? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं, आई गेस दोस पीपल कैन अप्रिशिएट, जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो आपका डीसी मोटर का रोटेशन चेंज हो जाता है. इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन और काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो दीज आर द टाइम्स कि जहां पर आपका करंट मैटर करता है. सिर्फ करंट का व्हाट इज दैट मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, करंट का डायरेक्शन मैटर करता है. सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, आपका मोटर या तो क्लॉकवाइज जाने वाला है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है. जहां तक मुझको पता है, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में सबको पढ़ाया जाता है. एम आई करेक्ट? तो आई एम सेइंग दैट कि अगर आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन की बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो द प्लेस वेर यू आर लुकिंग फॉर, वेर यू आर लुकिंग फॉर absolutely, there also you are going to look for the negative age weights. तो I'm saying that तो ऐसे सिनारियो में Dijkstra may not help you. Dijkstra may not help you, so you please understand that. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ. What is the example? Example, I'm saying that is a chemical reaction. Chemical reaction where you talk about like energies or probably electronic circuit where you talk about the current, direction of current. And if this is a problem, what is solution for this? Dijkstra has got limitation. Then ऐसे वक्त में I'm saying that the solution, the shortest path, another shortest path algorithm is Bellman-Ford. Another shortest path algorithm is kind of a Bellman-Ford. So Bellman-Ford is another shortest path algorithm. It is again a shortest path algorithm, but good thing is that it can work with the negative age weights. तो सर हम लोग बेलमन फोर्ड पढ़ेंगे क्या? हाँ, वही तो पढ़ने जा रहा है. तो वही मैं पहले आपको डिक्स्ट्रा की लिमिटेशन बता रहा हूँ. अगर आपको डिक्स्ट्रा की लिमिटेशन समझ में नहीं आते, तो फिर मैं बेलमन फोर्ड क्यों पढ़ाऊंगा और आप लोग क्यों ध्यान दोगे? ये पहली चीज. अब लिमिटेशन नहीं है, बट द सेकेंड वन मुझ अगर मैंने अभी डिक्स्ट्रा अप्लाई किया, ये डिक्स्ट्रा अप्लाई करके अगर मैंने सारे वर्टाइसेस के डिस्टेंस निकाले, एक वर्टेक्स से सारे वर्टाइसेस के, लेकिन मुझको एक वर्टेक्स से नहीं निकालने, मुझको हर एक वर्टेक्स से एवरी अदर वर्टेक्स से डिस्टेंसेस निकालने. व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू फाइंड आउट हर एक वर्टेक्स से मुझको एवरी अदर वर्टेक्स से डिस्टेंसेस निकालने. सो यूजिंग डिक्स्ट्रा फॉर finding shortest path to all vertices from each vertex. अभी हमने each vertex नहीं किया है गाइस, हम लोगों ने अभी वन वर्टेक्स किया है. और अभी हम लोगों ने कौन से वर्टेक्स का किया है? अभी हम लोगों ने सिर्फ वर्टेक्स 0 का किया है. या आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अभी हम लोगों ने जो किया है,
हमने सिर्फ वर्टेक्स 0 का किया है। आई होप यू आर एबल टू सी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझको वर्टेक्स 0 का नहीं करना है, मैं कह रहा हूं आई वांट टू अप्लाई इट फॉर अ लूप, आई वांट टू अप्लाई इट फॉर द लूप saying that root is equal to 0, root is less than vertex count, a root is less than vertex count, and then root plus plus, root plus plus, and then I'm saying that I want to apply it extra. Please make a note. I want to apply it extra to all the vertices. I want to apply it extra to all the vertices. Is it possible? Yes, absolutely, it is possible. Absolutely, it is possible. तो ये हम लोग definitely कर सकते हैं. But if you are doing that definitely, what will be the time complexity? What would be the time complexity? अब जो आपने ओरिजिनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो डिक्स्ट्रा का कैलकुलेट किया है, दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनटू वी, आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ये जो भी आपने ओरिजिनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया है, दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस वी, आर यू देयर? जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस वी, दैट इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो। सो इफ आई एम सेइंग दैट, अगेन इट डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, कि आप लोग एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हो या एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हो। आप लोग मिनिमम ढूंढने के लिए, मिनिमम ढूंढने के लिए आप लोग मिनिमम ढूंढने के लिए आप लोग प्रायोरिटी की यूज कर रहे हो या नॉर्मल एरे यूज कर रहे हो, इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होने वाली है, ये आपको अच्छे से पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम गोइंग अहेड एंड आई एम सेइंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से दैट, तो फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वन वे इट इज लेट्स से v log v। अगर वन वे इट इज v log v, देन आई एम सिंपली सेइंग दैट इट इज v into v log v। इन दैट केस v into v log v। अगर आप लोग e log v भी कंसिडर करते हो, e log v वैसे एक्चुअल एक्चुअल क्या आता है? e plus v log v आता है। आई गेस यू आर अवेयर ऑफ इट। अगर मैं पूरा लिखूं तो आई शुड राइट इट समथिंग लाइक दिस, it is e plus v log v, right? E plus v log v. So I'm saying that e plus v log v into v at that time complexity, at that time complexity, I'm not saying it is bad, it is quite good, it is quite acceptable, it is quite acceptable. But problem abhi bhi wahi hai, it cannot work with the negative weight edges, it cannot work with the negative weight edges। इसको ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं all pair shortest path। इट इज नॉट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज नॉट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मतलब किसी एक वर्टेक्स से हम लोग सबके कर रहे हैं, मुझको किसी एक वर्टेक्स से सबके नहीं करने हैं, मुझको हर एक वर्टेक्स से एवरी अदर वर्टेक्स करना है। जब लोग हर एक वर्टेक्स से एवरी अदर वर्टेक्स करते हो, दिस पार्ट इज रेफर्ड एज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर shortest path। And who is going to handle this? I'm saying that uska solution for the negative edge, solution is not for the time complexity, so time complexity of Dijkstra is better in fact। So solution for again negative weights for this is nothing but Warshall flight algorithm। So Warshall flight algorithm किसके लिए होता है? Warshall flight algorithm किसके लिए होता है? It is a all pair shortest path algorithm, all pair shortest path algorithm। And now let me tell you the challenge. The challenge over here is that whether you go for Bellman-Ford algorithm, whether you go for the Warshall-Floyd algorithm, whether you go for the Bellman-Ford algorithm, whether you go for the Warshall-Floyd algorithm, the challenge over here is that ये जो दोनों algorithm है, both the algorithms are coming in a category we call it as a dynamic programming category। What I'm trying to tell you, they are falling in a category, a dynamic programming category। Which one I'm talking about? I'm talking about the Bellman-Ford and I'm talking about the Warshall-Floyd। ये दोनों के दोनों algorithm, they are not a greedy algorithm। अभी मैंने आपको जो तीन algorithm दिखाए थे, ये पहला मैंने आपको क्रिस्कल बताया था, MST वाला जो कल शाम के लेक्चर में हुआ था, प्रीम्स एल्गोरिदम जो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा था, और बाद में डिक्शनरी एल्गोरिदम। इन तीनों में हर इटरेशन में वी आर पिकिंग द मिनिमम वन, हर इटरेशन में वी आर पिकिंग द मिनिमम वन, मिनिमम एज या मिनिमम वर्टेक्स, जो भी आपको कहना है वो आप लोग कहो। जब हम लोग ऐसे पिकअप कर रहे थे, व्हाट इट वाज गिविंग मी, अरे व्हाट इट वाज गिविंग मी, इट वाज गिविंग मी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट इट इज अ ग्रीडी अप्रोच। ये कल शाम को हम लोगों ने देखा था ना, व्हाट इज ग्रीडी अप्रोच? What is a greedy approach? In each iteration, you find the optimal choice,
and then with the intent of finding a global optimum. तो ये करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे और ये हमको आउटपुट दे भी रहा था, बट कौन से, इन तीन एल्गोरिदम में। अनफॉर्चुनेटली ये जो अगले एल्गोरिदम है बेलमन फोर्ड और वर्चुअल फ्लॉइड, they are not falling in the category of the greedy algorithm, they are falling in a category of a dynamic programming. And if they are falling in the category of dynamic programming, the next challenge is that, so how dynamic programming algorithm goes. Now to understand the dynamic programming algorithm, what do you need to know? You need to first know the recursion. You first know the recursion, and I'm not going to invest my time क्योंकि ये पूरा recursion मैंने start to end आपको explain किया था in like very first or second lecture itself. आई होप यू रिकॉल दैट। हम लोगों ने पूरा का पूरा रिकर्शन पढ़ा हुआ है। रिकर्शन के स्लाइड्स, पिछले स्लाइड्स आपके पास होंगे। जिन लोगों का बीच में से मेमोरी लॉस हो गया होगा, सर वो क्या था, वो बीच में से हमारा मेमोरी लॉस हो गया, हमारा कहीं पर तो सर टकराया, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा, प्लीज गो बैक, स्लाइड्स ओपन करो इन अ ब्रेक एंड गो थ्रू दैट वंस अगेन। सो रिकर्शन में हम लोगों ने ये सारे फंडे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम वंस अगेन। हम लोगों ने रिकर्शन विद क्विकसॉर्ट भी पढ़ा है, रिकर्शन विद द मर्ज सॉर्ट भी पढ़ा है, और हर जगह पे जहां तक मुझको याद है मैं आपको बता रहा था हाउ वी कैन ड्रॉ। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? यू रिकॉल दिस डायग्राम? आई गेस आई एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम मैंने दो बार आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इसके लिए भी और उसके लिए भी, मर्ज सॉर्ट के लिए और क्विक सॉर्ट के लिए। दिस इज डायग्राम, यू कॉल इट रिकर्शन ट्री। रिकर्शन ट्री, बाय द वे ये ट्री थोड़ा सा अलग है, ये ट्री थोड़ा सा अलग है। इनका जो रिकर्शन सॉर्ट है, इन्होंने लास्ट एलिमेंट एज ए पिवट लिया था। ये मैंने जो आपको रिकर्शन सॉर्ट, मैंने जो आपको क्विक सॉर्ट पढ़ाया था, वहां पर हमने फर्स्ट एलिमेंट एज ए पिवट लिया था। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अगेन यू फाइंड दैट द डायग्राम इज क्वाइट सिमिलर। बाय द वे ट्री कब कब बनता है? ये ट्री यूजुअली तब बनता है जब आपके रिकर्सिव कॉल आप लोग देते हो। ए रिकर्सिव, एक सिंगल रिकर्सिव कॉल नहीं, जहां पर मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स आर इन्वॉल्व, तब जाके ट्री क्रिएट होता है। आपने देखा मर्ज सॉर्ट में ऐसा ट्री बना था, क्विक सॉर्ट में भी ये ट्री बना था। तो सभी हमको क्विक सॉर्ट पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्विक सॉर्ट भी नहीं पढ़ना है, मर्ज सॉर्ट भी नहीं पढ़ रहा है। सर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाना है ना, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाओ, रिकर्शन की क्यों पीछे पड़ गए हो? द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट द रिकर्शन, द डायनेमिक प्रोग्रामिंग is, you read this line, dynamic programming is optimization over recursion. You please get the point. So जिसको recursion ही नहीं आता, तो उसको मैं dynamic programming कैसे पढ़ाऊं? It is not really possible, and that is the reason I was saying that कि we will take a break. अगर आपका मेमोरी लॉस हो चुका है, जो कुछ भी हमने रिकर्शन में पढ़ा था, गो बैक वंस एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। और उसमें से द प्रोग्राम दैट विल बी कंसिडरिंग इज नथिंग बट द फिबोनाची सीरीज। द प्रोग्राम दैट विल बी कंसिडरिंग इज नथिंग बट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी शायद मैंने उस स्लाइड के ऊपर लिखा था। इट वाज लाइक प्रीटी सिंपल, लाइक nth टर्म इज इक्वल टू n-1 टर्म प्लस n+1 टर्म, और जो लास्ट के जो दो टर्म्स है दैट वी वर काउंटिंग एज 1 1। आई होप यू रिकॉल दैट। तो ये वाला हम लोग यहां से शुरू करेंगे। वी विल सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। लिमिटेशंस ऑफ रिकर्शन, एट सर्टेन प्रॉब्लम में योर रिकर्शन सक्स, एट सर्टेन प्रॉब्लम योर रिकर्शन परफॉर्म रियली पुअर, recursion perform really poor. So we will see those limitations. We will find out how recursion can be optimized using a technique called the memoization. ये टेक्निक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज वन मोर स्टेप ऑन द टॉप ऑफ मेमोइजेशन। सो पहले हम लोग रिकर्शन के लिमिटेशंस देखेंगे। one solution to that limitation is memoization. So we'll talk about memoization, and once we understood memoization, we will go for dynamic programming, and then we see that, oh, dynamic programming say how the same problem can be solved and what is the relationship between recursion, memoization, dynamic programming. And once you got the basics of dynamic programming, we can go onto the Bellman fold. This is something the plan is. So please go ahead. I'm just taking a break. Meanwhile, you have any questions, feel free to post. So let us get started once again.
And as I was saying that it was all about recursion and the foundations of recursion, recursion tree, how it is working, functionality records they are created. Every time we need to worry about like a recursive call, base condition. These are like all basics of recursion, which which we have learned even into the data structure module once again. So now I, with the assumption that you people are okay with the recursion, and you recall, if you have forgotten, let me just remind you. I'm very sure you fall in love with the recursion when we were learning post order and like in order and pre-order non-recursive. I hope you recall that. So with the assumption that you people know the recursion and you find that okay, recursion is doing good, now it is time to understand that yes, there are times where recursion is having trouble, and what is the time or what are the areas where recursion doesn't perform well or perform poor. Have a look at this. You found that, suppose that I want to calculate the Fibonacci of 6. A Fibonacci of Fibonacci is the sixth term of the Fibonacci. Sixth term of Fibonacci is basically dependent on fifth term of Fibonacci and fourth term of Fibonacci. But the fifth term of Fibonacci again depends on a fourth term of Fibonacci and third term of Fibonacci. And fourth term of Fibonacci again depends on Fibonacci 3, Fibonacci 2, and third term is again dependent on Fibonacci 2, Fibonacci 1. The point that I want to make it over here is that at certain, let's say you find that certain values are getting calculated again and again. Certain values are getting calculated again and again. Like for example, एक Fibonacci of 6 calculate करने के लिए your Fibonacci 3 is calculated over here. Fibonacci 3 is calculated over here. Fibonacci 3 is calculated over here. Have you noted that the same calculation we are doing 3 times सिर्फ Fibonacci 6 calculate करने के लिए? Or for that sake, you see the other one, the Fibonacci 4 itself is getting calculated twice. तो एक ही प्रॉब्लम हम लोग बार बार जब सॉल्व करते हैं, दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज अ टेक्निकल वर्ड called as a overlapping sub problem. It's usually referred as a overlapping sub problem. Just a minute. Hello, am I audible? Yeah. Okay. Okay. Let's continue further. So what I was trying to tell you is that so this problem is referred as overlapping sub problem. Hey, what is the overlapping sub problem? The overlapping sub problem where a overlapping sub problem where this one problem you are trying to solve again and again, again and again, and again and again, and that is making your recursion slower. So how much slower? If you want to really understand how much slower, I would say that we will see one problem. हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, वही फिबोनाची वाला ही प्रॉब्लम करते हैं वेर यू अंडरस्टैंड इट. आपको याद होगा जब मैंने आपको ग्रीडी पढ़ाया था, तो वी टॉक अबाउट लाइक वन सिंपल एग्जांपल, एंड दैट सिंपल एग्जांपल क्या था, हमारा ग्रीडी वाला एग्जांपल क्या था, कॉइन्स, हाउ मेनी मिनिमम कॉइन्स दैट वी कैन गेट इट. तो हम लोगों ने वो वाला एग्जांपल देखा था. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए आई वांट टू गिव इट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ द फिबोनाची सीरीज, जो सबको आता है. तो कम से कम हम लोग पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि रिकर्शन के ड्रॉबैक्स क्या है, उसको ओवरकम कैसे करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसको कैसे हैंडल करता है. एंड वंस वी अंडरस्टूड दैट, then we will see that how we can apply that particular logic to the Bellman Ford, or for that sake Warshall Floyd, or like even advanced algorithms. So I'm just going ahead and I'm creating a brand new Java project. That Java project where we will be doing the Fibonacci series. So what I want to do it, I want to do it Fibonacci series. Okay, it is there. You click on next, you click on finish. All right.
So this is in place, and then I want to create a new package. Okay, the package Sunbeam, and I want to see inside this another class that I want to create. Let's say Fibonacci main. All right, and inside this I want to calculate the nth term of the Fibonacci series. You want to calculate the nth term of the Fibonacci series. We can have the, let's say, like a Fibonacci, and I can say, let's say I can say like a recursive Fibonacci. Like a recursive Fibonacci, I want to find the nth term. I'm very sure the logic is pretty simple. Everyone knows it very well. All I need to do is that I need to call the Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2, n minus 2, and then you go ahead. If n is equal to 1 or n is equal to 2, if first two terms, there's a terminating condition, base condition, they are 1 1. I hope this was like a super easy one जो आपको यहाँ पर दिख रहा है. And ultimately we can calculate, we can cross check whether it is working, not working, whatever. So let me just check it quickly. Let me call, let's say, result is equal to recursive Fibonacci, a recursive Fibonacci, and let's say that I want to calculate, let's say, 10th term. So I can say that this like a Fibonacci of 10th term is equal to result. You can check whether it is giving me the correct result. आप लोग calculate करके देख सकते हो. And I'm very sure starting with 1, the 10th term is equal to 55. Is this correct? स्टार्टिंग विथ वन आप लोग क्विकली कैलकुलेट करके देख सकते हो इवन ऑन पेपर. सो वन वन पहले दो टर्म्स है 1 1, नेक्स्ट टर्म विल बी 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 3, नेक्स्ट टर्म विल बी 5, नेक्स्ट टर्म विल बी 8, नेक्स्ट टर्म विल बी लाइक 13. 13 plus 8 is, let's say, 21. 21 plus what is that, 13 comes out to be, you can do the calculation and check it whether it is 55. So look like the result comes out to be correct. By the way, how many recursive calls are made? How many recursive calls are made? Now wait, मैं एक काम करता हूँ. I'll keep one counter there. I will keep one counter there. Private, static, integer. Let's say this is a kind of recursive counter that I want to manage. The recursive counter that I'm trying to manage, let me just make it count is equal to 0. Count is equal to 0, or on every recursive count, every recursive call, I'm just incrementing this. मुझको ये पता चल जाए कि how many recursive calls are done. अब आपको पता है जितने ज्यादा कॉल होंगे उतना फंक्शन स्लोर होगा, क्योंकि उतने ज्यादा बार फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टैक के ऊपर क्रिएट किए जाएंगे. आई होप यू एग्री विद दिस. उतने ज्यादा फंक्शन डिवीजन रिकॉर्ड स्टैक के ऊपर क्रिएट किए जाएंगे. तो मैं यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि फिबोनाची रिजल्ट ये मेरे को मिल रहा है. आई एम सेइंग दैट with with number of function calls, with with how many function calls, count function calls. If these many function calls are done, if these many function calls are done, and you will be surprised to know, अगर मैं 6 की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं 6 की कोशिश कर रहा हूं, so for 6 it is Fibonacci of 6. So ये जो आपको रिजल्ट आ रहा है, for 6 number of recursive calls are 15. And if you are not very sure, go back to the diagram and you check it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. I hope you agree that total 15 recursive calls are made. That total 15 recursive calls are made just for calculating Fibonacci of 6. I'm saying that why don't you go ahead and you see it for 10. If for 10, if for 10, you take a look at this, the count is X growing like anything. Now it is saying that it is 109 calls. And if you're still not appreciating, go ahead, make the call for 20. And you make it for 20 and you realize that, number which was like in the range of 100, now it has gone 13,529. And if you're still not appreciating, please go ahead, make it probably the call of 30, and you see how heavily it is growing, how heavily it is growing. And if you just continue this for some more time, there are quite good chances 40 or 50, it will literally hang your system. It will literally hang your system, so that because there's so many different function calls that you're doing. I hope you see that
Just calculating a Fibonacci of 40, how many times recursive call is getting done and how slow it is getting done. Have you visualized the problem? Have you visualized the problem? और वापस से ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सी, अगर अलग अलग डेटा करना तो बात अलग है। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि एक ही वैल्यू हम लोग बहुत बार कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लीज अप्रिशिएट दैट आल्सो, कि हम लोग एक ही वैल्यू हम लोग बहुत बार कैलकुलेट कर रहे हैं। द सेम वैल्यू इज गेटिंग कैलकुलेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओ, same value is calculated again and again and again. If the same value is getting calculated again and again, now there is bound to be a problem. Okay, I understand that. तो सर, तो कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता बिल्कुल है। तो मैं कह रहा हूं कि लेट अस थिंक ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इट। लेट अस थिंक ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इट। एंड माय लॉजिक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मैं लॉजिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक काम करता हूं, ये जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को मैं कहीं पर तो स्टोर करके रखता हूं। प्लीज नोट, जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मैं कहीं पर तो स्टोर करके रखता हूं। सो इफ द रिजल्ट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल, जब पहली बार फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा, जहां कहीं पर भी जब पहली बार कैलकुलेट हो जाएगा, आई विल स्टोर दैट रिजल्ट। आई विल स्टोर दैट रिजल्ट सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर फिबोनाची ऑफ 3 आया तो मैं डायरेक्टली वहीं से रिजल्ट पिकअप करूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग द अंडरलाइंग कैलकुलेशन वंस अगेन। और जब अगली बार वापस से फिबोनाची ऑफ 3 आएगा तो मैं डायरेक्टली वहीं से रिजल्ट पिकअप करूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन वंस अगेन। तो सर, इससे आपको लगता है स्पीड बढ़ेगा? वो हम लोग करके देख सकते हैं, बट मुझको क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू स्टोर द फिबोनाची टर्म ऑफ ईच वन एज एंड व्हेन इट गेट कैलकुलेटेड। तो आप लोग ज्यादा सोचना मत, आउटपुट कोड में लिखने वाला हूं, यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड गो विद द थॉट प्रोसेस। सी, अल्टीमेटली ग्राफ के एल्गोरिदम तो बन ही जाएंगे, लेकिन व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? द डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज समथिंग, ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आने वाला है। जो टिपिकली जो बहुत अच्छे कंपनीज आएंगे, मैं अच्छे कंपनी से बोल रहा हूं, जो बहुत अच्छे कंपनीज आएंगे, जिन कंपनी का लैब एग्जाम होगा और जहां पर वो डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम करने के लिए बोलेंगे, यू टेक इट ग्रांटेड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स दे आर कॉमनली आस्क। सो जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी उतना आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई एम टॉकिंग लैब एग्जाम, नॉट इवन इंटरव्यू। इंटरव्यू अगला वाला राउंड है। जो कंपनी के टिपिकल कोडिंग राउंड के जो क्वेश्चन होंगे, वहां पर अच्छे अच्छे कंपनीज दे डू आस्क द डीपी प्रॉब्लम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझने के लिए जो अकल चाहिए वो हम लोग गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस गो स्लो एंड स्टडी। तो मैं कह रहा हूं कि लेट मी राइट द फंक्शन वेयर आई वांट टू मेमोराइज द रिजल्ट ऑफ ईच कॉल। आई वांट टू मेमोराइज रिजल्ट ऑफ ईच कॉल। तो सर, हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज रिजल्ट ऑफ ईच कॉल? मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके साथ में एक एरे क्रिएट करूं और वहां पर मैं सारे टर्म स्टोर करूं, मैं सारे टर्म स्टोर कर दूं, एंड आई कैन चेक इट। इफ, हैव अ लुक एट दिस, अगर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये जो भी मेरे को दिख रहा है, आई कैन ऑलवेज असाइन इट टर्म्स ऑफ n। ए टर्म्स ऑफ n, आई एम calculating it, I'm assigning one value there and one value there, and then I'm returning it. But at the same time, what I'm saying is that if terms of n, a terms of n is already calculated, it is not equal to zero. If it is not equal to zero, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। If it is already calculated, do not calculate it once again, just return from there. If it is already calculated, do not calculate it once again, just return from there. And other times, at the other times, what I want to do, I want to calculate these terms. At the other times, I want to calculate these terms and whatever is the result. So मेरे को nth term, ये मेरा जो nth term है, वो nth term मैं calculate कर रहा हूँ। ये जो nth term है, मैं यहाँ पर calculate कर रहा हूँ, और calculate करने के बाद में वो nth term मैं return कर रहा हूँ। So what I'm doing is that जो कुछ भी मैंने रिकर्सिव कॉल दिए हैं, पे अटेंशन, जो भी रिकर्सिव कॉल मैंने दिया है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसको मैं कहीं ना कहीं पर तो स्टोर कर रहा हूँ, और स्टोर करने के बाद में उसको रिटर्न कर रहा हूँ। और ये स्टोर किया वैल्यू मैं कहां पर यूज कर रहा हूँ? एवरी टाइम आई एम गिविंग कॉल टू द मेमोराइज फिबोनाची, व्हाट आई एम डूइंग, पहले मैं चेक कर रहा हूँ, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स if it is already calculated, if it is already calculated, why the hell you are calculating once again? No, I do not want to calculate once again. If it is already calculated, just return that value. So these are some minor changes that I have done in this. The minor changes I have done into this.
And if the minor changes are done, let me write one quickly wrapper function. Let me write one quickly wrapper function for this, जिसके अंदर मैं ये array allocate करूंगा, ए terms का array, मुझको terms का जो मुझको store करने हैं terms, उसका मैं array allocate कर रहा हूं. So with cost of, please make a note, with the cost of extra elements, with the extra memory, हम लोग टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं. So initially ये आपको पता है by default all are zero, by default all are zero. Let me make a call to the mem Fibonacci with nth term and the terms जहां पर array सेव करना है, and I'm just returning this. तो सर आपका क्या कहना है, इससे फर्क कितना पड़ता है, इससे कितना फर्क पड़ता है? आपका जो काउंटर है उसमें आपको पता चल जाएगा. लेट मी रीसेट द काउंटर वंस अगेन, let me reset the counter once again, and then you can compare. Even for the array of 6, have a look at this. For the sixth term you want to calculate the Fibonacci series. 6 का अगर आपको Fibonacci कैलकुलेट करना है, इससे पहले वाले से कितना होता है और दूसरे वाले से कितना होता है आप लोग चेक कर सकते हो. रन एज, इवन दो द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम, यहां पर यू नीड अ 15 कॉल्स, ओवर हियर यू नीड ओनली 9 कॉल्स. And if you do not appreciate this, let us go ahead, you make it 10, 10, I'm like 10th term calculate कर रहा हूं, 10th term is 55, you know it well, and I'm saying that this is taking 109 calls, this is taking only 17 calls. And if you're still not appreciating it, why don't you try it for 20? Why don't you try it for 20? Result is same, but you see the drastic change now, where you find that 13,000 calls in a normal recursion, and this one has got only 37 calls. I hope you understand optimization का power क्या है. कैसे लोग हो यार? मैं आपको बता रहा हूँ, I get a goosebump when I was telling you. So you find that, you know what your programming logic can do, what your programming logic can do. Obviously you like take it one more step ahead, and you see now the difference is like, you know, tremendous difference, the tremendous difference. Please note, the result that you are getting is still same, result is still same, but you find that it is there only at the cost of one extra array, only at the cost of one extra array. Obviously कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये दुनिया का दस्तूर है, you need to accept that. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये दुनिया का दस्तूर है. You cannot say that so मुझको टाइम भी बचाना है, मेरे को स्पेस भी बचाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. So कुछ ना कुछ तो you have to put it at stake. So हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी इन्वेस्ट की है और हम लोगों ने हमारा बहुत सारा टाइम बचाया है, and that is something I am able to see that, and this is really fantastic. By the way, ये जो आप लोगों ने किया, ये आपने क्या किया, हर एक रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट मैंने सेव किया, और जहां जहां पर सेव्ड रिजल्ट था वहां वहां पर उसको यूटिलाइज किया. और ये मेनली कब काम आता है, ये वाला अप्रोच कब काम आता है, वेन एवर देर इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम. ये कब काम आता है, ये तब काम आता है वेन एवर देर इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम हमको बार बार सॉल्व करना पड़ रहा है. अगेन हर एक रिकर्शन में इसको ट्राई मत करना, सर मैं इसको क्विक सॉर्ट में या बाइनरी सर्च में करके देखूं क्या. आपको लगता है क्विक सॉर्ट या बाइनरी सर्च इज इट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम? क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, आर दोज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स? Are those overlapping subproblems? No way, they are not at all overlapping subproblems. प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पार्टीशन अलग है, राइट साइड पार्टीशन अलग है, तो यहां पर कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है. तो ऐसे केस में मेमोराइजेशन इज ऑफ नो यूज. मेमोराइजेशन मेक सेंस व्हेन द सेम प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. सो यू कम डाउन, यू कम डाउन, एंड आई एम सेइंग दैट. तो ये मेमोराइजेशन काम कैसे कर रहा है, मेमोराइजेशन काम कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं. हैव अ लुक एट दिस. आपने फिबोनाची ऑफ 6 कैलकुलेट करने की कोशिश की, 6 कैलकुलेट करने की कोशिश की, आप गए 5 में और 4 में. वेट, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन पहले जब लोग 5 में गए तो 5 के अंदर से वी वेंट इनटू द 4 फर्स्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. 4 में से वी वेंट इनटू द 3 फर्स्ट, एंड 3 में से, ये प्लीज नोट हम लोग ऊपर से नीचे नीचे जा रहे हैं, 3 में से वी वेंट इनटू द 2, और 2 का रिजल्ट हमें आ गया 1. Okay, that is good. Then A3 में से we went into the 1, A went into 1, उसका रिजल्ट हमें आ गया 1. 1 plus 1 result is equal to 2, and that 2 result is getting saved over here.
So this is now calculated. I'm talking about this line. I'm talking about this line. ये दोनों का एडिशन किया, रिजल्ट उसके थर्ड लेवल पे सेव कर दिया, और उसके बाद में हम लोगों ने रिटर्न किया. एंड यू कंटिन्यू फर्दर, एंड यू कंटिन्यू फर्दर. नेक्स्ट टाइम अब फिबोनाची 4 के लिए प्लीज पे अटेंशन. फिबोनाची 4 के लिए फिबोनाची 3 का रिजल्ट आ चुका है. देन यू गो इनटू द फिबोनाची 2. बट दिस फिबोनाची 2, प्लीज नोट दैट इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड. इट विल बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द array. It will be directly taken from the array for the next time. Don't forget that. And then you calculate Fibonacci of 4. If Fibonacci of 4, 1 plus 2 is equal to 3. A 1 plus 2 is equal to 3. And that 3 you are saving into this, and then you are returning from there. Okay, that is great. You continue further. A Fibonacci of 5 के लिए Fibonacci 4 solve हो गया. A Fibonacci 4 solve हो गया, और बाद में जब Fibonacci 3 की बारी आई, अब फिर से कैलकुलेशन नहीं हुआ है. Fibonacci 3 is directly taken from over here. So now it is 4 plus 3 comes out to be, नहीं रुको, Fibonacci of 4 कितना है 3, और Fibonacci of 3 कितना है 2. So 3 plus 2 is equal to 5. So that 5 is calculated. 5 is calculated, and then it is returned. Fibonacci of 6, take a look at this. Fibonacci of 6, what do you see? 6 के लिए Fibonacci of 5 is calculated, and for Fibonacci of 4, for Fibonacci of 4, you are directly taking a result from here. You are not again executing the loop inside, a loop inside, and then Fibonacci of 4 comes out to be 3. A 5 plus 3, a 5 plus 3, the result 5 plus 3 result comes out to be 8. That 8, and this is what you have solved. Have you noted that what is the count? Count is कितने recursive call गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Within 9 recursive call, you are able to solve this, and these many recursive calls are actually skipped. Actually skipped for the Fibonacci of 6. For the Fibonacci of 6, and this technique is referred as memoization technique. What is memoization stands for? It is based on Latin word memorandum, meaning that to be remembered. You continue further. Memoization is a technique used in computing to speed up the programs. Okay, that is good. This is accomplished by memorizing the calculation result of the process input, such as results of a function call. Okay, that is good. If if same input or a function call with the same parameters is used, the previously stored results can be used again, and unnecessary calculations are avoided. Okay, that is great. Need to rewrite the recursive algorithm using simple arrays or using map or dictionary so that you can do the memoization. Is the memoization part is clear to everyone? कोड आपके सामने था, रिजल्ट आपके सामने थे, एग्जीक्यूशन मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, राइट? सो यू सीन हाउ मेमोराइजेशन हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड. लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा था? हम लोग शुरुआत कर रहे ऊपर से, लेकिन टॉप, इट वाज लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच. ये जो पूरा एग्जीक्यूशन था, द होल एग्जीक्यूशन वाज अ टॉप डाउन अप्रोच. डोंट फॉरगेट दैट. डोंट फॉरगेट दैट. नाउ लेट अस गो स्टेप अहेड एंड वी टॉक अबाउट व्हाट इज डीपी. देन व्हाट इज डीपी? व्हाट इज डायनेमिक प्रॉब्लम? यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो आपका मेमोराइजेशन है, द मेमोराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज top down approach. It is also called a top down approach. What is DP? The DP, the alternative solution DP is memoizing the recursive call. ये वो ठीक है. The DP solution is nothing but kind of a bottom up approach. A DP solution is kind of bottom up approach. तो ये क्या कह रहा है? Do not start with 6. Do not start with 6. You start with the minimal input that is given to the function. एंड अगर आपको याद होगा, मैंने आपको रिकर्शन के वक्त बताया था कि जब भी आप लोग रिकर्शन के बारे में सोचोगे, बेस कंडीशन के लिए यहां से शुरुआत मत करना, पेपर वर्क मत करना. यू थिंक ऑफ द मिनिमल पॉसिबल इनपुट, एंड द मिनिमल पॉसिबल इनपुट दैट आई कैन गिव इट, लेट्स से टर्म 1 एंड टर्म 2. तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको डीपी अप्रोच बता रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. मैं पहले प्रोग्राम बताऊंगा, बाद में उसकी थ्योरी बताऊंगा. पे अटेंशन. सो फिबोनाची ऑफ 1 इज 1, फिबोनाची ऑफ 2 इज 1. Now you calculate the Fibonacci of 3, that is addition of the two previous, and then you calculate the Fibonacci of 4, which is the addition of two previous, and then you calculate Fibonacci of 5, which is addition of two previous, and then you calculate Fibonacci of 6, which is addition of two previous. I'm saying that मैं ऊपर से नीचे नहीं आ रहा हूं, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं. I'm calling it as a bottom up approach. तो यहाँ पर भी सेव करना है क्या? यहाँ पर भी सेव करना है.
लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच से सेव करना है। तो सर हाउ इट कैन बी रिटन प्रोग्रामेटिकली, पहले प्रोग्राम देखो, थियरी ज्यादा सिंपल लगने लगेगी। सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड आई एम सेइंग दैट इट इज पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर तो रिकर्सिव कॉल भी नहीं है, आप चिंता मत करो, लेकिन डीपी DP dynamic programming Fibonacci integer n, and then what is the logic behind it? The logic behind it is that I just want to create the array over there. I just want to create an array over there, and I just want to calculate I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus, I plus plus, and let us get started with. और लॉजिक क्या करना है, ये पहले दो टर्म्स आपको पता है, ए टर्म्स ऑफ 1 एंड टर्म्स ऑफ 2, ये दोनों टर्म्स जो आपको पहले से पता है वो पहले आप लोग मेंशन कर दो। ये जो स्टार्टिंग इज लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ अ डीपी, तो जो आपका मिनिमल इनपुट है उसके स्टेट्स आप लोग पहले से मैनेज कर लो, एंड देन यू बिगिन फ्रॉम द थर्ड स्टेप ऑनवर्ड्स, जो बचे हुए सारे हैं, यू बिगिन कैलकुलेशन। हाउ डू बिगिन कैलकुलेशन? इट इज वेरी इजी, टर्म्स ऑफ आई is equal to terms of I minus 1 plus terms of I minus 2. I hope it is pretty simple one. Array का किसी भी टर्म का अगर आपको एडिशन करना है, मैं कह रहा हूं पिछले दो टर्म्स का एडिशन कर लो। एरे के किसी भी टर्म का एडिशन करना है तो पिछले जो दो टर्म्स है उसका एडिशन कर लो। ओह, दैट सिंपल, सुपर सिंपल वन। एंड देन फाइनली as you are reached to n, at the end simply return terms of n and you are done. Sir, is it a DP program? Yes, it is a DP program. Can you please tell me how many calls are given to the function? How many calls are given to the function? अरे फंक्शन को कितने कॉल दिए गए, देख के पता नहीं चल रहा है क्या? It is a single call, no recursive call is there. Like within a single call you are able to get the same result. So is it true? हमें आप पे भरोसा नहीं है। Okay, run it and you find it. Let's say it's a DP of Fibonacci and you run it once again. I'm saying that this is coming up with the same result with a single function call. With the single function call, the result is still same. You don't worry about it. Oh, that is fantastic. And this approach is said to be the DP approach. This approach is said to be the bottom up approach. So instead of memoization क्या कर रहा था? Memoization was doing a recursive calls. Memoization was doing a recursive call. Memoization was doing a recursive call. Memoization was doing a recursive call. और जो recursive call already calculated है, जब recursive call calculate हो रहा है तो उसका result store कर रहा था. That is what we call it as a memoization. अब ये डीपी क्या कहता है? डीपी कहता है कि I'll start thinking in a reverse direction. तो मैं ऊपर से नीचे आते आते स्टोर नहीं करूंगा, मैं नीचे से शुरुआत करता हूं, मैं एक एक स्टोर करता हूं और फिर आगे जाता हूं, एक एक स्टोर करता हूं और फिर आगे जाता हूं, एक एक स्टोर करता हूं और फिर आगे जाता हूं, एंड देन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट। दिस इज व्हाट यू कॉल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डीपी में टिपिकली जब डीपी प्रॉब्लम होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो स्टेट सेविंग इन्वॉल्व होता है। टेक अ लुक एट दिस डीपी प्रॉब्लम। जितने सारे डीपी प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज कॉमन? एक ग्रीडी में कॉमन क्या था कि इटरेशन लगाने थे, और इटरेशन के अंदर हमें क्या करना था? हमें ऑप्टिमल चॉइस पर इसमें उठाना था। ग्रीडी में देखो क्या हो रहा है, ग्रीडी के अंदर यू स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेट सेविंग, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज नंबर टू? you get the starting terms, that is something. And number three, what you are doing, what you're doing now, you start building the state for the other ones in a iteration। वापस से iteration यहाँ पर भी है, और iteration में हम लोग अगले 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 solution build कर रहे हैं या फिर more refined solutions build कर रहे हैं again and again over the iteration। now this is a typical way the DP problems are written। और DP में recursion की कोई जरूरत नहीं है, rather it is alternative approach to the recursion। it is alternative approach to the recursion। so I was trying to tell you that the DP uses 1D or 2D array to save the state. You are able to see that the greedy algorithms pick optimal solution to the local problem and never reconsider the choice। ये greedy का था। But DP is doing reverse one। DP algorithm solve the sub problem in a iteration and try to improve it
इन अ सब्सिक्वेंट इटरेशंस। सो डीपी ऐसा नहीं करता, डीपी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ले रहा है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ले रहा है और उस सोल्यूशन को स्लोली स्लोली इंप्रूव करते जाता है टू कम अप विद द फाइन ट्यून रिजल्ट। सो ग्रीडी और डायनेमिक में डिफरेंसेस क्या है? यहाँ से क्वेश्चन, सर ये सब कुछ इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू में नहीं पूछते, लेकिन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन अ कोडिंग राउंड। तो इंटरव्यूअर इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपको इसकी थियोरेटिकल डिफरेंस पता है क्या। इंटरव्यूअर इज प्रोबेबली इंटरेस्टेड इन नोइंग क्या ये जो थियोरी आप लोग पढ़ते हो, ये जो थिंकिंग अप्रोचेस आप लोग पढ़ते हो, क्या उससे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, क्या आप उससे आप लोग लॉजिक लगा पाओगे, क्या उससे आप लोग कोड लिख पाओगे? दैट इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर, समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। फ्यू मोर थिंग्स, a typical DP problem gives you choices and ask for optimal result, either maximum result or like a minimum result you ask for. You continue further. Technically, it can be used for the problems having two properties. If which two properties? I'm saying that overlapping subproblems and optimal substructure. Please note, dynamic प्रोग्रामिंग ये तब अप्लाई किया जा सकता है जहां पर आपके प्रॉब्लम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। तो सर व्हाट डू मीन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम? आई एम सेइंग दैट टू सॉल्व वन प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व the sub problems repeatedly multiple times, repeatedly multiple times, जो कि मैं आपको दिखा रहा था कि एक ही फिबोनाची ऑफ 3 वी आर कैलकुलेटिंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो जब भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इट इज अ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज सेकंड? the optimal solution of the problem can be obtained by using optimal solution of its sub problem। ये वाला पार्ट मैं आपको फिबोनाची के एग्जांपल में नहीं दिखा सकता हूं, बट ये मैं कह रहा हूं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो जो आपका सब प्रॉब्लम है, अगर आपने सब प्रॉब्लम विद द ऑप्टिमल, अगर उसका आउटपुट आया है तो फाइनल आउटपुट भी ऑप्टिमल रहेगा। दैट इज इंश्योर्ड, दैट इज इंश्योर्ड। और इसको हम लोग कहते हैं इट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, like a dynamic programming approach. So I guess DP is clear to everyone. Do we, someone is asking the question, do we need to both memorization and DP for the company lab exam? Technically yes, क्योंकि यू नो अब आपको ये पहले से पता नहीं है। सी अगेन इट इज नॉट अबाउट थियोरी। सार्थक, क्वेश्चन इज गुड। इट इज नॉट अबाउट द थियोरी कि आप लोग किससे सॉल्व करते हो। द इंटरव्यूअर छोड़ दो, अगर कोडिंग राउंड है, कोडिंग राउंड में वहां पर आपको कोई देखने वाला नहीं है, या तो आपका आउटपुट चल रहा है या तो आपका आउटपुट नहीं चल रहा है। सो यूर फर्स्ट लेवल, अगर आपका आउटपुट चल रहा है तो देन यू आर गोइंग इन इंटरव्यू राउंड, और इंटरव्यू राउंड में फिर आपसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आपने ये लॉजिक किस तरह से बिल्ड किया था। प्लीज नोट, जब आप लोग जब आप लोग कोड करते हो वहां पर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, शायद मैंने आपको दिखाया था जब आपका हैकर अर्थ का एग्जाम होता है, तो हैकर अर्थ के एग्जाम में आपने कैसे कैसे कोड टाइप किया है उसके सारे के सारे स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। लिटरली आपने जो जो टाइपिंग किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो पहली चीज तो अगर आपने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके अगर यहाँ पर डाल दिया है तो वैसे भी इंटरव्यू को पता चल जाता है यू आर नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट। हाँ, अगर आपने टाइप किया है तो आपने कौन से फ्लो में टाइप किया है उसको वैसे भी आपका कोड दिख रहा था कि आपने कैसे कैसे टाइप किया है, आपने कैसे लॉजिक लगाया है। एंड ऑब्वियसली ही विल आस्क यू फॉर द एक्सप्लेनेशन कि तूने ये ऐसे कोड किया, ये मेरे को पता है, आई वांट टू नो दैट तूने क्या सोच के लॉजिक लगाया था। करेक्ट? ऐसा तूने क्या सोचा था और व्हाई यू कम अप विद दिस। सो एट दैट टाइम यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन। लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लिसन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यूजुअली, अगर आप में से, आई डोंट नो आप लोग कितना प्रिपेयर कर रहे हो, बट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग ऑन अ हैकर रैंक, हैकर अर्थ, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आप लोग वहां पर प्रॉब्लम प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ टाइम के एरर देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि वो आउट ऑफ टाइम के एरर देते हैं। सो आप लोगों ने कुछ तो उसको रन करने के लिए कोशिश किया है, यस इज अ टाइम आउट एरर, एब्सोल्यूटली टीएलई एरर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। और ये टीएलई एरर टिपिकली ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं जहां पर रिकर्शन इन्वॉल्व है। टेक इट ग्रांटेड, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स व्हिच कुड बी सॉल्व्ड आइदर यूजिंग मेमोराइजेशन और यूजिंग डीपी, आइदर मेमोराइजेशन और डीपी। तो सर मेमोराइजेशन इज बेटर और डीपी इज बेटर?
मैं कहूंगा ऑब्वियसली डीपी इज बेटर देन दैट, आपने नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल देखे होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू दैट जो प्रॉब्लम डीपी से सॉल्व होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, हार्डली वन और टू छोड़ दो, ऑलमोस्ट ऑल कैन ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग मेमोराइजेशन, also be solved using memorization. Rather डीपी के लिए जो थॉट प्रोसेस है, डीपी का थॉट प्रोसेस रिकर्शन से चालू होता है, डीपी का थॉट प्रोसेस रिकर्शन से चालू होता है। जाने दो, मैंने कुछ ज्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लंबा चौड़ा, द मोर प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। हाँ यस, मैंने कहा ना, दैट इज नॉट सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी मैंने आपको कुछ डीपी के कंसेप्ट बताया, आई एम सेइंग दैट डोंट स्टार्ट विद डीपी, यू स्टार्ट विद द रिकर्शन, लेट द टाइम आउट एरर कम, then you think of memoization, and once you are able to solve it using memoization, then you start thinking of dp। अगर आप डीपी से शुरुआत कर रहे हो सोचने का, there are likely chances are that you will not be able to solve the problem। तो मैंने कहा ना, रास्ता हम लोग गलत पकड़ रहे हैं। और सर लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि कंपनी के इंटर एग्जाम में, कंपनी के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो जो लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे, सो प्रोबेबली कंपनी के एग्जाम तक अगर आपने ऐसे कुछ 5-10 प्रॉब्लम अगर खुद से सॉल्व कर लिए डीपी के, तो आई एम वेरी श्योर यू गेन इनफ ऑफ कॉन्फिडेंट दैट यू कैन सॉल्व इट यूजिंग डीपी। और मैं तो कहता हूं इवन कंपनी के इंटरव्यू में डीपी से सॉल्व नहीं भी होता है, यू कुड सॉल्व इट यूजिंग मेमोराइजेशन, दैट विल डेफिनेटली हैंडल योर टीएलई एरर। वो जो आपका टाइम आउट का एरर है, वो हैंडल हो जाता है इवन विद द मेमोराइजेशन। तो आपको जिससे भी आप लोग कर पाते हो करो, एंड गो अहेड, उतना एरर तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में कम से कम यू नो एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू गो इन द नेक्स्ट राउंड वेयर यू कैन ऑलवेज गिव अ एक्सप्लेनेशन। अक्षय, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इट नीड्स अ प्रैक्टिस। मेमोराइजेशन तो ठीक है, डीपी इज नॉट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट सर कंपनी में आने दो, राउंड में इंटरव्यू में मैं सॉल्व कर लूंगा। सो जो ऐसे उसके लिए तो आपको न्यूटन या आर्किमिडीज होना पड़ेगा, तो वो तो आप हो नहीं हो, दैट इज द रीजन यू आर डूइंग अ सीडैक कोर्स, जस्ट डोंट फॉरगेट दैट। सो आई एम सेइंग दैट ऑल यू नीड टू डू इज दैट, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, स्लोली स्लोली ट्राई करते रहो। एक एक डीपी प्रॉब्लम के लिए, ट्रस्ट मी, इवन दो यू आर स्पेंडिंग, सर मैंने 10 दिन में एक प्रॉब्लम के ऊपर खेल रहा हूं, इट इज स्टिल वर्थ, आई एम टेलिंग यू, इट इज स्टिल वर्थ। एटलीस्ट जब आप लोग इनिशियल 5-6 प्रॉब्लम भी खुद से सॉल्व कर लेते हो, इवन यू स्पेंड वन, कहते हैं एक प्रॉब्लम के लिए अगर आप लोग 10 दिन भी सॉल्व करते हो, तो वो जो भी पेपर वर्क आप लोग करते हो, उससे जो आपका मेंटल एबिलिटी बनता है, थॉट प्रोसेस इज नॉट समथिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, इसके लिए रट्टा मारना पड़ता है। प्रोग्रामिंग थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए एक ही तरीका होता है, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद होगा लॉन्ग बैक, अगर आपको स्विमिंग करना है, तो स्विमिंग के 10 बुक्स पढ़ के आपको स्विमिंग नहीं आ सकता। स्विमिंग करने के लिए ऑल यू नीड इज दैट यू नीड टू फर्स्ट जंप इन वाटर, एंड देन थोड़ा बहुत पानी मुंह में जाना पड़ता है। जब तक मुंह में पानी नहीं जाता है, तब तक किसी को स्विमिंग नहीं आता है। करेक्ट? सो सीखना है नहीं सीखना है स्विमिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इज अप टू यू। मेरा सिर्फ काम है, मैं टेक्निक बता सकता हूं। अगर आप में से किसी ने स्विमिंग का कोचिंग लगाया होगा, तो दैट पर्सन दैट वो कोच होता है वहां पर, वो टेक्निक बताता है। हाथ पैर तो आपको ही मारने पड़ेंगे, ये ऑलवेज रिमेंबर दैट। एनीवे, लेट अस गो अहेड। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रवचन देता बैठूं। लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन रिकर्शन, memoization and DP. I say that your recursion is always solving in like a top-down approach. A recursion, yes, it is a top-down approach. What is memoization? Memoization is also top-down approach, but a memoization हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? We are using it for overlapping sub problems. We are using it for overlapping sub problems, and for the overlapping sub problems, I'm saying the optimized top down. It is optimized top down. So हम लोग उसको मेमोराइज कर रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए। हर एक रिकर्शन का प्रॉब्लम मेमोराइजेशन से सॉल्व नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो डोंट ट्राई टू अप्लाई, सर मैं थोड़ा सा क्विक शॉर्ट यूजिंग डीपी करूं क्या? डोंट डू नॉनसेंस। करेक्ट? वो सॉल्व नहीं होने वाला, उसके लिए बनाया नहीं गया है। जहां जहां पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, वहां पर मेमोराइजेशन के बारे में सोचो। और वो जो मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स है, उसको जब आप लोग उल्टा सोचते हो, दैट इज रेफर्ड एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो bottom up approach, where you need kind of overlapping sub problem, plus you need the second one, you say optimal substructure. And when you are
In this category is something where you look for, this category is something where you look for the DP approach, where you look for DP approach. चलो that is done. I told you the relationship between recursion, memoization and DP. मैंने enough of time spend किया है onto this क्योंकि मुझको पता है again, तो चिंता मत करना, नॉट एवरी कंपनी इज गोइंग टू आस्क यू डीपी प्रॉब्लम्स. मैंने कहा ना, जितने आपके बड़े ड्रीम्स है उतने ज्यादा एफर्ट्स आपको लेने. सर मेरा सर आई हैव अ ड्रीम्स, यू नो सर, मेरे को बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस होना है, बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस होना है तो बड़े बड़े एफर्ट्स लेने चाहिए. And not only now, wait, don't consider that. So sir, do you want to say that Google is going to come to the CDAC campus? नहीं, Google CDAC के campus में नहीं आती है, don't worry. But after 1 year, 2 year, 5 years down the line, कभी ना कभी तो आपका सपना होगा, नहीं सर, हमको हमें ट्राई करना है Amazon में, हमें ट्राई करना है Google में, हमें ट्राई करना है Microsoft में, हमें ट्राई करना है ऐसे Oracle में, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में, ऐसे जितने सारे कंपनीज रहेंगे. इवन दो आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years राउंड ऑफ इंटर एक्सपीरियंस, जब लोग कंपनी में जाओगे, पहला राउंड होगा कोडिंग राउंड, पहला राउंड होगा कोडिंग राउंड. एंड विद द कोडिंग राउंड, सो वहां पर यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल, और सारे एल्गोरिथम ऐसे ही होते हैं. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिसेंटली मतलब अभी माय वाइफ लॉस्ट हर जॉब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. So she was already into the working company. She's a IT person, software developer. So she lost her job. 2-3 months she was just waiting for opportunity. Now she got the opportunity in like a company. See, she has got experience of 13 years. 13 years of experience in IT industry. And after that, when she went for a kind of an interview, her interview scheduled like a VMware. In a VMware, when the interview was scheduled, there were 5 rounds. 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद में 5 साल, लिसन केयरफुली, 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद में उस पांच राउंड ऑफ इंटरव्यू है. एंड ऑल 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू वेर प्योर टेक्निकल. और पांच में से पांचों के पांचों राउंड में द प्रोबेबली इंटरव्यूअर आस्किंग हर अबाउट राइटिंग अ कोड, राइटिंग अ सूडो कोड, गिविंग एक्सप्लेनेशन कि ये तूने क्या किया है, और गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ डू यू सॉल्व इट. ऑब्वियसली मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको क्या कहते हैं उसको, फिबोनाची सीरीज निकालने के लिए बोला जाएगा. यू डोंट वरी, एट द फ्रेशर लेवल योर प्रॉब्लम्स विल बी सिंपल. बट एनीवन हु इज कंसिडरिंग दैट, जाने दो ना सर, इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, जब कभी ये ख्वाब होगा तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा. अब ये आपकी मर्जी है, आप कब पढ़ने वाले हो. I know that my wife was like struggling for 3 months. So 3 months she was studying कि चलो ये पढ़ते हैं. So she learned everything. She learned operating system. She learned data structure once again. She learned C++ once again. She learned probably उसका जो भी डोमेन है. She is working in a C++. So she was working in this. हाँ, yes, in spite of 13 years experience, still. So Namrata, it happens. So see, हम लोग जिस फील्ड में, IT is a field where you have to keep learning. तो सर इसका मतलब ये होता है कि इफ यू डू नॉट परफॉर्म देन यू आर आउट. इफ यू डू नॉट परफॉर्म देन यू आर आउट, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इवन दो यू परफॉर्म, अब मान लो अगर आपके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, द टीम इन विच यू आर वर्किंग, द होल प्रोजेक्ट इज क्रैप्ड बाय द कंपनी. सो कंपनी हैज टेकन डिसीजन कि ये प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डाउन करेंगे. अगर प्रोडक्ट डाउन करेंगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है. सो द कंपनी सेज दैट बाय बाय. Now, including right from the bottommost developer of that company till the manager, the project manager of the company, everyone is out. The whole team is goodbye. तो और ट्रस्ट मी, कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में इतना प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ता जितना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए करना पड़ता है. सो बेटर गेट इन टच नाउ. दिस इज योर आइडियल टाइम. स्टूडेंट फेज में ये पढ़ना ज्यादा आसान है. So after experience of 2 years, 5 years down the line, again you are going back and coding for a linked list is not so easy job. यहाँ पर कुछ लोग होंगे, they are probably from experience category and they can probably tell me, जितना ज्यादा experience होता है उतना ज्यादा difficult हो जाता है कि again going back and learning a program of reversing a linked list. Anyway, छोड़ दो, हम लोग out of track जा रहे हैं. Let us get me back and let me talk about the problem that we are trying to solve. The problem that we are trying to solve using the dynamic programming approach is one of the problem is a Bellman-Ford. And why Bellman-Ford? Why Bellman-Ford? I guess we were discussing why Bellman-Ford. Because Bellman-Ford is again your single source
single source shortest path algorithm. It is a single source shortest path algorithm, but it can work with the negative weight edges as well. And that is the reason हम लोग बेलमन फोर्ड की बात कर रहे थे. So sir, what this particular Bellman-Ford algorithm is all about? I'm saying that it's a DP approach. It's a DP approach. So you're looking for the optimal solution. You're looking for optimal solution. Let me explain you this with the example. कि यहाँ पर पहले तो हमको ये ढूंढना है क्या इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है क्या? ये डीपी कहाँ पर अप्लाई करना होता है? डीपी वहां पर अप्लाई करना होता है जहां पर इट इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है और जहां पर वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है. ये जो दो प्रॉपर्टीज, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पर होते हैं वहां पर वी नीड टू गो फॉर बेलमन फोर्ड. आई होप यू पीपल एग्री. तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं क्या इस प्रॉब्लम में कहीं पर ये दो प्रॉपर्टीज है क्या. ओके तो यहीं पर वो प्रॉपर्टीज है क्या. अल्टीमेटली आई वांट टू फाइंड आउट मुझको जीरो से हर एक वर्टेक्स का मिनिमल डिस्टेंस ढूंढना है. मुझको जीरो से हर एक वर्टेक्स का मिनिमल डिस्टेंस ढूंढना है. तो मैं काम करता हूं, मैं बाय द वे मैं पेपर वर्क दिखा रहा हूं, मैं एल्गोरिथम नहीं पढ़ा रहा हूं. पहले आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नाम का कोई चीज है या नहीं है. पहले हम लोग वो देख रहे हैं. अगर वो दिखा बाद में कोड के ऊपर बाद में जाएंगे. कोड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. सो यू सी दैट मैं कह रहा हूं थिंक ऑफ दिस थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स. अभी जीरो से आपको शुरू करना है, आपको पता है, लेकिन मैं एंड से शुरू कर रहा हूं कि लेट्स से ये मेरा वर्टेक्स नंबर 4 है. कोई मुझको बताएगा ये जो मेरा वर्टेक्स नंबर 4 है, इस वर्टेक्स नंबर 4 के ऊपर आने के कौन कौन से रास्ते हैं. वर्टेक्स नंबर 4 के ऊपर आने के कौन कौन से रास्ते हैं. इधर आर टू रास्ते. एक रास्ता है जो 3 से आए, मैंने कलर किया था उसको ऐसे, और दूसरा रास्ता है 2 से ऊपर आने का. ये तो फिर अगर मुझको 4 का ऑप्टिमल पार्ट ढूंढना है, ये प्लीज विजुअलाइज. अगर मुझको 4 का, प्लीज थिंक ऑफ इट, आप लोगों का थॉट प्रोसेस ज्यादा मैटर करता है, जस्ट लिसनिंग से कुछ नहीं होने वाला है. सो 4 के ऊपर आना है, तो 4 के ऊपर आने के दो रास्ते हैं. या तो आप लोग 2 to 4 आ जाओ या फिर आप लोग 3 to 4 आ जाओ. तो ऑब्वियसली इसमें से जो ऑप्टिमल रास्ता है आइडियली वो हमको चूज करना चाहिए था. ओके दैट इज गुड. लेकिन तो पहले हम लोग सोचते हैं 3 के ऊपर आने के कौन से रास्ते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं 2 के ऊपर आने के कौन से रास्ते हैं. तो चलो अब मैं बात कर रहा हूं 3 के ऊपर आने के कौन से रास्ते हैं. ये 3 के ऊपर आने के रास्ते कौन कौन से हैं. ये 3 के ऊपर आने के दो रास्ते हैं. एक रास्ता है ये -1 वाला रास्ता और दूसरा रास्ता है ये 2 वाला रास्ता. अगेन इन दोनों में से जो ऑप्टिमल होगा आइडियली आई शुड हैव कंसिडर्ड दैट. ओके दैट इज गुड. बट अगेन ये जो 3 के ऊपर आने के वापस से दो रास्ते हैं. प्लीज नोट दैट एक 1 से आने का रास्ता है और एक 2 से आने का रास्ता है. एक 1 से आने का रास्ता है, एक 2 से आने का रास्ता है. आपने नोट किया आपको यहां पर भी आपको 2 से आने का रास्ता चाहिए था और 3 के लिए भी आपको 2 से आने का रास्ता चाहिए था. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 4 के लिए अगर आपको ऑप्टिमल पार्ट ढूंढना है तो आपको 2 का ऑप्टिमल रास्ता पता होना चाहिए. और अगर 3 के लिए अगर आपको ऑप्टिमल पार्ट ढूंढना है तो भी आपको 2 का ऑप्टिमल पाथ पता होना चाहिए. हेलो, व्हाट इज दिस. अरे व्हाट इज दिस. This is nothing but overlapping sub problem. This is nothing but overlapping sub problem. इसको मैं कह रहा हूं कि ये overlapping sub problem है कि 2 का रास्ता मुझको 2 बार ढूंढना पड़ रहा है, 3 के लिए भी ढूंढना पड़ रहा है और 4 के लिए भी ढूंढना पड़ रहा है. ओके यू कंटिन्यू फर्दर. बाय द वे सर वो 2 का रास्ता, तो सर 2 के लिए, ए 2 के लिए कौन कौन से रास्ते हैं. ए 2 के लिए कौन कौन से रास्ते हैं. नसीब हमारा अच्छा है कि 2 के लिए एक ही रास्ता है, तो हमें कोई मल्टीपल चीजें नहीं सोचनी है. ये मल्टीपल चीजें नहीं सोचनी है. दैट आई एम एबल टू सी. बट रुको 3 के लिए आपने दो ऑप्शन बताए थे. 3 के लिए आपका एक ऑप्शन था 2 और एक ऑप्शन था 1. तो सर 1 के लिए, ए 1 के लिए प्रोबेबल ऑप्शन क्या है. ए 1 के लिए प्रोबेबल ऑप्शन है, A1 के लिए प्रोबेबल ऑप्शन है, आप लोग यहां से भी आ सकते हो और यहां से भी आ सकते हो. यहां से भी आ सकते हो और यहां से भी आ सकते हो. सो आई एम एबल टू सी दैट. अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, तो वन थिंग इज श्योर, 2 के ऊपर जाने का एक ही रास्ता है. ए 2 के ऊपर जाने का एक ही रास्ता है एंड दैट डिस्टेंस इज 5. आई होप यू एग्री. ए 2 का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है.
2 के ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज ओनली 5, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू कंटिन्यू फर्दर। नाउ टेल मी 1 के ऊपर जाने का ऑप्टिमल रास्ता कौन सा है? भाई लुक एट दिस डायग्राम, 1 के ऊपर जाने का ऑप्टिमल रास्ता कौन सा है? अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूं, इट इज 6, और अगर मैं यहां से घूम के जाता हूं, देन इट इज 5 minus 2 comes out to be 3. So I'm very sure I say that for this, I believe that the optimal solution, I believe that a 2 का तो optimal solution मेरे को मिल गया क्योंकि एक ही solution था, और 1 का optimal solution, this is optimal solution which will give me the distance is equal to 3. But wait, now can you tell me 3 का optimal solution कौन सा है? I'm asking about this 3. 3 का optimal solution कौन सा है? 3 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है? सी अगर आप लोग 3 माइनस 1, इसका डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता है, 3 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 2, एंड दिस इज 5, 5 प्लस 4, oh that comes out to be 9. I said that no, this option seems to be a better option for me, this option seems to be a better option for me, and that will give me the distance is equal to 2. एंड फाइनली अब मुझको 4 के लिए ऑप्टिमल ऑप्शन ढूंढना है। 4 के लिए ऑप्टिमल ऑप्शन कहां से है? 4 से 5 plus 3 comes out to be 8. 5 plus 3 comes out to be 8, but 2 plus 3 comes out to be 5. A 2 plus 3 comes out to be 5. So I'm saying that this distance would be a kind of a optimal one. And here I'm able to connect to all of this. This is nothing but my shortest path tree is created kind of using Bellman algorithm. मैंने आपको बेलमन का पूरा पेपर वर्क करके दिखाया, और वैसे ये ग्राफ काफी छोटा था, इसलिए पेपर वर्क आपको करना पॉसिबल हुआ। अगर आपका रियली कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा, इसका पेपर वर्क करते करते जान चली जाती है, पेपर वर्क करते करते जान चली जाती है। यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट। कोई बात नहीं, हमको नहीं करना था, हमको सिर्फ आइडिया मिल गया, उतना काफी है। तो सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? अगेन जो आपका इनिशियल स्टेट है, दैट इज सिमिलर दैट ऑफ डिक्स्ट्रा। बेसिक फॉर्मूला इज अगेन सिमिलर दैट ऑफ डिक्स्ट्रा। ये आपका डिक्स्ट्रा का फॉर्मूला क्या था? आपको याद होगा, आप लोग भूले नहीं हो, आई विद दैट एजम्पशन। ए डिक्स्ट्रा का फॉर्मूला क्या था? वो डिक्स्ट्रा का फॉर्मूला क्या था? यू रिकॉल दैट ए डिस्टेंस, डिक्स्ट्रा का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u टू v। इज इट अ करेक्ट फॉर्मूला? अरे हम लोगों ने डिक्स्ट्रा के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया था क्या? Yes, the basics are still going to remain same. प्लीज नोट, फाउंडेशंस कभी चेंज नहीं होते क्योंकि अल्टीमेटली ग्राफ इज सेम, सोचने का तरीका बदल जाता है, बट द की टर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम। यू रिमेंबर दैट, यू की टर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम। तो हम लोग हमेशा कह रहे थे, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, देन अपडेट दैट। if this value is less than this value, then update that. So remember this foundation and then apply that foundation to the Dijkstra's algorithm. So what your Dijkstra's algorithm is saying, you read that again. See, even the starting point is same, even the basic concept is still same. You find that initialized distance of from source to all vertices as infinity, and the starting vertex is equal to 0. Starting vertex is equal to 0. Okay, this is same as Dijkstra. Continue further. Calculate shortest distance for v minus 1 times. v minus 1 टाइम आपको रिपीट करना है, अच्छी बात है। और क्या रिपीट करना है? यू फॉलो द फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ एज uv. So it is the same formula, and again even the condition is same. If the distance of v is greater than that, then you want to update that. This is done. और ये आपको कितनी बार रिपीट करना है? ये आपको रिपीट करना है v minus 1 times for each age. तो आपके पास जितने सारे एजेस है, you access all the ages in any order. Again, order is not important. At any order, you access all the ages and you repeat the loop for v minus 1 time. हर एक iteration में we are going to improve upon that. Correct? तो चलो let us go ahead and let us try to do it. Now it is simple paperwork, उतना ही algorithm है. DP algorithm, after knowing solution, they are very easy. टू बिल्ड सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच वो जान ले लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन पता है, ट्रस्ट मी, यू कैन से दैट सर मेरा लैब एग्जाम फिर से एक बार ले लो बेलमन फोर्ड के ऊपर, मैं पास हो जाऊंगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो वैसे भी वंस यू नो द सॉल्यूशन दे आर सुपर इजी। लेट अस सी दैट। You start with this is infinity, 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 infinity. Starting vertex is equal to 0. So before you start with, this is my initial condition, and I'm saying that you access
each one ये नीचे वाले सारे one by one access करते जाएंगे. And let us start with 3 4. What you are saying, distance of 3, please note, distance of 3 plus connecting weight, is it less than distance of 4? एक बात बताओ, ये distance of 3 is infinity, infinity plus 3, ये करने वाला इंसान पागल होता है, आपको पता है? हेलो, ए इंफिनिटी प्लस 3, इंफिनिटी माइनस 3, ऐसा कभी आप लोगों ने किया है आज तक? सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. आई वुड से दैट ये करने का कोई मतलब ही नहीं है. सो लीव दैट. यू कंटिन्यू फर्दर. You follow the next one. Next one. Again you are saying that distance of 2 plus 3. Again infinity plus doesn't make any sense. Let me continue further. Distance of 2 plus a 2 3 edge. 2 3 edge. I'm saying that infinity plus 4 again doesn't make any sense. Let me continue further. 2 1. 2 1. Again distance of 2. A distance of 2 infinity plus minus 2 again doesn't make any sense. You repeat the further process. 1 3. 1 3. I'm saying that distance of 1 plus a distance of 1 plus minus 1. Again infinity minus 1 doesn't make any sense. Sir कुछ भी तो नहीं हो रहा है. Wait for a minute. Have patience. Go ahead with the next. अब distance of 0, a distance of 0 plus 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 5. A 0 plus 5, 0 plus 5 is 5. 5 is less than infinity. I understand that 5 is less than infinity. Go ahead and update this. Go ahead and update this. आप लोगों ने 2 का distance update कर दिया है. Congratulations, you are done the first job. That is something that I have updated. You continue further. A 0 1. A 0 1, you do the calculation. 0 plus 6 is equal to 6. 6 is less than infinity. 6 is less than infinity. So you again update this. And I'm saying that when all edges are completed, your pass 1 is done. And my pass 1 is done. So pass 1 के बाद में, what is the new state? 0, 6, 5, infinity, infinity. I hope you are able to see that. And if you are able to see that, go ahead. Ajinkya is saying that need to start from root and then its shortest child. No, I'm saying that you simply, it is all about Ajinkya. We need to handle all the edges. We need to go through all the edges in any order. You need to go through all the edges in any order. यहाँ पर मैंने जो एजेस जिस ऑर्डर में लिखे हैं मैं उस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहा हूं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 0 से एजेस शुरू करने चाहिए, 1 से चालू करने में चाहिए. जो भी आपके एजेस है यू नीड टू जस्ट प्रोसेस द एजेस. इज दैट ओके अजिंक्य? ओके, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग फर्दर. फिर से एक बार ट्राई करते हैं. लेट अस गो थ्रू ऑल एजेस वंस अगेन. चलो स्टार्ट. ए डिस्टेंस ऑफ 3 इज इंफिनिटी प्लस, छोड़ दो. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. ए डिस्टेंस ऑफ 2, अब यहां पर कुछ हो रहा है. व्हाट इज सेइंग? डिस्टेंस ऑफ 2, ए डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 3 is 8. 8 is less than infinity. 8 is less than infinity. Go ahead, update that. You repeat the process. 2 3. 2 3. Again you check. 5 plus 4 is 9. 9 is less than infinity. 9 is less than infinity. Go ahead, update that. 2 1. You check it once again. 5 minus 2 is 3. 3 is less than 6. Or 3 is less than 6. You update that. Okay, that is done. You continue further. We have 1 3. 1 3. 1 2 3. If we are talking about this age. 3 minus 1. Take a look at this. 3 minus 1 is less than 3 minus 1 2. 2 is less than 9. 2 is less than 9. Go ahead. 2 is less than 9. You update that. You continue further. 0 2. 0 2. 0 plus 5 is 5. 5 is not less than 5. Leave it. You repeat the process. 0 0 plus 6 is 6. 6 is not less than 3. Leave it as it is. And your second pass is completed. After the second pass, I'm able to see it is 0 3 5 2 8. Okay, it is there. 2 passes done. Let us go ahead with the third pass.
With the third pass, again repeat the process. Again repeat the process. A distance of 3. A distance of 3. You check that. A distance of 3 is 2. 2 plus 3 is 5. 5 is less than 8. If 5 is less than 8, you update that. Okay, you continue further. 2 to 4. 2 to 4. So it is a 5 plus 4, 9 is not less than 2. Skip that. 2 to 3. 2 to 3. 5. Sorry. A 2 to 4 tha pehle. So anyway, 5 plus 3 is 8. 8 is not less than 5. You continue. And the next one, 2, 3. I'm saying that 5 plus 4 is not less than 2. Again, skip that. You continue further. The next one. Next one is 2, 1. 5 minus 2 is 3. It is not less than 3. तो फिर से अपडेट करने की जरूरत नहीं है. Leave it. Continue further. 1, 3. 1, 3. A 1. इसका क्या है? 3 minus 1 is 2. A 2 is not less than 2. 2 is equal to 2. Nothing much to be done. You continue further. A 0, 2. 0, 2. I'm talking about this age. 0, 2. Again, 0 plus 5 is already equal, not less than. Done. And you continue further. 0, 1. 0 plus 6 is less than, is not less than 3. So again skip that. Again my third pass is completed, and if the third pass is completed, let me go ahead. It is 0, 3, 5, 2, 5. Have you noted that? Oh, this is the result. And I want you people to do one more paperwork. Karo fatafat. Can you do one more round of this? Do it on paper by yourself and tell me what is pass 4 result. I am waiting for you people. Take 2 minutes. अभी तक आपके सामने है. Do pass 4 by yourself. Go through all ages once again. Go through all ages once again and let me know what is the final answer after pass 4. Girja Shankar is saying that it is same. What about others? Oh, so you found that. इसीलिए मैंने वो आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि मुझको पता था उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. You don't worry about it. So ultimately, when you do it once again, you are still getting the same result. You're still getting the same result. So what I'm saying is that your output has been stabilized. Your output is stabilized. अब ये और चेंज नहीं होने वाला है. ये अभी और चेंज नहीं होने वाला है. सो जब आपको पता है कि आपका आउटपुट v-1 एजेस 1 v-1 पास, ज्यादा से ज्यादा v-1 पासेस, ज्यादा से ज्यादा v-1 पासेस, तो ज्यादा से ज्यादा v-1 पासेस के बाद में वो आउटपुट आपका चेंज नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है. डोंट वरी. मैं इसको सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं. आइडियली क्या होता है? आइडियली नहीं कहना चाहिए. वर्स्ट केस में क्या होता है? वर्स्ट केस में जो आपका पास 1 है, जो आपका पास 1 है, पास 1 में जो सिंगल लेंथ के जितने पासेस, जितने सारे पाथ होते हैं, सिंगल लेंथ के, सिंगल एज वाले जितने पाथ होते हैं, उतने सारे स्टेबलाइज होते हैं. उतने सारे स्टेबलाइज होते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए सिंगल एज वाला ये एक ही पाथ था ना, तो ये पाथ यहीं पर स्टेबलाइज हो गया है. उसके आगे वो कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला. मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस में, इवन इन वर्स्ट केस, जो सिंगल एज वाले पासेस है कि जिसके आगे और ऑप्टिमाइजेशन नहीं होने वाला है, वो वहां पर स्टेबल हो जाते हैं. पास नंबर 2 में क्या होता है? पास नंबर 2 में मैं कह रहा हूं, दो एजेस वाले जो है वो वहां पर स्टेबल हो जाते हैं. दो एजेस वाले जो पाते हैं, अभी आप लोग नोट किया होगा, ए 0 to 1 जाने का रास्ता ये था. ए 0 to 1 जाने का रास्ता ये था, where two edges are involved. So I'm saying that two edges are involved. So this distance, this is stabilized over here. This is stabilized over here, and that is guaranteed to be stabilized. कि इसका आउटपुट ये यही आने वाला है, इसका आउटपुट वापस से नहीं बदलने वाला है, इसका आउटपुट वापस से नहीं बदलने वाला है. दैट इज इंश्योर्ड. दैट इज इंश्योर्ड. मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस में. बेस्ट केस में कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है, वो बात अलग है. उससे पहले भी हो जाता है, वो बात अलग है. अब आप उसका आगे वाले जो पाथ कंसिडर कर रहे हो, जो आगे वाले पाथ कंसिडर कर रहे हो, वैसे दिस पाथ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पाथ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पाथ
is guaranteed to be settled in 3 passes. So on a third pass onwards, मैंने कहा worst case में ये जो है this worst case में this will get stabilized. आप लोग लकी हो, वैसे ये वर्स्ट केस में नहीं जा रहा है, एक स्टेप पहले ही सेटल हो रहा है, ये एक स्टेप पहले ही सेटल हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस में जो 3 लेंथ वाले होंगे दैट विल गेट स्टेबिलाइज्ड वर्स्ट केस में. And the last one, the last pass, the most optimized path, this is of 4 edges. 4 edges, that is 100%, it will get settled in V minus 1. It will get V minus 1. और वैसे आपको पता होगा, in a tree, in a spanning tree, the longest path is not more than V minus 1 edges. Am I correct? In a spanning tree, longest path is not more than V minus 1 edges, क्योंकि maximum number of edges जो spanning tree में होते हैं वो V minus 1 ही होते हैं. अरे are you there? I'm saying that the longest path जो होता है वो V minus 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि spanning tree में V minus 1 से ज्यादा edges होते ही नहीं है. And that is the reason why there are V minus 1 passes. That is the reason why there are V minus 1 passes. ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. I hope you understood that. And if you understood that, take a look at this. Partial fluid के ऊपर मैं बाद में आता हूं. Just take a look at this. Suppose that मैं एक दूसरा ग्राफ आपको दिखा रहा हूं. मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं. And for this graph, I'm just giving you kind of example. For this graph, suppose that we have got the edges something like this. Hey, take a look at this. I want to show you there is a cycle. I want to show you that there is a cycle. Assuming that this is minus 1, this is cycle. Can you tell me what is the total weight of this cycle? What is the total weight of this cycle? मैंने पूछा what is the total weight of the cycle? So it is 2 plus minus 3 plus minus 1, that comes out to be, the total weight comes out to be minus 2. इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेट साइकिल. इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेट एज नहीं, निगेटिव वेट साइकिल. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, योर डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, डिक्स्ट्रा तो वैसे निगेटिव वेट के साथ भी नहीं करता. बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम डजंट वर्क विथ निगेटिव वेट साइकिल. योर बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम doesn't work with negative weight cycle. Your Bellman-Ford algorithm doesn't work with the negative weight cycle. तो सर what is the meaning of this? In that case, अगर आपका negative weight cycle है तो आपका जो आउटपुट V-1 में स्टेबल होना चाहिए था वो स्टेबल नहीं होता. वो अगले पास में भी उस आउटपुट में कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है, और अगर ऐसा कुछ भी चेंज हो रहा है, you can take it granted the negative weight cycle is involved, and in that particular case the Bellman-Ford algorithm is not suitable. So I'm saying that I'll write it somewhere. The Bellman-Ford doesn't work with negative weight cycles. It doesn't work with the negative weight cycles. I said it doesn't work with negative weight cycles. In that case, output कहने से अच्छा है distance. The distance of vertices keep changing even after V-1 passes. And that is the proof. अगर सो हम लोग टिपिकली क्या करते हैं बेलमन फोर्ड में, हम लोग पहले V-1 पासेस करते हैं और V-1 पासेस करने के बाद में एक और एक्स्ट्रा पास करते हैं जस्ट टू चेक वेदर द आउटपुट इज चेंजिंग. एंड इफ आउटपुट इज चेंजिंग हम लोग सीधा एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं सेइंग दैट ये नहीं बनने वाला. एंड दैट इज द रीजन इन एल्गोरिथम, हैव अ लुक एट दिस, ये V-1 पासेस होने के बाद में चेक इफ नेगेटिव एज rather नेगेटिव एज नहीं कहना चाहिए था, चेक इफ नेगेटिव साइकिल इन अ ग्राफ. सो यू वांट टू अगेन चेक कि अगर आपका डिस्टेंस
अभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस है, देन वन थिंग इज श्योर कि अभी भी इसके अंदर अभी इसके अंदर क्या है, निगेटिव वेट साइकिल है और बेलमन फोर्ड आउटपुट सही नहीं देने वाला है. इन दिस पर्टिकुलर केस you probably want to throw the exception saying that this is not correct, this is not working, and you just forget this, this is not going to be solved. That's it. तो सर कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कोडिंग ज्यादा सिंपल है. कोडिंग में आपको क्या करना है, सेम लॉजिक आपको v-1 टाइम रिपीट करना है और वही लॉजिक आपको एक बार और रिपीट करना है. तो कौन सा बड़ा तीर मारना है. सो यू जस्ट गो अहेड एंड यू फॉलो द लॉजिक. तो मैं जाके इसका कोड लिख रहा हूं. किसका कोड लिख रहा हूं मैं, बेलमन फोर्ड का. सो फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट, यू कंटिन्यूड फर्दर. हम लोग बात कर रहे हैं इट इज बेलमन फोर्ड, बेलमन फोर्ड. नेक्स्ट. बाय द वे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, सो आई शुड हैव रिटन एसपीटी, जाने दो. डन. एंड लेट मी गो अहेड, न्यू package, it's a sunbeam package, and inside this new class बेलमैन फोर्ड मेन क्लास. ओके, मेन क्लास भी हमारे पास है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू कंटिन्यू फर्दर. बाय द वे सबसे पहले भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और आपको सारे एजेस भी लगने वाले. आपको ग्राफ भी चाहिए प्लस आपको सारे एजेस भी चाहिए. और जो एग्जांपल मैंने आपको लेके दिखाया था वो शायद डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल था. एक बार ग्राफ प्लस एजेस, ऐसा कोड हम लोगों ने इससे पहले कई बार किया है क्या, आपको याद है, जहां पर हमारे पास ग्राफ भी है और जहां पर हमारे पास एजेस भी है. ऐसा कोड हम लोगों ने कई बार किया है क्या, यू रिकॉल समवेयर. आई बिलीव दैट क्रूस्कल एमएसटी में हमारे पास वो दोनों चीजें हैं. एम आई करेक्ट. क्रूस्कल एमएसटी में हमारे पास वो दोनों चीजें हैं जहां पर हम लोगों ने एजेस भी मैनेज किए थे और प्लस हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी था. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट उसका एक्सेप्ट और डिस्प्ले का कोड मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. उसका एक्सेप्ट और डिस्प्ले का कोड मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल राइट. एरर किस बात का दे रहा है, कॉपी पेस्ट किया उसको अच्छा नहीं लगा. ओके, पैकेजेस टू बी इंपोर्टेड, नो प्रॉब्लम. इंपोर्ट लिस्ट, दैट इज गुड. इंपोर्ट array list, that is done. अरे सॉरी, इंपोर्ट array list. और कुछ एरर है, स्कैनर. ओके, लेट अस से इंपोर्ट स्कैनर एंड दिस इज डन. ये सब कुछ अभी ओके. ये यहाँ पर मुझको सारे एजेस की लिस्ट चाहिए थी, मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं चाहिए थी, किसी भी ऑर्डर में चल जाएगी और ना तो मुझको इसको सॉर्ट करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट. तो लेट जस्ट कंटिन्यू फर्दर एंड लेट अस थिंक ऑफ implementing Bellman Ford with this. Bellman Ford with this. एंड विद द बेलमैन फोर्ड ये मुझको क्या रिटर्न करना है, ये मुझको शायद एसपीटी, जैसे हमने डिक्स्ट्रा में हम लोगों ने जो एसपीटी रिटर्न किया था ऑन द पैरेलल लाइन, या फिर एरिया ऑफ डिस्टेंस आप लोग कह रहे हो, यू कैन इवन रिटर्न द एरिया ऑफ डिस्टेंस, चॉइस अप टू यू. तो वो हमको यहां से वहां पर रिटर्न करना है. तो एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है यू से दैट starting with one vertex, no, starting with some vertex, going ahead. So keep make distance of all vertices as infinity, कोई मुझको बताएगा how do I do that? Go ahead, you create a area of distance, like a vertex count, and then I can directly use arrays.fill. We have got the distance, is equal to infinity. My first step is done, मैंने सबका distance infinity कर दिया. Make starting vertex source vertex distance, a distance as, क्या करना है, starting vertex का distance क्या करना है, अरे शुरू कहाँ से करना है, what is starting point, the starting vertex distance you want to make it 0. So I'm saying that distance of root or distance of source is equal to 0. तो चलो we have done that as well. अब हमें क्या करना है, for v-1 times. ओके, सो नेक्स्ट जो कुछ भी हम लोग करने वाले हैं, रिपीट for v-1 times.
ओके, रिपीट फॉर v माइनस 1 टाइम्स। क्या अपडेट रिपीट करना है? अपडेट द डिस्टेंस ऑफ द नेबर्स, update the distance of the neighbors. Okay, go ahead and update the distance of a neighbors. तो मैं कहाँ पर था? योर चॉइस, आप लोगों को यहीं पर लिखना है, यहीं पर लिखो। आपको अलग से फंक्शन लिख के करना है, आप लोग फंक्शन लिख के करो। Which one is better? I guess I'll write a function. So public void, I say that update distance. Update distance, अरे dust नहीं, distance of the neighbor. I'll update the distance of all the neighbors. By the way, लेकिन एक बार नहीं करना है, भूलना मत, ये आपको बार बार करना है. So you want to do it repeatedly. So for integer I is equal to 0 और i is equal to 1 कह लो, क्या फर्क पड़ता है? I is less than vertex count I plus plus. Loop v minus 1 repeat होने से मतलब है, you just understand that. So update distance for this, and this is nothing but my prime algorithm. Okay, you continue further. Now tell me, how do you update the distance of neighbors? So सबसे पहले तो मुझको ये सबसे पहले तो मुझको सारे एजेस वन बाय वन एक्सेस करने हैं, सारे एजेस वन बाय वन एक्सेस करने हैं, और फिर ए फॉर ईच एज, ओके, फॉर ईच एज ई इन, ये हमारे पास एजेस लिस्ट है, हमें सारे एजेस वन बाय वन एक्सेस करने हैं, और वन बाय वन एजेस एक्सेस करने के बाद में हमें क्या करना है? ए डिस्टेंस ऑफ, ए डिस्टेंस ऑफ सोर्स, आप लोग यहाँ पर नोट कर रहे हो, और डिस्टेंस ऑफ सोर्स मतलब काइंड ऑफ यू हम लोग यहाँ पर कह रहे थे। अगर आपको यूवी और समथिंग लाइक दैट, यू आर लाइक मोर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, तो जस्ट टू मेक इट रीडेबल, जस्ट टू कीप इट इन व्हाट इज दैट, इन सिंक विद द, in sync with the slides. So e dot src, a v vertex is nothing but e dot destination. I hope that is okay. And weight is nothing but the e dot weight, a connecting weight, right? अब हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से लिख पाएंगे जो फॉर्मूला मैंने स्लाइड में लिखा है. सो डिस्टेंस ऑफ u प्लस प्लस द वेट, distance of u plus the connecting weight, plus the connecting weight, if it is, if it is less than the distance, if it is less than distance of v. क्या करना है? अरे अगर ये टोटल डिस्टेंस ऑफ v से कम हो रहा है तो क्या करना है? Yes, go ahead and update the distance. So you simply say that distance of v is equal to distance of u plus current weight plus connecting weight. Is it what all you want to do? Yes, this is what all I want to do, but only care that I need to take it. Don't forget, the care that I need to take is that अगर distance of u अगर infinity है, अरे पागल लोगों, इन्फिनिटी प्लस या इन्फिनिटी माइनस ऐसा कुछ कभी हम लोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते. सो आई एम सेइंग दैट इफ डिस्टेंस ऑफ u is not equal to infinity, then and only then do this addition. ए इंफिनिटी में प्लस और माइनस करना ये पागलपन की निशानी होती है. तो हम लोग यहाँ पर इंफिनिटी में प्लस और माइनस नहीं कर रहे. इफ इट इज नॉट इंफिनिटी, then and only then distance of u plus weight is less than distance of v, then you want to update the distance of v. That's it. This is what all the way logic that I need to apply. और ये लॉजिक हमें एक बार नहीं करना है, ये लॉजिक हमें बार बार करना है. कितनी बार करना है? v माइनस वन टाइम्स. तो सर v माइनस वन टाइम करने के बाद में आपको ये कहना है इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. यस, इट शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम. इफ इट इज स्टिल नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, if it is still not solving a problem, it means that you are looking for the, you are looking for the negative weight cycle. So I say that check negative, check negative cycle. तो हम लोग एक बार और सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, एक बार हम लोग सिर्फ सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, एंड आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट इफ दिस डिस्टेंस, टेक अ लुक एट दिस, take a look at this. I'm simply saying that if this distance is still less than the distance of v, so v minus वन का बाद में करने के बाद में एक बार फिर से अगर वो कर रहा है, अगर फिर भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, it only means that it is having a negative weight cycle. It is having a negative cycle. You return true. Otherwise, you can say return false, saying that इसके अंदर negative cycle नहीं है. You go ahead and you write a check over here. So repeat ये जो भी था, ये जो भी था, that we want to repeat it
for v minus 1 times. What is that? Updating a distance. And after that, I want to still check it once again. What I want to check it once again, if E is a negative cycle, if it is still having a negative cycle, what is the meaning of this? अब क्या करना है? What is to be done? What is to be done in this case? Yes, you go ahead, you throw the exception, new runtime exception, saying that, bolo, what is that? Graph has negative negative weight weight cycle. A graph has negative weight cycle and nothing much you can do with this. And if you understood that, now अगर यहाँ से एक्सेप्शन आता है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन नहीं आता है तो कोड मेरा अगले लाइन में जाएगा और मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस रिटर्न कर सकता हूँ. So will it work? Okay, you just go back and you check it. मेन का जो कोड होगा, मेन का कोड भी मैं शायद कॉपी पेस्ट कर ही सकता हूँ. There is no problem in copying main code because that will still remain a quite similar one. Accept and display part, that is accept and display part, sc.close, sc.close, and then you can always compare for. अब रुको जरा, पहले कंपेयर नहीं, पहले बेलमन फोर्ड रन तो करते हैं. g dot Bellman Ford starting with the vertex 0. I want to get the distances of all, and then this is my distance array that I'm getting. And once I'm getting a distance array, I want to print distances of all. How do I print the distances of all from this? Go ahead, print. So distance of vertex I from vertex. अभी तो वैसे भी हम लोग जीरो ही कर रहे हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम वर्टेक्स 0 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आई. ऑलराइट, सो विल इट वर्क? आपके सामने ही कर रहा हूं तो मुझको भी पता नहीं है. अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं किया होगा देन इट शुड गिव मी द करेक्ट रिजल्ट. सो लेट मी एंटर सम डेटा. ये टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने थे यहाँ पर इस ग्राफ में? आई गेस देयर आर 5 वर्टाइसेस. 5 vertices. How many edges are there? 3 plus 4, 7. 7 edges are there. And what is the data? Oh, let me just enter the data. Let me enter the data. 343, 243, 343, 243, 234, 234. All right. 2, 1 minus 2, 2, 1 minus 2. All right. 1, 3 minus 1. We have got 1, 3 minus 1. 1, 3 minus 1, 0 to 5, 0 to 5. Last one is 0, 1, 6, 0, 1, 6. Okay, all there, all there. Okay, sorry. ये कॉपी पेस्ट, जब वो कॉपी पेस्ट नहीं, जब हम लोग इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज करते हैं तो ऐसे हो जाता है. थैंक्स पीयूष. इट शुड बी, जो डिस्टेंस है वो आपको प्रिंट करना था, या तो डिस्टेंस डॉट लेंथ को, या फिर स्ट्रेट अवे आप लोग वर्टेक्स काउंट भी कह सकते हो. दैट इज गुड. सर ये काम करेगा? मैंने कहा ना मुझको पता नहीं है. लेट अस गो अहेड, रन इट एंड चेक इट वेदर इट इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर और नॉट. रन एज जावा एप्लीकेशन, रन, and 03525 check. 03525 working. Oh, that is great. This is something I was saying, that Bellman Ford algorithm. Please go through the code, copy paste it, run it, let me know if something is going wrong or something that you are not understanding. Is empty? क्या empty हो गया अजिंक्य? यहाँ पर हम लोग स्टैक और क्यू यूज ही नहीं कर रहे हैं. स्टैक क्यू यूज करते तो शायद कुछ empty करने के बारे में सोचते. यहाँ पर कुछ empty नहीं हो रहा है. डन.
ओके रुको, कुछ तो कह रहा था, इज नेगेटिव साइकिल, ओके, आई रिपीट, आप लोग फटाफट से रन कर लो। निगेटिव वेट साइकिल समझने के लिए आप लोगों को एक बार बैठ के पेपर वर्क करना पड़ेगा एक्चुअली, प्रॉब्लम इज दैट। और पेपर वर्क आपको किसके साथ करना पड़ेगा? अगर आपको निगेटिव वेट साइकिल अगर आपको चेक करना है तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, नॉट विद दिस ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ में निगेटिव वेट साइकिल वैसे भी नहीं है। टू बी फ्रैंक, इस ग्राफ में साइकिल्स ही वैसे नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, दिस ग्राफ रियली डजंट हैव इवन अ सिंगल साइकिल, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। अक्षय, आई डिडंट गेट योर पॉइंट यार, कैन यू जस्ट प्लीज बी क्लियर। और एक चीज, इस कोड में से मैं ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो मैं ये वाला पार्ट निकाल भी रहा हूँ। यहाँ पर एक लिखा था हम लोगों ने, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एक पार्ट पार्ट निकालना है करके, वो लाइन में मैंने निकाल दिया। अक्षय, कैन यू प्लीज बी क्लियर? आई एम नॉट गेटिंग, सो आई एम नॉट एक्चुअली रीडिंग दैट, मे बी। यस अक्षय। Hello, sir. हाँ जी। Sir, I was just asking to check whether we are having a negative cycle at the end, right? यस, यहाँ पर हमने कॉल किया है। Okay, yes, sir, yes, sir, yes, yes, हम yes. लोगों ने पहले उसको I just अपडेट forgot. किया है Yes, sir. v-1 टाइम्स, और उसके बाद में हमने चेक किया है, इफ देयर इज अ नेगेटिव वेट साइकिल देन वी आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन, Yes, sir, yes, sir. Got it. Yes. राइट? Sorry, sir. ओके, या। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था, सो पीपल हु वांट टू रियली अंडरस्टैंड सो नेगेटिव वेट साइकिल का एग्जैक्टली क्या चक्कर है, मैं अभी आपको सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। मैं आपको वर्बली ये बता रहा हूँ, अभी मैंने जो पासेस किए, मैंने आपके सामने सामने सारे पासेस किए। हाउ मेनी पासेस दैट आई हैव डन v-1 पासेस, एंड आई फाउंड दैट इन v-1 पासेस माय आउटपुट, उसके बाद में मेरा आउटपुट चेंज नहीं होता है। इट ओनली मीन्स दैट आई डू नॉट हैव नेगेटिव वेट साइकिल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द बेलमन फोर्ड doesn't work with the negative weight cycle, meaning by in that case the distance of vertices keep changing even after v-1 passes। तो हम लोग पहले यहाँ पर v-1 passes अप्लाई कर रहे हैं, और ये करने के बाद में एक और एक्स्ट्रा पास हम लोग कर रहे हैं। उस एक्स्ट्रा पास में हमें ये चेक करना है, क्या इसमें से कोई भी डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या? अगर इसमें से कोई भी डिस्टेंस चेंज होने वाला है, इट ओनली मीन्स दैट देर आर चांसेस ऑफ हैविंग अ देर आर चांसेस नहीं, देयर इज नेगेटिव वेट साइकिल, देयर इज नेगेटिव वेट साइकिल। तो व्हाट इज रिटन इन अ कोड, जो लॉजिक हमने अपडेट डिस्टेंस के लिए लगाया है, ये अपडेट डिस्टेंस के लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग एक एक एज एक्सेस कर रहे हैं, हमने एजेस को सॉर्ट नहीं किया है, जिस भी इसी ऑर्डर में होंगे इस ऑर्डर में हम लोग ने एजेस एक्सेस किए हैं। और एजेस एक्सेस करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, if the distance of u plus w is less than distance of v, then update the distance। तो ये कॉल हो रहा है, v-1 टाइम्स, ये कॉल हो रहा है v-1 टाइम्स। v-1 टाइम्स कॉल होने के बाद में इट इज एक्सपेक्टेड कि अब ये स्टेबिलाईज होना चाहिए। लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक और बार मैंने कॉल किया है इज नेगेटिव वेट साइकिल, और यहां पर मैं वापस से चेक कर रहा हूं, क्या ये डिस्टेंस of u plus w, is it still less than distance of v? If it is still less than distance of v, it only means that कि ये अभी भी स्टेबल नहीं हो रहा है, ये अभी भी आगे जाके चेंज करने की कोशिश करने वाला है। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ है, it only means that there is a negative weight cycle, I should return negative weight cycle is equal to true। इज दैट ओके? ये जिसने रिवाइज करने के लिए बोला था, तो सर ये सचमुच ये चेंज नहीं होता क्या? आई सेड दैट गो अहेड, ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। फॉर दिस ग्राफ गो अहेड एंड इंप्लीमेंट, डू द पेपर वर्क। इस ग्राफ के लिए पेपर वर्क कर लो। as you do the paperwork for this graph, you will realize, take this value as a -1,
विद दिस वैल्यू इज -1, तो पेपर वर्क करोगे आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 4 पासेस चीजें स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, विच इज अ इंडिकेशन दैट दिस इज, इट इज अ इंडिकेशन दैट this is having a negative weight cycle and it will throw the exception. Is that clear? Right? आप करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आया सर आपने करके देखा और कुछ ठीक से नहीं वर्क हो रहा है, फील फ्री टू जस्ट पोस्ट मी अ मैसेज। जूम के ऊपर मत डालना और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना। जूम के ऊपर मैं लेक्चर लेने के लिए जितना देर होता हूँ यही बहुत हो जाता है मेरे लिए। एनीवे, I guess it is done. What we'll do is that we will take another break, and after the break, we will continue on to the next algorithm. And next algorithm is something we will talk about like a Warshall-Floyd algorithm. हम लोग Warshall-Floyd algorithm देखेंगे, वो algorithm हम लोग लिखेंगे, और अगले कुछ algorithm, I will one or two algorithms, I will tell you the concept, and then we will wind up. एक एल्गोरिथम मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि दैट इज प्रीटी सिंपल एल्गोरिथम दैट वी विल इंप्लीमेंट, वार्शल फ्लोइड एल्गोरिथम। और जो सब्सिक्वेंट एल्गोरिथम है जॉनसन्स एल्गोरिथम, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू आइडिया व्हाट जॉनसन्स एल्गोरिथम इज और व्हाट ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इज। सो वी विल, आई विल गिव यू आइडिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोड, कोड मेरे पास है, आई विल शेयर विथ यू, जिनको इंटरेस्ट होगा वो लोग जाके करना। एंड दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी आर एंडिंग अप। होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी विल बी एबल टू फिनिश by 1:30 even. So if you want to wait, I'm expecting you will be waiting, so you'll learn that, right? Okay, welcome back. Good. And then now it's time we can talk about the next algorithm, or like as a Warshall-Floyd algorithm. And for understanding Warshall-Floyd algorithm, forget about what the graph is all about and etc. etc. You don't need this. I'll tell you, the Warshall-Floyd algorithm conceptually is very simple, very straightforward algorithm. What is very simple and very straightforward algorithm? Let me draw some simple diagram, and I'm very sure you should be able to understand in no time. What I'm saying is that I have got two vertices. Let's say like a source vertex, and this one is, let's say, destination vertex. The source vertex and the destination vertex. And there is one vertex, I'm saying that is the intermediate vertex. Intermediate vertex. So what I'm trying to tell you is that now there are two ways to go from source to destination. Way number one is go from here to here, and obviously way number two is to go from here to here and then here to here. That's why I say that is why I'm saying that it is an intermediate vertex, right? What I'm trying to tell you is that there are certain weights. See the weights, they are something like this. Let's say this weight is 3, this weight is, let's say, 4, and this weight is, let's say, 6. Like one possibility. And give me a minute, give me a minute. I'm telling you one more possibility. The one more possibility, which is simply saying that, again, something similar story, only thing, this weight is, let's say, 8. Now tell me, in diagram, this diagram, जो diagram अभी आपके सामने दिख रहा है, in this particular diagram, what is op, 2 मिनट रुको. In this particular diagram, what is the optimal way to go from source to destination? In this particular diagram, what is the optimal way of going from source to destination? Yes, I understand that the optimal way to go from source to destination in this case should be like this. So in other words, what you're saying is that, take a look at this. You are simply saying that now the distance of D will be equal to distance of source distance of source to intermediate plus the distance of intermediate to D. I hope you are getting the point. तो जो भी आपका source का distance है, that distance plus the connecting edge, a weight of source to I, plus you can say that weight of I to D. So I'm saying that जो कुछ भी इसका distance होगा, that distance वहां से आगे I will go from source to I
and then I will go to the I to D. Oh, this is like pretty simple. But what about in above diagram? In this diagram, can you tell me what is the optimal path of going from source to destination? Optimal path of going from source to destination in this case is go directly. So in this particular case, I can always say that the distance of D will be distance of source plus the connecting weight from source to destination. The connecting weight from source to destination. So I'm just simply saying that you apply this logic कि आपको इंटरमीडिएट नोड के थ्रू जाना है या इंटरमीडिएट नोड के थ्रू नहीं जाना है. If you just apply this particular concept, that is what all Warshall Floyd algorithm is. So Warshall Floyd algorithm simply says that you consider one node as an intermediate node and you compare with all possible pairs of source and destination. You take that intermediate node and compare with all possible pairs of source and destination. By the way, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वॉर्शल फ्लूइड एल्गोरिथम ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आता है. ये बेसिकली कैटेगरी में आता है इट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. इट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. तो ये मेरे को क्या देने वाला है, ये मुझको देने वाला है all pair shortest path, not of one vertex, not of one vertex. I'm saying that for every vertex I want to get the shortest path for every vertex. So 0 से लेके 1 2 3 4 का shortest path क्या होगा, 1 से लेके 0 2 3 4 का shortest path क्या होगा, 2 से लेके 0 1 0 1 3 4 का shortest path क्या होगा, 3 से लेके 0 1 2 4 का shortest path क्या होगा, and so on so forth, and so on so forth. So I just want to count all the shortest path at a place. I hope you're getting the point. And that is what, see अभी हम लोग जो बेलमन फोल्ड कर रहे थे हमें एक डिस्टेंस का एरे मिल रहा था, 1D एरे मिल रहा था. अब हमें 1D एरे नहीं चाहिए, हमें वर्टेक्स 0 के लिए एक एरे चाहिए, वर्टेक्स 1 के लिए एक एरे चाहिए, डिस्टेंस का एरे चाहिए, 2 के लिए एक डिस्टेंस का एरे चाहिए, एक 3 के लिए डिस्टेंस का एरे चाहिए, एक 4 के लिए डिस्टेंस का एरे चाहिए. इन अदर वर्ड्स हमें एक्चुअली एक मैट्रिक्स चाहिए, यू नो व्हाट दैट V by V का मैट्रिक्स चाहिए जहां पर हमको ये सारा का सारा आउटपुट आने वाला है. एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट ये आपके वॉर्शल फ्लोइड एल्गोरिथम का आइडिया है. सो यू से दैट द स्टैंडर्ड प्लेस इज लाइक ओवर हियर कि आपको ये ढूंढना है कि व्हाट इज लाइक ऑप्टिमल पाथ, और जो ऑप्टिमल होगा दैट वन यू नीड टू सिलेक्ट इट, that one you need to select it. That is the idea behind it. तो सर वी कैन जस्ट डायरेक्टली गो अहेड. उसका पेपर वर्क करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका पेपर वर्क करने का मतलब है यू हैव अ लुक एट दिस. आपके पास इतने वर्टाइसेस है, सो 5 बाय 5 का वर्टाइसेस है. इट इज एक्चुअली 5 into 5 into 5, टोटल 125 इटरेशंस विल बी देयर. एंड आई एम वेरी श्योर 125 इटरेशंस करते करते हमारा पूरा शाम भी निकल जाएगा. सो बिकॉज इट इज लाइक अ लूप इनसाइड लूप. अगर आप लोग 5 वर्टेक्स भी कंसीडर करते हो, सो इट इज लाइक 125 इटरेशंस, एंड 125 इटरेशन इट इज जस्ट, आई वुड से दैट, नॉट रियली पॉसिबल. तो what I'm doing, we will go ahead and we will think of implementing it quickly over there. So how I'm going to implement it? Give me a minute. All right, done. So I'm just going ahead and let us think of implementing this. What we need, we again need adjacency matrix with the weighted graph. Okay, if you need adjacency matrix with the weighted graph, go ahead, create a copy paste Java program, and what we looking at क्या था, वर्शल फ्लॉइड, कुछ लोग फ्लॉइड वर्शल कहते हैं, whatever. Finish. इस वर्शल फ्लाइट का थोड़ा सा हिस्ट्री विकिपीडिया के ऊपर है, किसी को इंटरेस्ट होगा तो जाके पढ़ना, इट इज इंटरेस्टिंग. रादर द हिस्ट्री सेज दैट जिसने इसको इससे पहले निकाला था एक्चुअली उसका नाम नहीं कंसिडर किया गया है, बाकी लोगों का नाम कंसिडर किया गया है. एनीवे वर्शल फ्लॉइड मेन एल्गोरिथम इज देयर, look at sunbeam package. All right, and what we want to implement is again adjacency matrix
you still need weighted graph, adjacency matrix weighted graph. I can just copy from the previous one. The basics are still in place, no? और बाय द वे हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के लिए अगर कर रहे हैं तो ये लाइन हमको डिलीट करना है, सो आई एम गोइंग विद द डायरेक्टेड ग्राफ. ये चलो थिंग्स आर डन. इफ थिंग्स आर डन, लेट जस्ट गो अहेड एंड इंप्लीमेंट Warshall Floyd algorithm. Public void Warshall Floyd algorithm. And what this algorithm is telling you about, सबसे पहले इट इज अ डीपी एल्गोरिथम है. ये डीपी एल्गोरिथम है तो आपका पहला इनिशियल स्टेट सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा. लेट जस्ट गो अहेड एंड आई एम सेइंग दैट टेक द इनिशियल, व्हाट इज दैट, सेट इनिशियल distance matrix same as what is that, your adjacency matrix. So जो आपका adjacency matrix है वही distance matrix बनाओ. लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना, the distance of a vertex to itself is 0. आपके adjacency matrix में vertex to itself is actually infinity है क्योंकि वहां पर कोई एज नहीं है. लेकिन when it comes down to the distance, उस vertex से उस vertex के ऊपर हम लोग वहीं पर है तो उसका distance हमें 0 रखना है. You go ahead, don't worry, कोड देखने के बाद में ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Have a look at this. I'm simply saying distance is equal to new integer and like a vertex count by vertex count. A vertex count by vertex count. So ये मैंने memory allocate कर लिया. And then I'm saying that you go ahead. I'm saying that let's say source to destination. Vertex count. You repeat the process. This part as well. Destination के लिए I'm repeating the same stuff once again. और मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियल स्टेट में कॉपी कर रहा हूँ. सो इनिशियल स्टेट ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन is nothing but my adjacency matrix of source to destination. Only thing that I need to take care, distance of source to itself, a distance of source to itself is going to be 0. ये किसी भी vertex का खुद के साथ जो distance होगा, that distance is 0. So if you want, I can just put this comment over here where you can appreciate that, okay, the comment is given there. Okay, you continue further. What is the next part that I want to say? The next part that I want to say, pay attention. The next part that I want to say, अब consider vertex I for intermediate in between source and destination, and find optimal distance between source and destination. That's it. तो सर ये कैसे करना है? मैंने कहा ना सीधा सीधा लूप लगाना है आपको. For s is equal to this, you continue further. Once again, for d is equal to this, we are talking about. But उससे पहले I'm saying that consider the vertex I in between all of them. So vertex count, this is my outermost loop, और उस लूप के अंदर my inner loop, again it is for the vertex count, and my inner loop, it is again inside vertex count. Please pay attention. What I want to check, I want to just check if, take a look at this, if distance of, I want to just check the distance, मुझको distance check करना है और मुझको उसका distance update करना है. So I'm simply saying that distance of source to intermediate plus distance of intermediate to destination, if it is less than the distance of, distance of source to destination. I hope you are able to see that. मैं कह रहा हूं source to intermediate का distance plus intermediate to destination का distance कहां पर गया? I'm talking about this source to intermediate का distance. If this distance is this distance plus this distance, source to intermediate का distance is 3, intermediate to d का distance is 4. If 3 plus 4 is less than the distance between source to destination, क्या करना है? In that case क्या करना है?
In that case, I want to simply update the distance of source to destination, simply update the distance of source to destination as the addition of these two, as the addition of these two. I hope this is clear. I hope this is clear. You got the idea. Now only thing that I need to take care. अब ये याद रखना, इंफिनिटी के साथ कभी भी एडिशन नहीं होता है. दैट इज अगेन कॉमन सेंस टू फॉलो. इंफिनिटी के साथ कभी भी एडिशन नहीं होता है. सो दिस इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी. And obviously even the second one, this is not equal to infinity. Infinity का थोड़ी ना हम लोग एडिशन करते हैं. It is not equal to infinity. Then and only then check this. Then and only then you check this. That's it. Nothing else you need to do it. Algorithm is completed. Algorithm is completed. Virtual fluid algorithm is done. All you need to do is that अब चुपचाप से मेन में जाओ, algorithm को कॉल करो और जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को प्रिंट करो. If you want, you can simply return that particular distance matrix. You can return the distance matrix, and whatever distance matrix that you have written from there, you can think of printing that by yourself. उसको print करो. That is what all algorithm is. So partial fluid algorithm is pretty simple. मैंने ना पेपर वर्क में करके नहीं दिखाने वाला, और दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि even for 5 vertices the loop is going to be repeated from 5 to 5 to 5 times, like a 125 iterations. जिसको पेशेंस होगा वो लोग खुद से कर लेना, राइट. हाउ डू यू कॉल दिस? चलो जो नीचे लिखा था, आई गेस समथिंग सिमिलर. आई वांट टू ट्राई इट ओवर देयर एज वेल. कंट्रोल सी बेलमन फोर्ड, नहीं वर्चुअल फ्लॉइड, समथिंग सिमिलर, कंट्रोल वी. हाँ, ओनली थिंग आई एम सेइंग दैट डोंट कॉल बेलमन फोर्ड नाउ. Don't call Bellman Ford now. Let us call the Warshall Floyd over there, and it is going to return me the array, 2D array. And if it is going to return you the 2D array, just go ahead and print the whole matrix. Go ahead and print the whole matrix. A matrix ऐसे print करते हैं. A matrix printing का कोड वैसे ऊपर होगा अपने पास, डिस्प्ले का कोड होगा. I guess the same code. Only thing मुझको adjacency matrix डिस्प्ले नहीं करना है. ये मुझको एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं डिस्प्ले करना है. इंस्टेड ऑफ दैट मुझको डिस्टेंस मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है. सो लेट मी जस्ट गो बैक. इट्स दैट डिस्टेंस मैट्रिक्स मुझको डिस्प्ले करना है. डिस्टेंस मैट्रिक्स मुझको डिस्प्ले करना है. ऑल दैट आई एम सेइंग दैट एडजेसेंसी डॉट इन्फिनिटी. इट डन. दिस इज व्हाट ऑल कोड दैट आई नीड टू राइट इट. सर ये काम करता है. चलो हम लोग बेलमन फोर्ड का जो कोड अभी हम लोग रन किया था उतना ही हम लोग चेक करके देखेंगे तो भी काफी है. कम से कम 0th वर्टेक्स का तो आउटपुट हमें दिख ही जाएगा. कम से कम 0th वर्टेक्स का तो आउटपुट दिख जाएगा कि इज इट करेक्ट और नॉट. ये 0th वर्टेक्स का बेलमन फोर्ड का हमें आउटपुट आया था, तो वी कैन जस्ट गो बैक एंड चेक इट इफ इट इज फिजिबल. एंड यू फाइंड दैट, यू रिकॉल 0th वर्टेक्स का डिस्टेंस. हेलो, can you check that? Was this the same distance for the Bellman Ford 0th distance? It was 03525. I hope you recall that. So it is simply saying that yes, it is also giving me the same result what I was expecting. So it is good. और बचे हुए जिसको इंटरेस्ट होगा आप लोग कॉल करके देखो. Bellman Ford you call it for 1, Bellman Ford you call it for 2, Bellman Ford you call it for 3, Bellman Ford you call it for 4, and you will be able to see these results all were करेक्ट. तो जो बेलमन फोर्ड कर रहा था वही ये भी कर रहा है. कोई मुझको क्विकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा इस एल्गोरिथम की? कैन समवन टेल मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम क्विकली? हाँ, यहाँ पर कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है. इट इज सिंपली दिख रहा है लूप के अंदर लूप 3 बार लूप चल रहा है. सो इट इज सिंपली ओ ऑफ वी क्यूब. सो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. इट इज सिंपली ओ ऑफ वी क्यूब. बाय द वे, हम लोगों ने बेलमन फोर्ड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखा. बेलमन फोर्ड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? कैन यू रिकॉल? ए बेलमन फोर्ड में क्या हो रहा था? वी आर गोइंग थ्रू ऑल एजेस. टेक अ लुक एट दिस. वी आर गोइंग थ्रू ऑल एजेस. हाउ मेनी टाइम्स? We are going through all ages. How many times? It was v times. A v minus 1 time for updating the distance, or एक time for checking the age. So total v times we are going through all the ages. So the time complexity is, a Bellman Ford time complexity is O of VE. बेलमन फोर्ड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं कह रहा हूं जितने एजेस है वी आर गोइंग थ्रू द एजेस, पहले v minus 1 टाइम और एक टाइम, मतलब टोटल v टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू दैट all ages. The time complexity is
O of VE. Done. It's over. So that is all about time complexities. And कहीं पर तो मैं लिख के रखता हूँ, चाहिए तो आपके स्लाइड्स के लिए लिखा होगा मैंने, कहीं ना कहीं पर तो लिखा है, टेंशन मत लेना. You can always go back and you can always compare it somewhere. Vortial fluid मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, it is O of V cube. और बेलमन फोर्ड इसको भी कहीं पर तो लिख के रखते हैं, it is let's say O of VE. It is for your reference. कोई बात नहीं, let us go ahead. दैट्स इट. जितने एल्गोरिदम मैं आपको सोच रहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कोड, मैंने आपको करके दिखाया. वन और टू मोर एल्गोरिदम वी विल जस्ट गेट आइडिया एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अब दैट विल बिकम टू एडवांस बट स्टिल है, एटलीस्ट वी विल गेट एक आइडिया. सो इट इज जॉनसन्स एल्गोरिदम. जॉनसन्स एल्गोरिदम, नाउ टेक अ लुक एट दिस. इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो यू जस्ट लिसन टू द स्टोरी. एल्गोरिदम छोड़ दो, जस्ट लिसन टू द स्टोरी. फ्रॉम वेयर यू नो ऑल दिस आइडिया कम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये वॉर्शल फ्लूइड कौन से कैटेगरी में था? ये वॉर्शल फ्लूइड कौन सा एल्गोरिदम है? भूलना मत, इट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है. इट इज all pair shortest path algorithm hai. And if you're considering is all pair shortest path algorithm, take a look at this. Johnson's algorithm is that all pair shortest path algorithm where you say that the time complexity of Warshall fluid is O of V cube. Okay, that is good. O of V cube. But don't you think that हम लोग डिक्स्ट्रा से भी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कर सकते थे? और जब हम लोग डिक्स्ट्रा से जब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कर सकते थे, लेट मी टेल यू गाइस, डिक्स्ट्रा से जब हम लोग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कर रह सकते थे, डिक्स्ट्रा से ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इज गोइंग टू गिव मी एक्चुअली v इंटू लॉग v. यहां पर आप लोग नोट करना, इट इज v इंटू v. डिक्स्ट्रा इन ऑप्टिमाइज मैनर अगर हम लोग रन करते हैं, इट विल बी v इंटू लॉग v. डोंट यू थिंक दैट डिक्स्ट्रा इज फास्टर इन दिस केस? अगर आप लोग सारे वर्टाइसेस के लिए अगर अप्लाई करते हो ए बेसिक डिक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई एम सेइंग दैट इज v log v, a v log v, and I'm saying that I'm applying it for all v vertices. I'm saying that this is faster than the Warshall fluid. No doubt it is faster than the Warshall fluid. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट डिक्स्ट्रा कैन नॉट वर्क विद द निगेटिव वेट एजेस. ओके, अच्छी बात है. तो एक काम करते हैं सर, तो सर हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको? कौन सा था अभी थोड़ी देर पहले निकला था, बेलमन. अगर आप लोग बेलमन से ट्राई करते हो, ए बेलमन अगर आपने सबके लिए यूज किया, लिसन, यूजिंग बेलमन फॉर ऑल, यूजिंग बेलमन फॉर all vertices, what will be the time complexity? Can you tell me? एक वर्टेक्स के लिए इट इज O of V, एक वर्टेक्स के लिए इट इज O of V. अगर आप लोग सारे वर्टाइसेस के लिए रिपीट करोगे, व्हाट इट विल बी? इट विल बी V इंटू E. आई होप यू एग्री. V इंटू V. And if you really compare, I would say that this is poor or this is slower than even Warshall fluid. ये Warshall fluid से भी स्लो है. This is slower than Warshall fluid because usually you'll always find that number of edges will be more than number of vertices. Warshall fluid V into V दे रहा है, Bellman Ford V into E दे रहा है. So I'm saying that it is even slower than that. चलो ठीक है. तो सर, तो बेटर रास्ता क्या है? तो जॉनसन सेज दैट कि मैं एक ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बना रहा हूं. ये देखो इसका अकल क्या लगा रहा है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लगा रहा हूं, बट आई वांट टू मेक इट मोर एफिशिएंट देन वॉर्शल फ्लूइड. आई वांट टू मेक इट मोर एफिशिएंट देन वॉर्शल फ्लूइड. मुझको वॉर्शल फ्लूइड से ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए. तो ज्यादा एफिशिएंट करने के चक्कर में उसने लॉजिक क्या अप्लाई किया, ये चेक करो. It first uses Bellman-Ford to reweight all the edges to remove the negative edges. तो उसने कहा मैं काम करता हूं, मैं एक बार मैं Bellman-Ford यूज करता हूं और जो जो निगेटिव वेट एजेस है, ये जो निगेटिव वाले एजेस है, उन सबको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं बाय यूजिंग Bellman-Ford. अब आपको पता है Bellman-Ford का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है V of E. ओके, दैट इज गुड. और उसके बाद में then apply Dijkstra to all vertices to calculate the shortest distance, जो कि आपको यहां पर दिख रहा था v square log v है, a v square log v है. और दोनों को मिला के
जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही है, दैट इज जॉनसन्स एल्गोरिथम। कि जॉनसन्स एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, इसलिए मैं एल्गोरिथम को अलग से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दैट एल्गोरिथम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बेलमन फोर्ड प्लस डिक्स्ट्रा। फर्स्ट स्टेप ऑफ बेलमन फोर्ड पहले यूज करना है, जितने सारे निगेटिव थे एजेस, उनको पहले पॉजिटिव एजेस में कन्वर्ट करना है। एक बार आपने उसको पॉजिटिव एजेस में कन्वर्ट कर दिया, नाउ डिक्स्ट्रा डज वर्क वेरी फास्ट। वापस से उसके ऊपर डिक्स्ट्रा अप्लाई करो, सबका डिस्टेंस ढूंढो, एंड वंस यू फाउंड द डिस्टेंस वापस से एक और स्टेप शायद आपको करना पड़ेगा, रीवेट द डिस्टेंस टू कंसीडर द ओरिजिनल वेट्स वंस अगेन। वापस से एक बार उसको डिस्टेंसेस को फाइनलाइज करो, एंड यू कम विद द रिजल्ट। एंड दिस इज, आई एम सेइंग दैट दिस इज फास्टर, this is faster than Warshall-Floyd. That's it. And also work with the negative weightages. That is the idea behind Johnson's algorithm. जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा, मैं कोड शेयर कर रहा हूँ। डोंट वरी, जॉनसन्स एल्गोरिथम इज वन ऑफ द कोड जिसका आसानी से इंटरनेट के ऊपर कोड भी नहीं मिलता, दैट यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू बिल्ड इट बाय योरसेल्फ। मैंने बिल्ड करके रखा हुआ है। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम। स्लाइड्स है, आई विल शेयर विद द स्लाइड्स। एनीवन हु हैज गॉट इंटरेस्ट कैन go for that and try to solve that. And then the last algorithm, which is again a different category that we will discuss and then we'll wind up. जॉनसन्स, ए बाय द वे, आपने नोट किया होगा वॉर्शल फ्लॉइड एंड जॉनसन्स वो दोनों एक ही कैटेगरी के, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। वो दोनों एक ही कैटेगरी के, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। जो उससे पहले हम लोग निकाला था डिक्स्ट्रा एंड बेलमन, वो दोनों एक ही कैटेगरी के थे। इट वाज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। उसके पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे प्रीम्स एंड क्रुस्कल, वो शॉर्टेस्ट पाथ थे ही नहीं, दे वर लाइक अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। पहले प्लीज कैटेगरी समझो कि कौन कौन किस किसका कॉम्पिटिटर है। अगर आपको ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट और काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो वहां पर कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ये मच मोर इंटरेस्टिंग, रीजन बीइंग दिस एल्गोरिथम इज वाइडली यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तो सर ये क्या है, इज इट अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम? आई सेड नो। इज इट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम? आई सेड नो. Is it a shortest path algorithm? Yes, it is a shortest path algorithm, but it is neither all pair nor single source. तो सर ये कौन सा है? I'm saying that this is point to point. This is point to point shortest algorithm. So I'm saying that point to point approximate shortest path finder algorithm. So what do you mean by point to point? मैं ये कह रहा हूं, consider that this is kind of a matrix. ये मैट्रिक्स आपके सामने है, जहां जहां पर 1 है वहां पर एज है, जहां जहां पर 0 है वहां पर नहीं है। सो यू कैन से दैट जहां जहां पर 1 है इट इज काइंड ऑफ अ मेज। हम लोग पजल सॉल्व करते हैं ना, ये पजल वाला कंसिडर करो इसको। आई एम सेइंग दैट मुझको यहां से यहां पर जाना है, जहां जहां पर 1 है वहां पर रोड है, जहां जहां पर 1 नहीं है वहां पर रोड नहीं है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, हाउ डू आई गो फ्रॉम हेयर टू हेयर? और मैं कह रहा हूं कि मूव्स कौन कौन से अलाउड है, या तो वर्टिकल अलाउड है, हॉरिजॉन्टल अलाउड है, और डायगोनल मूव्स आर अलाउड। वर्टिकल अलाउड है, हॉरिजॉन्टल अलाउड है, एंड डायगोनल मूव्स आर अलाउड। इफ दे आर अलाउड, तो हम लोग यहां से यहां पर कैसे जाएंगे? सो व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ? आई एम वेरी श्योर वी नीड टू थिंक ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिमल पाथ, समथिंग लाइक दिस। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ऐसा बचपन में सॉल्व किया होगा। सॉरी, हुर्रे, आई गॉट द पॉइंट। यस, आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ सॉल्व किया है? आई एम जस्ट सेइंग दैट कि दिस इज समथिंग यू पीपल कैन ट्राई इट। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपको ऐसे निकलना है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आई वांट टू गो फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब यहां पर ये ऑल पेयर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझको इस सेल से हर एक सेल के रास्ते ढूंढ के रखने, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। ना तो मुझको क्या कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में इंटरेस्ट है, मुझको सिर्फ इन दो पॉइंट्स में इंटरेस्ट है, और इन दो पॉइंट्स के जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा मुझको उसमें इंटरेस्ट है। और ऊपर से मेरा कहना ये है, आई वांट टू मेक इट फास्ट। यहां पर मुझको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा तो भी चलेगा, लिसन केयरफुली, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा तो भी चलेगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू कि मुझको ये क्विकली होना चाहिए,
क्योंकि अगर आप लोग डिक्स्ट्रा भी फॉलो करते हो, इवन फॉर द सिंगल सोर्स इट इज स्टिल टेकिंग लाइक अ वी लॉग वी, सी द प्रॉब्लम। और अगर आप लोग ऑल पेयर कर रहे हो तो तब तो वो वी क्यूब के रेंज में जा रहा है। सो आई एम सेइंग दैट इट इज रियली पुअर वे ऑफ डूइंग इट। सो कोई आसान रास्ता बताओ, कोई अच्छा रास्ता बताओ। दिस इज वेयर द ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। तो सर ये एआई में कहां पर यूज होता है? एआई में कहां पर यूज होता है? लेट मी टेल यू सम ऑफ द प्लेसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले रोबोटिक्स, रोबोट पाथ, रोबोट पाथ। सो जो आप लोग रोबोट्स आजकल यार ये आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोट्स दे आर मूविंग इन अ रूम ऑन देयर ओन। तो जब रोबोट्स आर मूविंग इन द रूम ऑन देयर ओन, हाउ दे आर मूविंग? सो दे आर गोइंग फ्रॉम लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड एट दैट टाइम दे वांट टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ। घर के अंदर बीच में जो टीपॉय या चेयर्स रखे हुए हैं उनको तोड़े बिना, ठीक है, उनको टच किए बिना यू वांट टू गेट, सो लाइक दैट इज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो आपको ये ऑब्स्टेकल छोड़ने, एंड देन यू वांट टू रीच to the appropriate destination. I'm saying that one of the example. Another example, I'm very sure you people play a lot of games. So again, in a gaming industry, you will find that this is again very important. आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। मैं गेम्स नहीं खेलता हूँ तो आपको मुझसे ज्यादा गेम्स पता होंगे। वो गेम में कोई तो एक सोल्जर होता है और बाद में बहुत सारे एनिमी सोल्जर्स होते हैं, एंड दोज पूरा गेम का प्लॉट होता है जहां पर बहुत सारे काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और जहां कहीं पर भी आप हो, एनिमी सोल्जर्स आर अटैकिंग यू। तो ये एनिमी सोल्जर्स को आप तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे मिलता है? यस, काउंटर स्ट्राइक, गुड। ये काफी पुराना गेम है एक्चुअली। आजकल इससे नए ऐसे बहुत सारे गेम आए होंगे, आई एम वेरी श्योर। काउंटर स्ट्राइक मैं बचपन में खेला करता था। सो यस, नो प्रॉब्लम। बचपन में मतलब अभी कुछ 8-10 साल हो गए। एनीवे, हाँ, सो आई एम सेइंग दैट उनको उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे मिलता है कि आपका लोकेशन और उनके लोकेशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ऑल दोज एनिमीज। आई एम सेइंग दैट इट इज इंटरनली following the algorithm of it is internally following the algorithm of A star search algorithm. So sir, this is very complicated algorithm? No, not at all. You will find that ये रहा, ये गेम्स में यूज होता है, ये मैप्स में भी यूज होता है। ये मैप में जब आप लोग कहते हो कि गेट मी द डायरेक्शंस, कि आई वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस, लेट्स से आई वांट टू गो फ्रॉम काथरस टू लेट्स से चिंचवड, आई टू गो फ्रॉम काथरस टू चिंचवड, शॉर्टेस्ट पाथ गूगल मैप के ऊपर यू गेट द ड्राइविंग डायरेक्शंस। सो जब आपको दो पॉइंट के बीच के ड्राइविंग डायरेक्शन चाहिए, यू कैन लुक फॉर दिस ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। आई एम टेलिंग यू, गोइंग अहेड, दिस इज basically based on a BFS. You know BFS? ए BFS, BFS में क्या होता है? BFS में क्या होता है? क्या यूज होता है? स्टैक यूज होता है, क्यू यूज होता है? BFS में हम लोग स्टैक यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं? यस, क्यू यूज करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर गेटिंग अ वर्टेक्स और उसके जितने सारे नेबर्स है वी आर पुटिंग इन अ क्यू। फिर दूसरा वर्टेक्स वी आर पुटिंग ऑल द नेबर्स इन अ क्यू। तीसरा वर्टेक्स एंड वी आर पुटिंग ऑल द नेबर्स इन अ क्यू। आई एम टेलिंग यू द सेम algorithm you need to follow. Only thing, we don't use the queue. We don't use the queue. We use something called as a priority queue. If we are using a queue with something called a priority queue, so put the selected adjacent vertices on the priority queue based on some heuristic. अब आपको कुछ approximation लगाना पड़ेगा कि मैं प्रायोरिटी क्यू में डाल रहा हूं तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। वैसे तो आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर लाइक फॉर एग्जांपल यू आर कंसीडरिंग दिस वर्टेक्स, अगर मतलब इस वर्टेक्स को कंसीडर कर रहे हो, इस वर्टेक्स के नेबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने सारे नेबर्स हैं। तो किसको पिकअप करना चाहिए? आइडियली इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है देन एंड ओनली देन आई कैन गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो हमें हर एक को क्यू के ऊपर डालते वक्त उसको कुछ ना कुछ तो पैरामीटर सेट करना है, प्रायोरिटी क्यू यूज करना है। एंड व्हाट इट इज, आई एम सेइंग दैट दिस इज a mathematical function is calculated for the vertices something like this, and it is based on f of v is equal to g of v plus h of v. So what is f of v is equal to g of v of h of v? Don't worry, मैं explain करता हूँ simple भाषा में। What I'm saying is that you consider one point, you consider one point, if you consider this point, for this point स्टार्टिंग वर्टेक्स से यहां तक आने के लिए, टेक अ लुक एट दिस, स्टार्टिंग वर्टेक्स से यहां तक आने के लिए जितने भी एफर्ट्स आपने लिए
This is something I can say that it is G of V. स्टार्टिंग वर्टेक्स से यहां तक आने के लिए जितने भी एफर्ट्स आपने लिए, दैट इज समथिंग आई एम सेइंग G of V. और और अब आगे वाला रास्ता मुझको पता नहीं है, आगे वाला रास्ता मुझको पता नहीं है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो भी टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट, जो भी टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट टाइम आई कैन से दैट इट इज H of V. ये अप्रोक्सीमेट है क्योंकि अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, जी तक मैं आया हूं तो वहां तक मुझको पता है कि मेरा एग्जैक्ट टाइम क्या है, लेकिन वहां से आगे जितना टाइम लगेगा दैट इज अप्रोक्सीमेशन. So I'm saying that it is H of V. The H of V is estimated cost of vertex V to destination. I'm saying that this is V vertex. If this is V vertex, for the V vertex, I've shown you what is G of V and what is H of V. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. G of V कैसे कैलकुलेट करना है वो तो आपको देख के भी पता चल जाएगा, जितने मूव्स हुए उतने 1 2 3 4 5 6 7 7 moves are over there, so you can say it is G of V is kind of 7. बट जो आगे वाला जो पार्ट है, दैट इज सम हेरिस्टिक नीड टू बी अप्लाइड, एंड दैट हेरिस्टिक दैट यू नीड टू अप्लाई, आपको शायद पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, एंड द मैथमेटिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू. जो H of V आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, H of V represent the heuristic and depends on problem domain. There are three techniques to calculate the heuristic. What are the possible ways? One way is Manhattan distance. The second way is a diagonal distance, and third one is Euclidean distance. So there are three possible heuristics are there, and you need to choose the right one depending on your problem domain. Anyone knows what is Manhattan? A Manhattan क्या है? Have you heard of it? अरे मैनहट्टन क्या है? डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा हूँ. मैनहट्टन ये वर्ड कहा क्या है? यस, इट इज अ सिटी इन यूएसए. इट इज अ सिटी इन यूएसए. अगर हो सके, अच्छा कंपनी का नाम है, वेरी गुड. इट इज अ सिटी इन यूएसए. वो जो सिटी है, लिसन, गो बैक एंड चेक दैट. गूगल के ऊपर जाओ और उसका सिटी का मैप ढूंढो. यू कैन फाइंड आउट द मैनहट्टन मैप. एंड मैनहट्टन मैप इज समथिंग, इट इज अ स्पेशलिस्ट सिटी, जहां पर उन्होंने जो उसका क्या कहते हैं उसको, सिटी का जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग इस तरह से बनाया है कि जितने सारे रोड्स है, या तो हॉरिजॉन्टल रोड्स है या वर्टिकल रोड्स है. देयर आर नो डायगोनल रोड्स. आप लोग गूगल मैप के ऊपर जाके चेक कर सकते हो. सो गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो मैनहट्टन का मैप. सो मैनहट्टन का मैप जो आपको एरियल व्यू आपको दिख रहा है, दैट एरियल व्यू, इट्स इन यस इट इज ग्रिड प्लानिंग, इट इज कॉल्ड एज, बट देयर इज नो डायगोनल इज देयर. वर्टिकल रोड्स और हॉरिजॉन्टल रोड्स. सो जो कुछ भी आप लोगों ने रोड्स बनाए, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कोई भी क्रॉस रोड नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ज्ञानेश्वर, यू गॉट द पॉइंट. एंड दिस इज मैनहट्टन, लाइक सम एमआईडीसी स्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महाराष्ट्र का क्या कहते हैं इसको, महाराष्ट्र का लोग काउंटिंग नहीं करते, ये प्रॉब्लम है. मैनहट्टन इज लाइक वेरी ओल्ड सिटी जो उसके हिसाब से प्लान की गई है. हाँ बराबर, ठीक है, चंडीगढ़ इज ऑल्सो गुड, आई एक्सेप्ट. मैं आगे जा रहा हूँ. हैव अ लुक एट दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर आप लोग ऐसे हो, तो जहां पर मूव्स आर अलाउड ओनली इन अ 4 डायरेक्शंस, तो जहां पर 4 डायरेक्शन में मूव्स अलाउड है, इन दैट केस यू गो फॉर मैनहट्टन डिस्टेंस. और मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है? हैव अ लुक एट दिस. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आई एम सेइंग दैट ये वर्टिकल है ये dy, हॉरिजॉन्टल है ये dx, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर h. और ये कहां पर यूज करोगे? जहां पर मूव्स आर अलाउड इन लाइक 4 डायरेक्शन. जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, चेस में जैसे हाथी चलता है, अगर उस टाइप के मूव्स अलाउड है आपके गेम में, देन यू शुड बी यूजिंग दैट. Second, diagonal distance. For diagonal distance, when moves are allowed in 8 direction, one step at a time. So जैसे आपका राजा चलता है किसमें, चेस में, उस टाइप से अगर आपकी मूव्स है, then ideally you should be taking maximum of dx and dy. So again this is dy, this is dx, और जो maximum है, that one I need to count it. So I'm taking that. और जो तीसरा है वो तो आपका नॉर्मल मैथमेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हेन मूव्स आर अलाउड इन ऑल डायरेक्शन एनी हाउ. जैसे आपका वजीर चलता है चेस के अंदर, अगर वो वाला होगा, देन यू आर गोइंग फॉर डायगोनल डिस्टेंस विच इज बेस्ड ऑन अ पाइथागोरस थ्योरम. आई होप आपको पता होगा, लेकिन यूक्लिडियन डिस्टेंस. अब कौन सा यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है नहीं नहीं सर ये डायगोनल मूव्स आर अलाउड नहीं है, डायगोनल मूव्स अलाउड नहीं है, then probably you want to go for kind of a diagonal distance, then you might think of using a diagonal distance, correct? Or you might think of having like a Manhattan distance.
depending on your requirement. Anyway, going ahead, तो this algorithm is there. algorithm मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हुआ है. You find that is a BFS algorithm है. Basically क्या algorithm है कि आप लोग algorithm शुरू करो, push starting vertex onto the priority queue, and then pop a vertex, see it carefully, add it into the path, for each vertex, for each adjacent vertex, go ahead and for each adjacent vertex, go ahead, calculate your G, calculate your H, calculate G, calculate H, and calculate your new F. Calculate your new F, and then you try to add all those elements. जितने सारे नेबर्स है उन सारे नेबर्स को क्यू में डालो, और नेबर को क्यू में डालने के बाद में वापस से प्रायोरिटी क्यू को रीअरेंज कर लो. Obviously, as per the priority वो सेव होने चाहिए. That is something you need to take care. And if you could do that, that algorithm is A star search algorithm. Obviously, every time you are going to pick up, हर बार जब हम लोग पॉप करेंगे तो पॉप कौन सा होगा, जो मिनिमम F वाला होगा वही पॉप होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहे हैं. डोंट फॉरगेट दैट. एंड दैट इज नथिंग बट A star search algorithm. जस्ट कुछ एग्जाम्पल कोड मैंने बना के रखा हुआ है, आई कैन शेयर विथ यू, एंड यू फाइंड दैट ये कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली उस कोड को मैं कोड आपके साथ शेयर करता हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी. अभी इतना पढ़ ही लिया है, कम से कम वो प्रोग्राम रन करके देखना, एंड दैट यू रन द प्रोग्राम, इट विल लिटरली शो यू द पाथ. मैंने उतना केयर किया है कि आई कैन एक्चुअली डिस्प्ले द पाथ देयर. सो एटलीस्ट जिनको एआई में वगैरह इंटरेस्ट है, सो दोस पीपल कैन टेक अ लुक इनटू, ट्राई टू रन दैट. आई बिलीव इट इज 132. सो इनफ ऑफ डिस्कशंस. सो जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू, एज आई सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल. डैक कोर्स में आई स्टिल रिकॉल दैट जो लॉकडाउन में हम लोगों ने पहला बैच किया था, डेटा स्ट्रक्चर का बैच किया था, दैट डेटा स्ट्रक्चर बैच जो लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया था, आई स्टिल रिकॉल. उस बैच में से यहाँ पर कोई तो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे भी शायद. सो दैट बैच आई रन फॉर 29 वर्किंग डेज, 29 working days, every day 3 hours. So it was actually, I still recall, like 57 working hours, actually I conducted a lecture there. Or then I realized that the course is becoming too heavy. बाद में मैंने और एक डेटा स्ट्रक्चर का बैच कंडक्ट किया था into that, but I know that the batch become too heavy, तो मैंने उसको बैच को सीधा सीधा दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था. एक पहला हिस्सा था till trees, and the second part was only for the graph. First part was till trees and second part was till the graph, and even दोनों का combined time it was still more than 57, 50, 60 hours. CDAC course में I'm saying that it is really difficult, and when it comes down to the CDAC course, it is one of the tough job. क्योंकि CDAC course में you get lecture plus lab, दोनों का कहते हैं lecture plus lab, दोनों का टाइम अगर आपने कोर्स में नोट किया है, so that was actually 60 hours आपके मॉड्यूल में. But still we tried our level best, और वैसे आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, so we tried our level best कि for a given time frame जो कुछ भी मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर सकते थे, we had covered. People who have done like enough of paperwork and tried to type the code on their own, I'm very sure, I'm not saying that you become expert. 10 दिन में someone getting expert in data structure, ये मेरे को अपने आप में जोक लगता है, but at least you gain a basic minimal confidence कि चलो मुझको enough आ गया है. I believe that is more than sufficient, right? तो with that I will stop over here. आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो nothing much to discuss. तो कल से you people will be starting with the new module, and we will meet again after some time, don't worry. So with this I'll stop over here. People who have a doubt, they can wait. People who do not have a doubt, they can leave. Thank you very much. Thank you for so much having patience.